Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to complete the Speedy one-liners for the month of June. It means इस पूरे वीडियो में you will get to know the current affairs from May 31, 2025 to the back year April 2024. Okay, so the way of doing this video is that we are going to go in the reverse order so that आपके latest current affairs पहले cover हो जाएं and then chronologically we will go back to May, then April, then March, then Feb, and this order में we will complete this video. So without wasting time, let us start with the one-liners of the Speedy. Now, the 300th birth anniversary of which of India's most visionary female rulers was celebrated? It is Ahilyabai Holkar. Next is 72nd Miss World pageant held in Hyderabad, who was honored with the humanitarian award for philanthropic work during COVID-19. So Sonu Sood. This question becomes important. आपको ये ध्यान में रखना है. Next is from Deshnok in Bikaner, Rajasthan. How many Amrit Bharat railway station did Prime Minister Narendra Modi inaugurate? So 103 stations have been inaugurated. In the forest of which city, Union Territory, did the Botanical Survey of India discover the longest banana species named Musa indamanisis? तो ये अंडमान में रिकवर किया गया है, अंडमान में इसको फाइंड किया गया है. दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. Next is which water heritage museum in Kerala included in UNESCO Global Network of Water Museum? Correct answer is Kozhikode. Also, you should know that Kozhikode is also the city of literature. Okay. And if I talk about city of music, so Gwalior is the city of music. So you should know these points. Next is as a part of its 101st space mission, which Earth observation satellite did ISRO launch via the PSLV C61 from the first launch pad at the Satish Dhawan Space Center? So EOS, that is Earth Observation Satellite 09 was launched. Also there are two category of rockets, ये आपको पता होना चाहिए from the science and tech point of view. One is the PSLV, that is Polar Launch Vehicle, and another one is GSLV, which is geosynchronous orbit में जो satellites deliver करता है. Now this GSLV rocket is most of the time used for the communication satellite, and this PSLV rocket is used for the Earth observation satellites. Okay, so about rockets you need to know this. Another thing about rockets is about the cryogenic engine, in which the fuel is in a solid form. Because it is in the solid form, it generates more energy. So cryogenic engine are very much in use, and you should know this cryogenic engines, the fuel that is stored is below 0 degree. Okay, and because it is below the freezing point, the fuel is in solid state. Okay, so this additional information you need to know. Next is under what theme the 8th UN Global Road Safety Week was observed? So this was make walking safe and make cycling safe. World Hypertension Day was celebrated with what theme? So it was celebrated on firstly आपको पता होना चाहिए, it was celebrated on 17th May, and the theme was measure your blood pressure accurately, control it, and live longer. With which countries top business leaders and organizations across the country boycotted all commercial relations including travel and tourism? So it is Turkey and Azerbaijan. And इसका logic क्या है? Because Turkey and Azerbaijan supported the Pakistan. ठीक है, during the short phase of India-Pakistan war of 2025, not war but escalation कह सकते हैं इसको. During the escalation, this Turkey and Azerbaijan supported Pakistan. That is why a boycott of all commercial relation was made. Next is on May 17th, after Operation Sindoor, how many all-party MP formed a delegation to present India's zero tolerance policy against the terrorism to the world? So there were 7 MP delegation that went to the other countries. So the name of the MPs is very much important here. First one is Shashi Tharoor, Ravi Shankar Prasad, Sanjay Kumar Jha, Baidyanath Panda, Kanni Mochi, Karunanidhi, Supriya Sule, and Srinath Eknath Shinde.
Sikkim celebrated which anniversary of the merger with India? Now it was the 50th anniversary. Because it is the 50th anniversary, so it becomes important. And you should know that Sikkim became the part of India by the 36th Constitutional Amendment Act. Okay, by the 36th Constitutional Amendment Act, Sikkim became the part of India. Also, you should know that Sikkim was given to India by Nepal after the Treaty of Sagoli. Now, when was this signed? When was the Treaty of Sagoli signed? It was signed in the year 1816. Okay, after the Anglo-Nepal War. Also, you should know who was the viceroy during the Anglo-Nepal War. So, sorry, not viceroy, but who was the governor general at that time? So, the governor general was Lord Hastings. Okay, so ये modern history का part आपको पता होना चाहिए if you are preparing for one day examinations. Next is which days were celebrated on May 16? So National Dengue Day, International Day of Light, and International Day of Living Together in Peace. All of this was celebrated. Next is who won the first Grand Chess Tour title by winning the Superbet Classic Romania 2025. So R. Pragnananda won it. Next is which javelin thrower became the first Indian to cross the 90-meter mark with historical performance at the Doha Diamond League? Neeraj Chopra. To which Sanskrit scholar and famous poet lyricist did President Draupadi Murmu presented the 58 Gyanpith Award? So Jagat Guru Ram Bhadracharya and Gulzar को ये दिया गया था. Next is now in which country did hundreds of people died due to an outbreak of Lassa fever? So Lassa fever is caused by a virus. आपको तो ये पता होना चाहिए. And the name of the country is Nigeria. Which educational institution announced the establishment of first overseas campus in Dubai, United Arab Emirates? So it is the Indian Institute of Foreign Trade. Next is in which stadium did the Mumbai Cricket Association officially inaugurate stand named after Rohit Sharma, NCP Sharad faction, President Sharad Pawar, and former cricketer Ajit Wadekar? So a stand has been given name of Rohit Sharma in Wankhede Stadium. The United Nations revised the India's economic growth forecast for 2025 from 6.6% to 6.3%. In which state did the Indian Army and NDRF conduct a disaster drill named Rahat? So it was conducted in Assam. Okay. Next is where did the Republic of Honduras open its embassy in India? So New Delhi. With whom did India launch a joint research initiative on marine pollution and green hydrogen? Very important this is. So it has been launched in European Union. Who released the first monthly bulletin of the devised periodic labor force survey PLFS for the month of April 2025? So it was released by the Ministry of Statistics, Program and Implementation. Now if we are talking about ministry, particularly you should know about the Ministry of Finance. ठीक है, अब Ministry of Finance who heads it? तो Dr. Nirmala Sitharaman heads it. Other than that, the word budget you should know, it is the budget is prepared by the Ministry of Economic Affairs, and this Economic Affairs Ministry comes under the Ministry of Finance. ठीक है. Now before the budget, before one day of the budget, economic survey is presented in the parliament. Also you should know that the budget is nowhere mentioned in the constitution. Other than budget, in article 112 annual financial statement is mentioned, in which it is said that the president may cause for the budget to be or the annual financial statement to be laid. budget का नाम कहीं पे भी constitution में नहीं है. ये question पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे. Who announced the development of an indigenous high pressure nanoporous multi-layered polymer membrane to desalinate water? So it is developed by DRDO. Next is we are going in the reverse direction, so I hope you will understand the way in which we are doing this. Which Indian nurse was included among the top 10 finalists for the prestigious Aster Guardian Global Nursing Award? So Dr. Supal Kaur. Whom did the central government appoint as the Indian ambassador to Sweden? Anurag Bhushan. Who was appointed as the distinguished professor at the National Law University? So D.Y. Chandrachud. Also he was the 50th Chief Justice of India. Abhi recently 52nd Chief Justice of India has been appointed. And what is the name? B.R. Gavai is the new Chief Justice of India. Other than that, UPSC के नए चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं अभी. So you will tell me in the comment section कि UPSC के नए चेयरमैन कौन है.
Next is who became the latest and the 86th Grandmaster? So Shri Hari LR of Tamil Nadu. Which day was celebrated on May 15th? So International Day of Families. According to the BOFA Securities Fund Manager survey released, which country has India surpassed to become the most preferred market for investment? So जापान को इंडिया ने ओवरटेक किया है. On the occasion of Global Accessibility Awareness, who organized the Inclusive India Summit in New Delhi? So Department of Empowerment of Person with Disabilities ने organize किया. The JNU and Jamia Millia Islamia University suspended all academic agreements made with which country? So Turkey. Who won the most medals in the 7th Khelo India Youth Games of 2025 concluded in Patna? So Maharashtra won the medal, in which 58 gold, 47 silver and 53 bronze medal were won. Where was the 7th Khelo India Youth Games organized? So it was organized in Bihar, and Bihar के 7 cities में, that is पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय एंड न्यू दिल्ली, यहाँ पे ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था. Next is the birth anniversary of which brave and inspiring leader of the Maratha Empire was celebrated? Chhatrapati Sambhaji Maharaj. From which country did US President Donald Trump announce the lifting of all sanctions imposed? Syria. Whom did the ICC choose as the ICC Men's Women's Player of the Month for the April 2025? So it is Mehndi Hasan Miraj of Bangladesh and Catherine Bruce of Scotland. Next is, where was the third 6G International Conference and Exhibition organized? So it was organized in New Delhi. Taken an important step towards becoming carbon free. How many carbon capture and utilization testbed clusters did Government of India launch? So 5 clusters were launched. Which country's scientist Mariangela Hungaria was honored with the World Food Prize 2025 for sustainable agriculture innovation? So it is Brazil. By what name did India successfully test an indigenous system to destroy a swarm drone at the Gopalpur firing range in Odisha? So it is Bhargavastra. Next is, between which country America was biggest arms dealer in the history made? So biggest deal with Saudi Arabia has been made. Which city did the central government approve the joint venture of HCL and Foxconn to establish UP's first and country's 6th semiconductor unit? So it is going to be opened in Jewar, Noida. Whom did the central government appoint as the chairman of the UPSC? So Ajay Kumar, he is the former defense secretary, has been appointed as the chairman of UPSC. Who took the charge as the chairman of the National Legal Services Authority? Justice Suryakant. Who took charge as the 52nd Chief Justice? Justice Bhushan Ramakrishna Gavai. Former President Jose Mujica of which country passed away at the age of 89? Uruguay. Which two institutions partner to enhance India's space surveillance capabilities? So Aryabhat Research Institute of Observational Science, Nainital, and Instrument Research and Development Establishment of Dehradun. These two have collaborated. Next is, world's first commercial methanol production plant started in Kaso of which country? So Denmark. Which double Olympic medalist javelin thrower was honored with the honorary rank of lieutenant colonel in the territorial army? Neeraj Chopra. Google has changed its G logo. This change is in the Google is in line with the Google's increasing focus on artificial intelligence. Who was honored with the honorary Palme d'Or award at the opening ceremony of the 78th Cannes Film Festival? So Robert De Niro, an American actor, was given the award. How many cities did India launch the chip-enabled biometric e-passport service? So 13 cities. Where did the Inland Waterways Authority of India establish its new regional office? In Srinagar. Next is, to celebrate the success of Operation Sindoor, where was the Tricolor Yatra named Shaurya Samman Yatra Valor Honor March organized? So it was organized in Delhi from Kartavya Path to War Memorial at India Gate. The Government of India officially announced that Ayurveda Day celebrated on Dhanteras will now be observed on which date? So it is going to be observed on 23rd September. Which politician of Indian origin has been appointed as the country's new foreign minister by the Canadian Prime Minister Mark Carney?
So Anita Anand. Which cities did Electronic and Information Technology Minister Ashnivi Vaishnav inaugurate the country's first 3 nanometer chip design center? So Noida and Bangalore. Under what theme was International Day of Plant Health celebrated? So this is the importance of plant health in One Health. Next is, under what theme was the International Nurses Day celebrated? So it was celebrated under the theme Nurses, a voice to lead, delivering quality and securing equity. People of which religion celebrated International Vesak Day as the most sacred day? So this is Buddhism, that is symbolizing the birth, enlightenment and Mahaparinivan of Lord Buddha. Next is, which legislative assembly in India became the first to be fully solar powered? So it is Delhi. Which country officially declared the Yala Glacier as dead? Nepal. Who was appointed as the president of the BRICS Chamber of Commerce and Industry? Harvansh Chawla. Next is, which debt-ridden neighboring country has been provided the financial assistance of $50 million from India? Maldives have been appointed. Which country banned the chess due to concerns over Sharia law? Afghanistan. Which veteran Indian cricketer announced his retirement from Test cricket? Virat Kohli. Next is, the book written by which author and academician PMO, Prime Minister Office through the years, was released? Himanshu Roy. Which Indian multinational information technology company joined the European Commission's AI agreement? HCL Technology joined it. Which state police launched an initiative called Nai Disha, that is new direction, to re-enroll school dropouts? So Delhi government. Under a ceasefire of how many days in their long-standing trade war, America and China agreed to cut the mutual tariff by 115%. So 90 days. Which state introduced a policy to fully exempt property tax for housing of active defense personnel? Andhra Pradesh. Under what theme was the National Technology Day celebrated? So it was celebrated under empowering a sustainable tomorrow through innovation. How many new products did Uttar Pradesh government add under its flagship One District One Product ODOP scheme, bringing the total number of products in the state 75 district to 74? So 12 products were launched by the UP government. Next देखते हैं, in which city did Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the BrahMos missile production facility? Lucknow. Under what theme was the World Migratory Bird Day celebrated? So the theme was creating bird-friendly cities and communities. Which leading fisheries scientist, known as the father of the Blue Revolution in India and a Padma Shri awardee, passed? So Subanna Ayyappan. Very important है ये, आप इसको याद कर लेना अच्छे से. Scientists from which country announced the creation of first pangenome of Asian rice using sequencing technology? So this is China. Which two states signed an agreement to jointly launch the world's largest groundwater recharge system, that is Tapti Basin Mega Recharge Project? So this is Madhya Pradesh and Maharashtra. Next is, in collaboration with which organization did UP government launch a two initiative, UP Argis and AI Pragya, to boost the economy? So this is World Bank. Which country banned the antimicrobial drugs in the aquaculture sector? India has banned it. Between India and which country a free trade agreement was signed? So India and New Zealand. Despite India's objection, how many $billion did IMF approve for Pakistan? $1 billion. Whom did South Korea appoint as its brand ambassador for tourism? Hina Khan. Vice President Jagdeep Dhankar released the autobiography of the governor of which state? Bandaru Dattayya, by the title Janta Ki Kahani Meri Atmakatha, the people's story, my autobiography. So he is the governor of Haryana, and the book written by the governor of Haryana becomes important. Next is, what new name is given by the Jharkhand government to Dr. Shyama Prasad Mukherjee University in Ranchi? So Veer Buddhu Bhagat University is the new name. Next is,
Under the biggest foreign deal in the Indian banking sector to date, SBI and seven other banks together sold what percentage of their total stake in Yes Bank? So 20% stake has been sold. Next is, under what theme was the World Red Cross Day celebrated? Keeping humanity alive. Theme of World Thalassemia Day. So it is Together for Thalassemia, uniting communities, prioritizing patients. By what name did public sector bank SBI launch the largest staff engagement initiative to empower its workforce? This is NXT Leap. Which country has launched a 10-year golden vista to attract Indian investors and tourists? This is Vietnam. By which year Microsoft has co-founded Bill Gates announced to donate 99% of wealth? So by 2045. In response to Operation Sindoor, Pakistan attacked several Indian cities under what name? So, under Operation Bunyan ul Marsus. Which country officially launched the world's first national level cryptocurrency payment system? Bhutan. USA. Yes. At the World Bank Land Conference held in Washington, USA, which country was honored as the country champion for its digital land administration initiative? So, this is India. Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) handed over the first indigenous anti-submarine warfare shallow water craft to the Indian Navy by what name? So the name is Arnala. Next is, Cardinal Robert Francis Prevost was elected as the 267th Pope of the Roman Catholic and the first American Pope. By what name will the Cardinal Robert Francis Prevost be now known? So he will be known by Pope Leo 14th. Very important है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. Which indigenous anti-submarine warfare corvette of Indian Navy participated in the International Maritime Defense Exhibition held in Changi, Singapore? So it is INS Kilton. Which day was celebrated on 7th May? So World Athletics Day. Which Indian captain announced his retirement from Test cricket? So it is Rohit Sharma. Next is, approved 60,000 crore to upgrade 1,000 government ITIs and establish how many National Center of Excellence? Correct answer is 5. Which Bengaluru-based AI startup launched its latest text-to-speech model, Bulbul V2? The name is Sarvam AI. What was India's total fertility rate in 2021 according to the report released by the Registrar General of India? So the fertility rate is 2.1. Highest is in Bihar, that is 3.0, while lowest is in Delhi and West Bengal at 1.4%. The Union Cabinet approved the expansion plan of 11,828 crore for how many IITs? So 5 IITs in Tirupati, Palakkad, Bhilai, Jammu and Dharwad. For national preparedness to deal with war or any serious emergency, civil defense mock drill were organized in how many districts of India? Correct answer is 244. Which state launched a special educational program named Jyoti to ensure schooling for children of migrant workers? Correct answer is Kerala. Which country unveiled a commemorative plaque for Biju Patnaik at its embassy in New Delhi for his bravery during the World War II? Russia. In Human Development Report 2025 released by the United Nations Development Programme, what is India's rank among 193 countries? So India's rank is 130th. Which two women officers led the press conference on the military Operation Sindoor conducted by the Indian Armed Forces in Pakistan? So Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. Now next is, under which operation did India conducted airstrikes on 9 terrorist hideouts in 7 cities of Pakistan in response to the Pahalgam terrorist attack that occurred on 22nd April? So it was Operation Sindoor. Under what theme was World Asthma Day celebrated? Making respiratory treatment accessible to all. Moody's rating revised India's gross domestic product growth forecast from for 2025 from 6.5% to 6.3%.
In which city did the Union Ministry of Education approve the establishment of an off-campus center for IIFT New Delhi? So this is Gift Gandhinagar. With which country India signed a historic free trade agreement? So the country is United Kingdom. Where was the 11th Sea Trade Maritime Logistics Middle East Conference held? So it was held in Dubai. Next is 10th Chancellor of Germany is Friedrich Merz. Which state announced the launch of Adi Shakti mission for women empowerment and Yashwant Vidyarthi Yojana for students? So this is Maharashtra. Next is who became the first Indian advocate to be honored with the Medal of Honor award at the World Law Congress held in the Dominican Republic? This is Bhuvan Dibhu, who won the CCI Billiards Classic title. This is Pankaj Advani. Regarding the water sharing of which river between Punjab and Haryana, the Bhakra water tension was in news. So this is regarding the Satluj river. Which state celebrated the Traders' Day? Tamil Nadu. The central government launched a nationwide scheme to provide cashless treatment up to how much for road accidents victims? So this is 1.5 lakh. Next is whom did India appoint as the interim director on the board of the International Monetary Fund? This is Parmeshwaran Iyer. In which two cities did the Ministry of Civil Aviation approve the new greenfield projects? Airport, Kota, Rajasthan and Puri, Odisha. In which city it was announced that India's first transmedia entertainment city, Creator Land, will be established? So this is in Amravati. Now next is who was honored with Pulitzer Prize 2025 for public service? This is Kavita Surana. Where was Northeast India's first geothermal well successfully drilled? It was drilled in Dirang, Arunachal Pradesh. Which state government launched the Pandit Lakshmi Chand Kalakar Samajik Samman Yojana to provide financial assistance to senior artists? This is Haryana. For its age-friendly policy, which Indian city was included by the WHO in the global network of age-friendly cities and communities? This is Kozhikode, Kerala. Which country became the first in the world to develop the genome-edited rice varieties? India. Where was the 58th annual meeting of the Asian Development Bank held? It was held in Milan, Italy. Whom did the China defeat to win the Sudhiraman Cup for a title record of 14th time? So this is South Korea. Warren Buffett resigned from the CEO position of Berkshire Hathaway and handed over the leadership to Greg Abel. By what name the election commissioner announced to the launch of new app integrating more than 40 existing apps? Correct is ECI Net app. Where did the fintech company Gold Sikka launch the India's first AI-enabled gold melting machine? This is in Hyderabad. Which party of Singapore's Prime Minister Lawrence Wong recorded a landslide victory in the general elections? So the party is People Action Party. In collaboration with whom the Indian Navy successfully tested the indigenous designed and developed multi-influence ground mine? So it was developed by DRDO. Next is which country approved the sale of Hawkeye 360 technology to enhance India's maritime surveillance capabilities? USA. Where was the first World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 held? So it was held in Mumbai. Which day is celebrated on May 3rd? So World Press Freedom Day. Which former cricketer was banned for the 3 years by Kerala Cricket Association? This is S. Srinath. Who successfully tested the indigenous stratospheric airship platforms from Shiopur, Madhya Pradesh, that is DRDO. For the first time, Jawan of which paramilitary forces set a record for success climbing for the world's fifth highest mountain peak, that is Mount Makalu, so ITBP. Which became the 123rd member country to join the International Solar Alliance? This is Angola. Who was re-elected as the Prime Minister of Australia? So Anthony Albanese. Who took office as the new Prime Minister of Yemen? Salim Saleh bin Birk. World Press Freedom Index 2025 published by Reporters Without Borders. What India rank got among 180 countries? So in rank of India in the World Press Freedom Index in 151.
On the occasion of World Press Freedom Day, UNESCO honored which country's historic newspaper La Prensa with the Guillermo Cano Press Freedom Award. So the name of country is Nicaragua. In which city it was announced that the country's first foreign university-centric edu city will be established on May 2. So it will be established in Navi Mumbai. Who was appointed as the chairman cum managing director of the Oriental Insurance Company, Sanjay Joshi. In which city of Andhra Pradesh, IBM and TCS partnered to develop India's quantum computing industry by establishing a Quantum Valley Park. This is Amravati. Next is, where was the tabletop exercise TTX of the Quad Nation, that is India, Australia, Japan and USA held? It was held in Honolulu, that is in Hawaii, USA. Whom did the Indian Air Force appoint as its new Vice Chief of Air Staff? Air Marshal Narmedeshwar Tiwari. Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first deep water container transshipment port in which location? So in Vizhinjam International Seaport, which is in Thiruvananthapuram. Who took charge as a member of the UPSC? Sujata Chaturvedi. In which city Amit Shah unveiled the statue of Bodo leader Bodofa Upendra Nath Brahma? So this is New Delhi. Under which CBI operation was action taken against the international cybercrime network involved in child sexual abuse material? So this is Operation Hawk. Next is, Maharashtra government successfully retrieved the prestigious sword of which founder of the Nagpur Bhonsle dynasty from an auction in London? So the prestigious sword of Raghuji Bhonsle won. Which municipal corporation issued India's first certified green municipal bond? This is Ghaziabad. Whom did Sobo Mumbai Falcons, a T20 Mumbai League, appoint as their brand ambassador? So Kapil Dev. Who was appointed as the head of National Security Advisor Board? This is Alok Joshi. Where the West Bengal CM Mamata Banerjee inaugurated the Jagannath Temple? It was in Digha. Who won the Copa del Rey Cup? It was won by Barcelona. India signed an agreement with which country to purchase 26 Rafale Marine fighter jets? France. Who was honored with Fiji's highest honor, Companion of the Order of Fiji? This is Madhusudan Desai. Next is, who topped the second Asia Yogasana Sports Championship? So India topped it with 87 medals, of which 83 were gold, 3 were silver and 1 was bronze. Japan announced the inclusion of which sport in the Asian Games 2026 to be held in Aichi and Nagoya prefectures? So cricket is to be added. In the KRH rating states ranking 2025, which are the top 3 states based on their overall performance in economy, infrastructure and environment? So Maharashtra, Gujarat and Karnataka. Who was re-elected as the Prime Minister of Trinidad and Tobago? It is Kamala Prasad Bisesar. Which state launched India's first AI-powered real-time warning system? This is Madhya Pradesh. In which country will the 11th edition of Talisman Sabre military exercise held? It is held in Australia. Next is, the novel Kashmir Shawl was written by whom? It was written by Rosie Thomas. India sent the second batch of BrahMos supersonic cruise missile to which country? So to Philippines. Which country declared a national day of mourning on 28th April? So Iran declared. United Nations launched a Votan as a global platform for victims of terrorism, supported by which country? So Spain. Which country announced the end of Ebola Sudan virus outbreak? So this is Uganda. Under the National Steel Policy of on April 28, 2025, by when has India set a target of 300 million tons of steel production? So the target is to achieve it by 2030. According to Henleys and Partners Wealth Report, which international city is the most expensive city in world? It is Monaco. Next is, according to the information given by the World Bank on April, how many million people have come out of extreme poverty in India in the last decade? So 171 million people. Next is, whom did the Assam Rifle appoint as its first female dog handler? So this is Sri Lakshmi PV. By what name was the 6th joint military exercise between the armies of India and Uzbekistan held in
on the Pune. So the name of exercise is Taslik. Who won the Premier League title for record 20th time? This is Liverpool FC. Who launched the Shenzhou 20 mission to the space station? This is China. Who won the Best Director award at the Moscow Film Festival? This is Paradeep Purab. NASA's oldest astronaut returned to Earth. What is its name? Name is Don Pettit. Next is Simlipal is in which state was officially granted the status of a national park? This is in Odisha. On the occasion of the 50th anniversary of which national park a coordinated census similar to Nilgiri Tahar census was conducted in Kerala and Tamil Nadu? This is Eravikulam National Park. Next is under what name did the United Nations Food and Agriculture Organization, that is FAO, launched a new initiative to improve the monitoring of ecosystem at the global level? This is Aim for Nature. Next is who won the title of Pune FIDE Women's Grand Prix Tournament? This is Koneru Hampi. 16 of the 27 districts in which state were declared malaria free? This is Arunachal Pradesh. Who was honored with the prestigious Officer of the Order of the Arts and Letters by the French government? The name is Payal Kapadia. In the Times Higher Education Asia Ranking of 2025 released on 25th April, which institution is at the top in India? This is IISc Bangalore. Where did the Modi Smriti Sangrahalaya, that is Modi Memorial Museum, inaugurated? So it is inaugurated in Bihar. Which state announced 20% reservation for Agniveer in police recruitment? Sikkim. Whom did the World Bank include in its private sector investment lab to promote job creation? This is Sunil Bharti Mittal. Whom was the Latana Dina Mangeshkar Award 2025 given? It was given to Kumar Mangalam Birla, an industrialist. Where was the South India's first AC-EMU train launched? It is launched in Chennai. How many global geoparks did UNESCO designate as global geoparks? So total number is 16. Next is who topped the ISSF Cup of 2025? So China topped. India's rank is total third in the ISSF World Cup with 7 medals. Next is which country successfully tested a non-nuclear hydrogen bomb? This is China. In which state was the Garia and Borsho Boran Utsav inaugurated? It was inaugurated in Tripura. Who was chosen as the best male athlete at the Laureus World Sports Award 2025? So Armanda Duplantis. With what theme was the 7th Poshan Pakhwara Nutrition Fortnight celebrated in India? So the theme was Suposhit Bharat, Samridh Bharat, that is nourished India is prosperous India. 2 cheetahs were shifted from Kuno National Park and released into which sanctuary? So they were released into Gandhi Sagar Sanctuary in Madhya Pradesh. Where did Indian Air Force participate in the multinational international air exercise Desert Flag 10? So it was in UAE. Who was honored with the prestigious Shiv Chhatrapati State Sports Award of the year 2022-23? So Krishna Do Khale. Where did Indian Army launch the Voice of the Kinnor community radio station? This is in Himachal Pradesh. With what theme? A 2-day conference on Buddhism organized in Namsai, Arunachal Pradesh. So it was in Dhamma Culture of the Northeast. Next is which state will become the first to complete an archaeological survey at village level? This is Karnataka. Which country astronaut Eliski Ovichin returned from the International Space Station after a 7-month mission? This is Russia. Which ministry hosted the Rashtriya Karmayogi Jan Seva Karyakram? This is National Karmayogi Public Service Program by Ministry of Ayush. Where was the Prime Minister Modi book संस्कृति का पांचवा अध्याय fifth chapter of culture law? So it was launched in New Delhi. Which country president announced the 30-hour ceasefire for Easter? This is Russia. Who was selected as the Young Global Leader 2025 by the World Economic Forum? This is Ram Mohan Naidu. Which state cabinet approved the draft of the SC subclassification ordinance? This is Andhra Pradesh. Which medal did Himanshu Jhakar win in the Under-18 Asian Athletics Championship? So, gold medal. Next is in which state was the Rongoli Bihu festival symbolizing the beginning of the new year celebrated? It was celebrated in the state of Assam.
Next is, with what theme was the World Liver Day 2025 celebrated? Celebrated by the name of Food is Medicine. Who created history by making his IPL debut at the youngest age, that is 14 years, and also became the 10th player to debut in IPL by hitting a six, that is Vaibhav Suryavanshi from Rajasthan Royals. Next is, which IIT discovered a host protein to fight germs? IIT Mumbai. Scientists from which IIT developed a lotus leaf like solar evaporator for saltwater treatment? This is IIT Mumbai. With what theme was the World Heritage Day celebrated? Though it was celebrated under Heritage Under Threat from Disaster and Conflict. In which state Silkyara Tunnel located that was renamed as Baba Baukhang Tunnel? So this is Uttarakhand. Which state government launched the Mahila Samvad Abhiyan? So Bihar launched this. Who won the title of the first Mrs. Globe International 2025 held in Shenzhen, China? Anuradha Garg. Which ancient book did UNESCO include in the memory of the World Register? This is Bhagavad Gita and Bharata Muni Natya Shastra. Which Bollywood actor was honored at the Macau Comedy Festival in China? This is Amir Khan. Where did the Indian Navy host the third edition of Medhayan 25? New Delhi. By what name was the joint naval exercise of Indo-African countries against maritime piracy organized in Dar es Salaam in Tanzania? This is Akiyamai 25. Who represented India at the 15th meeting of the BRICS Agriculture Minister held in Brazil? This is Shivraj Singh Chauhan. Which state became the first in the country to make 3 languages compulsory in the school curriculum? This is Maharashtra. Who received the Legend of the Endoscopy Award? D. Nageshwar Reddy. Now, with what theme was the World Voice Day 2025 celebrated? The theme was Empower Your Voice. According to the data released on 16th April, which country recorded its hottest year ever in 2024? This is Tanzania. How many Indian defense personnel were honored with India's oldest military honor, McGregor Memorial Medal? So, 5. 172nd anniversary of the first train in the country was celebrated in which year? Did the train depart from Bori Bunda to Thane? So it was inaugurated in 1853 under the governorship of Lord Dalhousie. Next is, in the ACI World List of the world's busiest airport, what rank did Indira Gandhi International Airport secure? So 9th rank was given. USA's Hartsfield-Jackson Atlanta Airport topped this list. Now, next is, which state government launched the one-stop healthcare solution e-Sehat app? Jammu and Kashmir. Next is, in which train did the Bank of Maharashtra install the country's first train ATM? Mumbai Manmad Panchavati Express. Which state celebrated its 78th Foundation Day? Himachal Pradesh. With what theme was the World's Arts Day 2025 celebrated? So, Art for Unity and Healing. Which renowned Hindi critic and writer passed away recently? Nirmala Jain. Where was the Defense Literature Festival Kalam or Kavach 2.0, that is Pen and Armor 2.0, organized in New Delhi? Next is, whom did Punjab defeat in the title of Hockey India Senior Men's National Championship? Madhya Pradesh. Whom did the ICC choose as the men's and the women's player of the month for the March? That is Shreya Iyer and Georgia Wall of Australia. In which 3 cities of the state has the Maharashtra government announced the establishment of the AI Center? This is Pune, Mumbai and Nagpur. Which state declared the heat stroke and sunburn as a state-specific disaster? Telangana. With which American tech company did IIT Delhi partner to promote semiconductor research? Micron. Who were respectively elected as the chairperson and the vice chairperson of the Indian Weightlifting Federation Athletics Commission? That is Mirabai Chanu and S. Satish Kumar.
Next is when where was the Stree, that is she triumphs through reforms, entrepreneurship and empowerment, that is Stree Summit organized. So it was organized in Hyderabad. Where did the Union Minister of State Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first high altitude atmospheric and climate research center, the Himalayan Climate Center in Natha Top in Udhampur. Who was honored with the Varchul Dalit Literature Award? P. Sivakami. Which state government launched the Bhu Bharti Act and the Bhu Bharti Land Portal? So it was launched in Telangana. Who has taken over as the chairman of the 23rd Law Commission of India? Dinesh Maheshwari. Where was the Apricot Flower Festival 2025 organized? So it was organized in Sanjak village. Next is by which rocket a team of 6 women, including American singer Katy Perry, created history by flying the upper reaches of the Earth's atmosphere aboard? So it was New Shepard NS-31 Blue Origin of Amazon. Which incumbent president of Ecuador secured a 4-year term in the country's presidential election? This is Daniel Noboa. By what name did Bihar Chief Minister Nitish Kumar unveil the mascot for Khelo India Youth Games 2025? Answer is Gaj Singh. In which city of Haryana did the Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for the third unit of the Deenbandhu Choturam thermal power plant and the Gobardhan plant? It is in Yamunanagar. What is the number of India in the world to successfully test laser guided weapon system? This is India's fourth rank. Which state launched the Bhu Bharti portal for land record management? Telangana. On the occasion of World Quantum Day, which of India's most powerful quantum computers to date was launched by Bengaluru-based startup QPIAI? That is QPIAI Indus is the name of the supercomputer. Next is by what name did the Madhya Pradesh government declare the Banda Shahgar forest area of Sagar district as the state 25th century? So this is Dr. Bhimrao Ambedkar century. Which day was observed on 13th April? So it was Jallianwala Bagh massacre and Siachen Day. Who was reappointed as the chairman of the ICC Men's Cricket Committee? Saurav Ganguly. Who was elected as the new president of the Central African country Gabon? Brice Oligui. Who was appointed as the Director General of the National Anti-Doping Agency NADA? Siddharth Singh Longjam. Next is by what name was the 4th tri-service naval exercise between India and United States held in Visakhapatnam and Kakinad, Andhra Pradesh? The name was Tiger Triumph 2025. Which Kathak dancer and choreographer passed away in Ahmedabad? Lumidini Lakhia. Who won the Monte Carlo Masters 2025 title? Carlos Alcaraz. Which country assumed the presidency of Interpol Governance Committee? UAE. Whom did Mohan Bagan Supergiant defeat to win the Indian Super League Football 2024-25 title? Bangalore FC. Which former England cricketer, England fast bowler, was honoured with the knighthood of Forest Services to cricket? James Anderson. Under which campaign did RBI launch an official WhatsApp channel to easily disseminate the financial information? The name of the platform is RBI Says. Next is where was the world's largest peace conference, the Global Justice, Love and Peace Summit held? So it was held in Dubai. Next is which Padma Shri awardee, environmentalist and wildlife conservationist passed away in Khammam, Telangana? So this is Daripalli Ramaya. Under which theme was the 9th Global Technology Summit GTS organized? This is Sambhavna. What was the name of the National Safe Motherhood Day 2025? Healthy Beginnings and Future Hopes. Which day was observed on 11th April? So this is World's Parkinson's Day. In which city did the central government announce the establishment of a world-class institute dedicated to animation and gaming sector, that is Indian Institute of Creative Technology IICT, that is Mumbai. Next is at which location in London was the installation of a statue of Shah Rukh Khan and Kajol's 1995 film Dilwale Dulhaniya Le Jayenge announced? So it is announced in Leicester Square.
Which renowned Indian endocrinologist was honored with the CSA Medal of Achievement at the World Osteoporosis Congress 2025 held in Rome? This is Dr. Ambarish Mittal, who became the first player in history of IPL to hit 1000 fours and 6, Virat Kohli. In which multinational countries or 15 countries air exercises held in Hellenic Greece did the Indian Air Force participate? So the name is Inoikos 25. On 10th April, World Homeopathy Day was observed. To which country India provided financial assistance of 90,000 US dollars, 9 lakh 90,000 US dollars through United Nation Partnership to empower persons with disabilities. This is Sierra Leone. Next is President Draupadi Murmu was on the state visit to which two countries? So Portugal and Slovakia. Next is which country's Constantine the Philosopher University conferred the honorary degree of honoris causa to President Draupadi Murmu? It is Slovakia. In which country's Arida city was the first 3D printed train station unveiled? So it was unveiled in Japan. Which African country became the first to sign the country partnership framework with the International Solar Alliance? So this is Mauritius. Next is by what name did DRDO successfully conducted a release of trial of 1000 kg long range glide bomb LRGB for fighter aircraft Sukhoi 30 M3I MKI, that is Gaurav glide bomb. Which state topped the Panchayat Unnati Index 2022-23 released by the Ministry of Panchayati Raj? So this is Gujarat, and Telangana scored the second spot. In which religion's Navkar Mahamantra Day celebration held at Vigyan Bhavan, New Delhi did Prime Minister Narendra Modi participate? So it was regarding Jainism. Which anniversary of its establishment was celebrated by the Indian Council for Cultural Relations? 75th. India approved a 64,000 crore deal to buy how many Rafale M fighter jet from France? 26. With which country did India agree on 6 new strategic projects to boost the bilateral investment cooperation? That is Russia. Who was appointed as the acting governor of Nepal Central Bank? This is Nepal Rashtra Bank, and the person appointed is Dr. Neelam Dungana Tim Sina. Researchers identified the black rat as primary carriers of hantavirus in the rural areas of Madagascar. Next is, according to the periodic labor force survey PLFS released on 9th April, India's unemployment rate among the individual aged 15 years and above decreased from 5.0 to 4.9%. What percent of India's GDP did ADB for Asian Development Bank for the financial year? So 6.7%. Under whose operation did the Government of India launch the National Critical Minerals Mission for self-reliance in the critical mineral sector? This is Geological Survey of India. Next is which sports return to the Los Angeles Olympics 2028 was officially approved by the International Olympic Committee? The name of the sport is cricket. Next is which airport received the title of the world's best airport for the 13th time at the Skytrax World Airport Awards 2025 held in Madrid? So Changi Airport of Singapore. Which Crown Prince of Dubai made its first official visit to India? Sheikh Hamdan. Which Padma Shri awarded dry folk dance artist passed away in Sagar, Madhya Pradesh? Ram Sahai Pandey. Which head of the Brahma Kumari Siswari Vishwavidyalaya passed away in Ahmedabad? Raj Yogini Dadi Ratna Mohini. Which state was honored with 2 UIDAI awards for excellence in Aadhaar implementation? So this is Meghalaya. Who was appointed as the CEO of the Oman India Joint Investment Fund? Satish Chhawa. The Pradhan Mantri Mudra Yojana completed how many years? So it completed 10 years. Next is which country became the 54th country to commit to responsible space exploration by signing the Artemis Accord? This is Bangladesh. Which species extinct for the first time in 13,000 years ago was successfully revived by the Dallas-based biotech company Colossal Biosciences? The name is Direwolf. In which city of Odisha did IOC announce the establishment of a large petrochemical complex with an investment of 61,000 crore? So the name is Paradip. Next is
Union Health Minister launched an indigenous portal named what to improve the healthcare management and patient referral system across the country. So this is Inter AIMS referral portal. Next is the Maharashtra government decided to rename the historical city of Khuldabad to its old name of Ratnapur. RBI Monetary Policy Committee, in its first policy review for the new financial year 2025-26, reduced the repo rate by 25 basis point to what percent? To 6%. With what theme the World Health Day 2025 was celebrated? So it was celebrated with the theme of healthy beginnings, hopeful future. Who became the first Indian to complete 13,000 runs in T20? Virat Kohli. Next is, by how many rupees per liter did the Indian government increase the excise duty on petrol and diesel? So 2 rupees it has been increased. For the period of financial year 2025-27, to which United Nations body India was elected? UNISAR. With whose collaboration did the Government of India launch the Digital Threat Report? So MITI, that is Ministry of Information Technology, CSIR Tiffin and SISA. Which Bangalore-based payment company has the honor of becoming the India's first unicorn of 2025? JustPay. Which city in Portugal honored the President Draupadi Murmu with the City Key of Honor, Lisbon? What was the theme for the International Day of Sports for Development and Peace? Leveling the playing field, sports for social inclusion. Who won the Japanese Grand Prix? Max Verstappen. Next is, who became the first Indian boxer to win a gold medal at the World Boxing Cup held in Brazil? Hitesh Gulia. Prior to the Hajj pilgrimage, Saudi Arabia temporarily suspended the certain visa categories for how many countries, including India? So 14 countries. Under what name did Meta introduce three advanced models as a part of Llama 4 AI suite? So this is Scout, Maverick and Baymoth. Which Indian sand artist was honored with the Fred Darrington Award at the Sandworld 2025 held in England? So this is Sudarshan Patnaik. Which country proposed the creation of a UN-backed Global Climate Action Council? Brazil. Which state government increased the reservation for Agniveers recruits under a specific military category in state police jobs from 10% to 20%? So this is Haryana. Next is, according to data released, which state achieved the highest real economic growth rate 9.69 in India for year 2024-25? So this is Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first vertical lift railway sea bridge between Mandapam and Rameshwaram in Tamil Nadu. The new name is New Common Bridge. Which two countries did Prime Minister Narendra Modi visit? So he visited Thailand and Sri Lanka. What was the theme for the National Maritime Day? Our ocean, our responsibility, our opportunity. Whose birth anniversary was Samta Divas Equality Day observed? So it was observed on Jagjeevan Ram, and who was the former Prime Minister of India. Who was appointed as the Director General of the Fire Services and Defence by the central government? The name is Seema Agarwal. Which became the 35th state, a union territory to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Delhi. With which country did India sign a historic defence agreement for the first time, aiming for deep cooperation in military sector? Sri Lanka. Next is, who was elected as the Vice President of All India Ophthalmological Society? Mohan Ranjan. Who was honored with the Rashtriya Samudri Varun Puraskar National Maritime Varun Award during the 62nd National Maritime Day celebrated in Mumbai? Rajesh Uni. Who was honored with the Breakthrough Prize 2025, often referred to the Oscar of Science? So Dennis. So these are the names who have been given this award. Which act did President Draupadi Murmu approve, making a significant shift in the administrative dynamics of the Work Properties Act? So this was the Work Amendment Act. Which country honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, Mitra Vibhushan? So Sri Lanka. What was the theme of the International Mine Awareness Day? Safe Future starts here. Which country imposed the restriction on the export of the rare earth metal? China. Which of the world's most influential technology companies celebrated its 50th anniversary? Microsoft. Which veteran actor of Malayalam and Tamil film passed away? Ravi Kumar. Next is, which famous veteran Bollywood actor renowned for his iconic patriotic film passed away in Mumbai? So this is Manoj Kumar. Where was the 11th BRICS Environment Minister meeting held? So it was held in Brasilia.
Which country discovered the largest ever deposit of rare earth metal used in green energy technologies and modern electronics? This is Kazakhstan. Next is who was appointed as the Chief Justice of the Indian High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? Justice Arun Palli. What is India's rank among 170 countries in the Frontier Technology Readiness 2025 released by the United Nations Conference on Trade and Development? This is 36th. USA topped this. What to the United Nations report released? What is India rank in terms of artificial intelligence? 10th. Which country assumed the chairmanship of BIMSTEC for the next 2 years? Bangladesh. Where was the Indian Military Commanders Conference held? In New Delhi. Whose 345th death anniversary of the great Maratha and founder of Maratha Empire was observed? So, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Who was awarded hosting rights for the Women World Cup? United Kingdom. Who has appointed the new president of the Asian Cricket Council? Mohsin Naqvi. Who was honored with the National Youth Award for bringing about a change in the early childhood education in India? It was Akash Rao, founder of Yuva Spark. Two products from Tamil Nadu received the GI tag, bringing the total number of the geographical indication of the state to 62. So, Thanjavur Kumbakonam beetle leaves and Kanyakumari's Thuvai flower garland. Which state Chapata chili, also known as tomato chili, received the geographical indication tag? So, Telangana. Next is how many products from West Bengal were granted the GI tag? So, 7. Nolade Gurer Sandesh, Boripur Guava, Kamar Pukur's White Bonde, Murshidabad Channa Bora, Bishnupur Motichur Laddu, Radhuni Pagal Rice, Maldas Nistan Silken Thread. Who was appointed as a full-time member of the Insurance Regulatory and Development Authority? Swaminath S. Iyer. Where was the 6th BIMSTEC Summit held? In April, so it was held in Bangkok, Thailand. Now, next is what was the theme of World Autism Awareness Day 2025? Moving from surviving to thriving, autistic people share their perspectives. Who won the USA Grand Prix of 2025? Francisco Bagnaia. Next is who did the National Payment Corporation of India NPCI appoint as the executive director? So the answer to this is Sohini Rajula. Which state Vindhya silk and Khasi handloom products were granted the geographical indication tag? So Meghalaya. By which name India and Russia conduct their 14th maritime bilateral exercise off the coast of Chennai in the Bay of Bengal? So Indira 2025. Which state celebrated its annual Utkal Divas? Odisha. Which anniversary of its establishment did RBI celebrate on April 1, 90th? In which state did the tribal community celebrate Sarhul Mahotsav? Jharkhand. By how much rupees did the Government of India increase the wage rate under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme for the financial year 2025 from 7 to 26 rupees per day? Which veteran player of Indian women hockey team announced her retirement from the international hockey? Vandana Kataria. With which country did India celebrate the 75th anniversary of establishment of its diplomatic relations? China. Who achieved a significant feat by winning a gold medal at the prestigious Ezelov CSI Lear Equestrian competition in Belgium? Niharika Singhania. What percentage increase was recorded in India's defense export in year 2024-25? So 12.04%. Which state government launched a free bus service for women? Jammu and Kashmir. Which of its wholly owned subsidiaries did Aditya Birla Capital merge with itself? So Aditya Birla Finance. Who was appointed the MD and CEO of SBI Card? Salila Panigrahi. Who assumed the charge as the new chairman of the Pension Fund Regulatory and Development Authority? Shiv Shankar Raman. Next is which state government launched the CM Women Entrepreneurship Campaign to enhance the economic self-reliance of women? Assam.
Next is, in which district the Haryana government declared two Harappan sites, Tigrana and Mithali, as protected archaeological monuments. So this is in Bhiwani district. Who was appointed the deputy governor of RBI by the central government? Poonam Gupta. Who assumed the office as the 7th General Secretary General of the Commonwealth countries and the first African woman? Shirley Ayorkar Bochwe. Which name of art image created by AI went viral? So Ghibli art is the name. Which team defended the Jindal Panther to win the Aditya Birla Memorial Cup Polo Cup 2025 title? Correct is Rajnigandha Achievers. In which city of Haryana did Amit Shah unveil a grand statue of Maharaja Agrasen? Hisar. Who was honoured with Uttar Pradesh Anmol Ratna Puraskar? Nikhil Singhal. Next is, which famous actor was appointed as the chairman of FICCI's Medias and Entertainment Committee South? Kamal Hassan. Who was honoured with the Gold Mercury Award for Peace and Stability? Dalai Lama. Next is, who successfully launched FRAM 2, the first human mission to orbit the Earth from pole to pole? It was launched by SpaceX. This is very important. Which state reached the top position in the country with total of 69 GI tags, surpassing Tamil Nadu in this matter? This is Uttar Pradesh. Which city in Uttar Pradesh received the GI tag for Thandai, Lal Peda, Lal Bharwa Mirch, Koronda, Shehnai, Tabla, mural paintings and Munch craft? So Varanasi को GI tag मिला है. Who did the central government appoint as the private secretary to the Prime Minister? Nidhi Tiwari. What was the theme of International Zero Waste Day 2025? Towards zero waste in fashion and textile. Which state celebrated its foundation day on March 30? So this is Rajasthan. The Prime Minister Narendra Modi announced the theme for the International Yoga Day 2025 to be celebrated on the upcoming 21st June. This is Yoga for One Earth and One Health. Which festival was celebrated on March 30 as a symbol of New Marathi year? Gudi Parva. Where did in Bihar Amit Shah inaugurate a Makhana processing unit on International Day of Cooperatives? So in Darbhanga. Which city famous Saudagiri block print received the geographical indication tag? Ahmedabad. On Ugadi, that is Telugu New Year, which poverty alleviation initiative did Andhra Pradesh government launch? So Zero Poverty P4 policy. Next is, by what name did the Prime Minister Narendra Modi unveil a special summer vacation calendar for children? So this is My Bharat calendar. In which state did PM Narendra Modi laid the foundation stone for the Sipat Super Thermal Power Project Phase 3? So in Chhattisgarh. In which city did IIM Ahmedabad announce its plans to establish its first international campus? In Dubai. Which Indian Institute of Technology hosted the Technical and Entrepreneurship Award? Tech Kirti. So it was in IIT Kanpur. Where did the National Green Tribunal organize the 2-day National Conference on Environment? So it was organized in New Delhi. Which Indian table tennis player has retired from professional table tennis? Achant Sharat Kamal. Which state has announced its decision to honor the renowned historian and archaeologist Maina Swami with the Ugadi Puraskar? So Andhra Pradesh. Who did Equita Small Finance Bank appoint as its executive director? Balaji Nuthalapadi. Who did the International Monetary Fund appoint as the member of the Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Development? So this is N. Chandrasekharan, that is the chairman of Tata Sons. By what name did India launch an operation for earthquake affected Myanmar? Operation Brahma. What percentage increase in dearness allowance did central government announce for central employees and pensioners? 2%. In which country was a state of emergency declared after severe earthquake? Myanmar and Thailand. Who won the women's and men's single title respectively in the Indians Open 2025 held in Mumbai? So Anahat Singh and Kareem Il Torki. Whose book The Great Conciliator, Lal Bahadur Shastri and the Transformation of India was released? So it was released by Sanjeev Chopra. Who was appointed to the advisory board of the Australia-India Relations Center? So Steve Waugh and Steve Waugh, former Australian cricketer, has been awarded. Next is,
Who was appointed as the chairman of the Indian Banks Association, CSJT, that is SBI chief? Which two transformative infrastructure initiatives in Bihar were approved for the project by the central government? Patna Ara Sasaram Corridor and Kosi Mechi Interstate Link Project. By what name did Uttarakhand government launch the mobile app for water conservation? So this is Bhagirathi. What was the theme of World Theatre Day 2025? The theme was Theatre and a Culture of Peace. Where did the Ministry of Electronics and Information Technology organize India's first Nano Electronics Roadshow? IISC Bangalore. By what name did Amit Shah announce the launch of a new app-based taxi service on the lines of Ola and Uber under the cooperative framework Sahakar? Very, very important. Next is, which city surpassed Mumbai to become Asia's billionaire capital in Hurun Global Rich 2025? So this is Shanghai. Which major non-banking financial company appointed Indian cricketer Jasprit Bumrah as its brand ambassador? L&T Finance. Which tourist recreational submarine sank off the coast of Hurghada in Red Sea, Egypt? So this is Sindbad. Who became the first Indian woman to be placed in top 10 of the Hurun Global Rich 2025? So Roshni Nathan Malhotra, who is the chairperson of the HCL, has been appointed. Who took the oath as the new Chief Justice of the Odisha High Court? Justice Harish Tandon. Who was appointed as the Managing Director of the DBS Bank? Ambuj Chandana. Which state topped the medal tally at the Khelo India Para Games held in Delhi? So Haryana won this with 34 gold, 39 silver, 31 bronze, total 104 medals. By what name did the Indian Army organize the Tri-Service Integrated Multi-Domain War exercise in Arunachal Pradesh? This is Prachand Prahar, and it is very important. Next is on 1009th birth anniversary of which saint and social reformer from Jhansi did the Department of Post release a commemorative postage stamp? So Mata Karma. According to the data released by the Indian Tea Board, which country did India surpass to become the world's second largest tea exporter? So this is Sri Lanka. Kenya was ranked the first. Where was the 10th ammunition cum torpedo cum missile barrage LSAM 24 Yard 34 launched? It was launched in Thane. What percentage of tariff did US President Donald Trump announce on imported cars and auto components? 25%. Which missile was successfully flight tested by DRDO and the Indian Navy? So it was a vertical launch short range surface to air missile VLSR SAM. What initiative did the Ministry of Education launch to preserve the Indian poems and rhymes for young children? So this is Balpan Ki Kavita. International Ramayana Conference 2025 organized in Colombo, Sri Lanka. The Punjab government announced the development of Nangal as a tourist center and wildlife sanctuary as the state's first leopard safari named Jhajjar Bachauli, Shri Anandpur Sahib. This becomes important क्योंकि स्टेट का पहला है. Next is, where did Sangeet Natak Academy organize 37th Kathak Mahotsav 2025? So this is in New Delhi. Which medal did Sunil Kumar win at the Asian Wrestling Championship 2025 in Amman, Jordan? So bronze medal. Next is, which country announced to join the new development bank established by BRICS countries? Indonesia. By what name a business platform established in Sri Lanka to enhance the economic cooperation between India and Sri Lanka? So Lanka India Business Association Bank. This was established. Which Indian company set a record for becoming the world's most valuable steel company? JSW Steel. For which contribution did Japanese mathematician Masaki Kashiwara receive the Abel Prize? So for his seminal contribution to algebraic analysis and representation theory. Who was appointed a full-time member of Niti Aayog? Rajiv Gauba. Which maritime initiative of Ministry of Ports, Shipping and Waterways completed 10 years? This was the Sagarmala. Next is, which Indian American scientist's appointment as the director of the National Institute of Health was approved by the US Senate? So this was Jay Bhattacharya. What was the theme of the World TB Day 2025 celebrated on March? Yes, we can end TB, commit, invest and deliver.
Who was elected as the bureau member of the United Nations Wrestling of Asia? That is Sanjeev Singh, who was the president of the Wrestling Federation of India, has been appointed. Under whose chairmanship did the Supreme Court constituted a national task force on increasing student suicide in higher educational institution? S. Ravindra Bhatt. Which Indian badminton player announced their retirement from the professional badminton? B. Sumit Reddy. Who did the central government appoint as the finance secretary, replacing Tuhin Khan Pandey? Ajay Seth is the correct answer. Next is which first zoo in India launched a DNA conservation project? So, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park of Darjeeling. What was the theme of 75th National Meteorological Day, closing the early warning gap together? On the occasion of World Meteorological Day, the Indian Navy organized the third Meteorological and Oceanographic Symposium in New Delhi by the name Meghayan 25. Who did the Music Academy announce would be honored with the Sangeet Kalanidhi Awards? R.K. Sriram Kumar, who is a violinist. Under what name was the 12th military joint exercise between India and Kyrgyzstan held? So Khanjar 12. It becomes important. Kabaddi World Cup of 2025 was organized in England. Next is what was the theme of the World Water Day 2025 celebrated on March? So glacier preservation is the correct answer. Which flower were exported from Mizoram to Singapore for the first time? So anthurium is the name of the flower. Next is who became the first player to lead three different teams in the IPL? So Ajinkya Rahane. Next is who was elected as the new chairman of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage? So this was Ashok Singh Thakur. Next is which state launched the AI chatbot Sarthi for citizen services? So this is Haryana. Next is which frigate warship built under Project 1135.6 at Goa shipyard was launched by the Indian Navy? So this is Tavasya. Which renowned Hindi writer was honored with the India's highest literary award, 59th Jnanpith Award? That is Vinod Kumar Shukla. Under what name 23rd bilateral naval exercise between India and France was held? So the name of the exercise is Varuna 2025. Where was the Purple Fest 2025 organized for persons with disabilities? So this was organized in Rashtrapati Bhavan, Delhi. Next is according to the data, which railway zone achieved the highest freight loading? East Coast Railways. Which state announced the construction of Ganga and Sharda River Corridor? Uttarakhand, to promote religious tourism. Who was appointed as the chairperson and managing director of REC? Parminder Chopra. Who became the first female president of Namibia? Nitumbo Nandi Nadaitawa. Who was appointed as the MD and CEO of the Indian Industrial Finance Corporation? Rahul Bhave. Which state launched an mobile app to bring transparency to the transfer process in the police forces? This is West Bengal. Next is who represented India in the 69th session of the United Nations Commission on the Status of Women held at the United Nations headquarters in New York? This is Annapurna Devi, that is Union Minister of Women and Child Development. What was the theme of the World Poetry Day celebrated on March 20th? That is poetry as a bridge for peace and inclusion. Next is which hydrologist won the 2025 Stockholm Water Prize? Gunter Bolschi. What was India's rank among 147 countries in the World Happiness Report of 2025 released on March 20? So this is 118th rank. Which Bollywood actor was made the brand ambassador by the Tata Motors? Vicky Kaushal. Which silk product from the Northeast received the OECO Tech certification from Germany? This is AD Silk. Who was elected as the first female and African president of the International Olympics Committee? This is Christy Conventry. Who became the first state of India to establish a senior citizen commission? This was Kerala. The Prime Minister of which country, Christopher Luxon, visited India? New Zealand. Where in Assam did the Union Cabinet approve the establishment of a brownfield ammonia urea complex? This is in Namrup. Who was awarded Denmark's Knight's Cross of the Order?
Dannebrog for diplomatic services, Vijay Shankar. Which country honored megastar Chiranjeevi with a Lifetime Achievement Award? He is from Britain. Next is, according to RBI data, which countries surpass the Gulf countries as top source of remittances to India? This is America and Britain. Indian Navy conducted which of its biggest war exercises? This is Tropics 2025. What is the rank of India in the global pharmaceuticals exports? 11th rank. Where was the multilateral naval combat exercise Sea Dragon 2025 of 5 countries including India hosted by the US from March 4 to March 19? This is Guam in Western Pacific Ocean. The Union Cabinet has approved which mission to promote growth in livestock sector? This is Rashtriya Gokul Mission. Which former Indian cricketer captain has been appointed as the Goodwill Ambassador of Vision 2020 India to fight blindness on March 19? So this is Krishnamachari Shrikanta. Next is, who has become the exclusive banking partner of the Sunriser Hyderabad? This is City Union Bank. Which state government has signed an agreement with the Gates Foundation for AI and Development Initiative? This is Andhra Pradesh. Which of the NASA astronauts have returned safely to the Earth after spending more than 9 months in space? So this is very important. So Butch Wilmore and Sunita Williams. Next is, where was the Raisina dialogue held? In New Delhi. Where was which day was celebrated on 18th March? This is Ordnance Factory Day. Whose book March of Glory was unveiled on March 18, commemorating the 50th anniversary of India's historic hockey World Cup victory in the year 1975. This is Errol de Cruz. Which online platform appointed its brand ambassador on March 18? So Rishabh Pant is the correct answer. Which Indian long distance runner has been banned for 4 years for failing a dope test? Archana Jadhav. RBI has signed an agreement with the central bank of which country for mutual transaction in local currencies? This is Mauritius. The Union Ministry of Information and Broadcasting has launched which initiative with the aim of funding and providing national recognition to startup in the media and entertainment sector? This is WaveX 2025. India's first PPP green waste processing plant has been announced to be launched in the Swachh Bharat Mission Urban is in Indore. Which senior BJP leader and former union minister passed away recently? Dr. Devendra Pradhan. In which state was the first scientific coal mine block Saringankham E inaugurated? So it was inaugurated in Meghalaya. Next is, what names did ISRO develop two advanced 32-bit high-speed microprocessor? This is Vikram 3021 and Kalpana 3021. Which Bangalore-based startup company has partnered with Astroscale Japan to remove space debris? This is Bellatrix Aerospace. Which public sector bank was awarded the Top Improver Award in the Ease 6.0 reforms? This is Punjab and Sindh Bank. India Masters led by Sachin Tendulkar defeated which team to win the IML, that is International Masters League title, by defeating the West Indies Masters. India has won total medals at Special Olympics World Winter Games 2025 held in Turin, Italy. Total 33 medals have been won. Dr. Mansukh Mandviya inaugurated the Fit India Carnival for the first time in New Delhi. Where was the first temple dedicated to Chhatrapati Shivaji Maharaj inaugurated? So it was inaugurated in Bhiwandi, Maharashtra. Who was sworn in as the 8th Prime Minister of Trinidad and Tobago? Stuart Young. Which state government has announced to provide the daily wages of rupees 300 to 320 per day to Manrega workers and 1500 per month to the girls in the budget 2025-26? So this is Himachal Pradesh. Which state government has launched the Rajiv Yuva Vikasam scheme to promote self-employment? This is Telangana. Delhi police has started a squad by which name to prevent molestation? Shistachar. ISRO Chairman V. Narayana inaugurated the Advanced Thermal Science Research Center at which IIT? So IIT Madras. Next is, who has been appointed as a brand ambassador of the Skechers? Jasprit Bumrah. Which Bollywood actor has been named Fit India icon by the Union Sports Ministry? Mansukh Mandviya, Ayushman Khurrana. Who had taken over as the CMD of Hindustan Petroleum Corporation? This is Vikas Kaushal. Which day celebrated on 16 March? National Vaccination Day. Which famous Odia poet and former bureaucrat died on March 16? This is Ramkant Rath. Which author book Leo, the Untold Story of Chennai Super Kings was launched by MS Dhoni? It is P.S. Raman. Which most beloved communal of Tamil industry passed away? Bindu
Hosh. Next is the government of India has officially approved the Chandrayaan 5 mission in collaboration with which country? So, in collaboration with Japanese Space Agency. Amit Shah inaugurated the newly built Lachit Borkuban Police Academy in Assam. Mumbai Indians defeated whom to win their second Women's Premier League title? So, Delhi Capital. The theme of the World Consumer Rights Day celebrated was a just transition to sustainable lifestyles. Which day was celebrated on March 14? That is Pi Day, International Day for Action for Rivers. These are 2 days which were celebrated. Which eminent Naga scientist and educationist died in Texas? Dr. Senkalong Yadin, who has been appointed by Delhi Capital as the new captain. Akshay Patel, who has been appointed as the chairman of Tata Communication. N. Ganpati Subramaniam, who took the charge as the 24th Prime Minister of Canada. Mark Carney. Which state government has created a controversy by releasing a rupee logo for the state budget? Tamil Nadu government. The Asian Development Bank has announced an initiative by what name to promote private sector development and ocean impact on Pacific region? So this is Frontier Seed. Okay, very very important. Next is, where did the Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh lay the foundation stone of the permanent campus of the North East Center for Technology Application and Research? This is in Shillong. Next is, who has been appointed as a brand ambassador of menstrual hygiene brand Narika? This is Saina Nehwal. Which country topped the medal tally at the World's Para Athletics Grand Prix? This is India. 45 golds, 40 silver and 49 bronze medals. United Nations Secretary General Antonio Guterres has announced which initiative to increase efficiency amid uncertainty? This is UN-80 initiative. Who has been approved by IRDAI to commence business at the first Indian private sector reinsurance company? This is ValueEthics. Next is, the London-based central bank has awarded Digital Transformation Award to RBI for which digital initiative? So the initiative is Prava and Sarthi. The day celebrated on March 12th is No Smoking Day. Next is, which former Indian cricketer died on March 12th? This is Syed Abid Ali. The sculpture of the Statue of Unity was honored with the Maharashtra Bhushan Award. The name is Ram Sutar, who won the 15th Hockey India Senior Women's National Championship. This is Hockey Jharkhand. Who topped the medal tally in the second phase of the 5th Khelo India Winter Games 2025 concluded in Jammu and Kashmir? This is the Indian Army. Who has been awarded the ICC Men's and Women's Player of the Month Award for the month of Feb? This is Shubman Gill and Alana King. Who has been elected as the president of the Automotive Tire Manufacturer Association? Arun Mame. Next is, the Finance Ministry has notified zero coupon bonds for which Maharatna company? The name of company is Power Finance Corporation. Fourth No Money for Terror Conference NMFT held in Munich. Under what name Google has launched a lightweight OpenAI for smartphone and laptop? This is Gemma 3. Which public sector undertaking has joined the central government mission Amrit Sarovar to tackle water crisis? So this is by Indian Railways. Next is, IRDAI has recognized which insurance company is domestically systematic important insurer? This is LIC, New India Insurance Assurance and GIC. Sahitya Academy organized its annual Sahitya Mahotsav in New Delhi. Which country has honored Prime Minister Narendra Modi with the highest Grand Commander of the Order of the Star and the Key of the Indian Ocean? This is Mauritius. In which country Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebration as a chief guest? This is Mauritius. The fourth bilateral exercise Bongo Sagar was held between Indian Navy and Bangladesh Navy in the Bay of Bengal. Which mission was launched to preserve manuscript? The 135th Foundation Day of the National Archives of India. This is Gyan Bharatam mission. The Balochistan Liberation Army hijacked which passenger train in Pakistan and took more than 150 people as hostage? This is Zafar Express. The Ministry of Education launched a scheme by what name to guide women writers? This is PM Yuva 3.0. Which women entrepreneurship focused microfinance company has won 2 gold medal at the Scotch Awards 2025? This is Muthoot Microfin. According to the CIPRI report, what is the position of India in the list of countries importing arms? Second rank.
Ukraine ranks the first. In which country India has emerged as a leading source of a country for foreign direct investment? This is Dubai. Which new space telescope has been launched by NASA to map the cosmic glow of universe? This is FAIR-X. With what theme was the 54th National Security Week celebrated? Safety, well-being and crucial for Viksit Bharat. The day celebrated on 10th March was International Women's Judge Day. Who was appointed as the new Chancellor of the NIT University located in Rajasthan? This is Amitabh Kant. Which Indian paramilitary force celebrated its foundation day on 10th March? This is CISF. Who has been appointed by the GRM overseas as the brand ambassador for its 10x classical Chakki Fresh Atta? This is Salman Khan. Not at all important. फालतू का ये नहीं आ सकता एग्जाम में. Next is the Assam government has announced to launch its own satellite with what name? This is AssamSat. Which airport has been recognized as the best airport in Asia Pacific region to serve 40 million passengers? So this is Delhi International Airport, that is IGI, Indira Gandhi International Airport. Which great classical singer died? Balakrishna Prasad. Where was the international conference cum exhibition GridCon 2025 organized? It was organized in Delhi. Rajnath Singh became the first Defence Minister of India to visit the Institute of Aerospace Medicine of the Indian Air Force. Where it is located? It is located in Bangalore. India defeated which country by 4 wickets in Dubai to win the ICC Champions Trophy for the third time? This is New Delhi. Next is the central government has declared which is national park of Madhya Pradesh as the 9th tiger reserve of the state and 58th tiger reserve for the country. This is Madhav National Park. Which film won the best film award at the 25th IIFA Awards? This is Lapata Ladies. International Women's Day was celebrated. The theme was Accelerate Action. According to the IQ Air data release, which is the most polluted city in the world? This is Burnihat, Meghalaya. Next is which are the best countries for working women in the glass ceiling index released by the Economist? Sweden. Which bank has launched a digital SME loan without any collateral for women entrepreneur called Asmita? This is SBI. This is important. This can be asked. Which day was celebrated on March 7 to raise awareness about the importance of generic medicine? This is Jan Aushadhi Divas. To whom has BCCI entrusted the representation of India in the board of directors of the Asian Cricket Council? Rajiv Shukla. Who became the first Indian woman to win the prestigious Ramsar Award in the Wetland Wise Use category? Dr. Jayashree Venkateswaran. The government of Karnataka has renamed Bangalore City University as what name? So Dr. Manmohan Singh Bangalore City University. India has signed an agreement with which country to purchase 1000 horsepower engines for T-72 tank battle? This is Russia. Project Hifazat has started by which state to strengthen the women and child safety? It is launched by Punjab. The third strongest insurance brand in the world as per the Brand Finance Insurance 100 report released is LIC. According to the OAG report released, who is the second largest airline in the terms of seat capacity after Qatar Airways? This is Indigo. Next is the World Sustainable Development Day, WSDS, was held in Delhi by what theme? So the theme was partnership for accelerating sustainable development and climate solutions. The day celebrated on 6 March is the National Dentist Day. Which legendary Indian footballer has returned to the national team after the age of 40 after retiring last year? This is Sunil Chhetri. According to the World Health Report, India is at what position in the global wealth ranking? 4th rank. The MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, has launched a scheme by what name to promote AI innovation in India? This is AI Kosh. UP government has launched an app by which name to improve the routine immunization of children? This is RISE, that is Rapid Immunization Skill Enhancement. The 3 most valuable brands in India in the U Government India Value Ranking 2025 is Amazon, Flipkart and Amul. Which day celebrated on March 5 was International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day. Which country's former number 1 tennis player Fred Stoll died? So he was from Australia. Which country's wicket-keeper batsman Mushfiqur Rahim retired from one-day cricket? This is Bangladesh. Which legendary Australian batsman retired from one-day cricket on 5th March? Steve Smith.
who has been awarded the ACM AM Turing Award, also known as Nobel Prize for Computing. It was given to Andrew Bartholin and Richard Sutton. Sorry. Who has been appointed as the first woman law secretary of India. This is Anuja Rathi Rana. Who has been appointed as RBI as its executive director, Dr. Ajit Ratnakar Joshi. Who was awarded the Lifetime Achievement Award in Education through Hospitality and Technology. This is Dr. Suborna Bose. Where did the President Draupadi Murmu inaugurate the second edition of Amrit Mahotsav of Diversity? This was inaugurated on Rashtrapati Bhavan. Under which project the central government has approved the construction of 2 ropeway from Sonprayag to Kedarnath and Govindnath to Hemkund Sahib. So this is Parvatmala project. DRDO has successfully conducted high altitude test indigenous integrated life support system for which light combat aircraft. So this was Tejas. China has announced what percent increase in its defense budget? 7.2%. Where did PM Modi inaugurate the world's largest wildlife rescue, rehabilitation and conservation center, Vantara? So it was inaugurated in Jamnagar. Which court of India ruled on March 4th that protection against disability-based discrimination is a fundamental right? So obviously Supreme Court ने decision दिया. The Trump administration has imposed US tariff on which 3 countries? Canada, Mexico and China. The theme of World Wildlife Day celebrated on March 3 was Wildlife Conservation Finance, Investing in People and Planet. World Hearing Day theme was Changing Mindset. Who has been appointed as the CEO of the Government e-Marketplace? Ajay Dhadu. Where did PM Modi lay the foundation stone of the National Referral Center for Wildlife? So this is in New Pipalia, Junagadh, Gujarat. Total budget of how many crore was presented in the Bihar Legislative Assembly? So the budget was 3,16,875 crores. A budget of 1,65,000 crores was presented in the Chhattisgarh Assembly. A key feature of the budget is an acronym of GATI, that is G for good governance, A for accelerating infrastructure, T for technology and I for industrial development. Where did India launch the multinational coalition of cities Circularity C3 in Jaipur? Who has been appointed as the brand ambassador of the American jeans brand Levi's? So this is Diljit Dosanjh. The central government has given the status of Navratna company to whom? So to Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC and Indian Railway Finance Corporation. The famous Indian artist known for his sculptures and modern art, he died. His name was Himmat Shah. Who won the title of Bengaluru Open ATP 125 Challenger Tournament? This is Brandon Holt. Vidarbha defeated which team to win the Ranji Trophy for the 3rd time? So Kerala. Which film won the Best Film Award at the 79th Oscar Award ceremony? This is Anora. Where was India's first Vishwa Shanti Kendra inaugurated under the guidance of Jain Acharya Lokesh to promote non-violence and universal brotherhood? This is Gurugram. Zero Discrimination Day celebrated by the theme of We Stand Together. Who was honored with the Icon of Excellence Award at the Forbes India Leadership Award? This is Jai Shah, ICC Chairman. On which language has been legally declared as official language of America for the first time after 248 years? This is English. Who has been elected as the President of the Bar Council of India for the 7th consecutive time? Manan Kumar Mishra. Who has taken over the Controller General of Defense Accounts? Mayank Sharma. Who took the charge as the 43rd President of Uruguay? This is Yamandu Orisis. Now we will do the one-liners for the months of Feb. Which day was celebrated on 28th Feb? तो National Space Day was celebrated. Now हमारा करंट अफेयर्स करने का तरीका बहुत यूनिक है. हम इसको स्टैटिक से भी रिलेट करते हैं. इसके अलावा हम अदर वन लाइनर्स भी यहाँ पे अदर करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th Feb? तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में रहे हैं. सबसे पहला तो आपको स्पेस डे के बारे में पता होना चाहिए जो सेलिब्रेट होता है 23rd अगस्त को. नाउ दिस वाज द डे इन विच चंद्रयान 3 टच द सरफेस ऑफ द सदर्न मून एंड जिस पॉइंट पे ये टच हुआ था दैट पॉइंट इज़ नोन एज शिव शक्ति पॉइंट. ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे
मेडिटेशन डे, ये भी इस साल फर्स्ट मेडिटेशन डे इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, ये 21 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट डे आपको इन्वायरमेंट डे के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 5 जून को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट नेवल एंटी मिसाइल NSMSR, तो ये ओडिशा में टेस्ट किया गया है। अब हम यहीं पे ओडिशा के रिगार्डिंग सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। ओडिशा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं, सबसे पहला तो सुभद्रा स्कीम है। सुभद्रा स्कीम इज़ द स्कीम फॉर वुमेन डेवलपमेंट। सेकेंड इज़ मनकीडिया कम्युनिटी, जिनको कि अभी कम्युनिटी राइट्स मिले हैं उड़ीसा में, तो ये मनकीडिया कम्युनिटी कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को ने उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, 6 विलेजेस को सुनामी रेडी विलेजेस डिक्लेयर किया है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उड़ीसा के, 6 विलेजेस हैं यहाँ पे उड़ीसा के। इसके अलावा उड़ीसा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने कि अनसीजनल रेन्स को नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं बहुत अलग अलग सोर्सेज से लेके आया हूँ। इससे होगा क्या कि बहुत एफिशिएंटली आपका एक ही साथ बहुत वाइडली ये वन लाइनर्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ओपन, तो ये ओपन हुआ है दार्जिलिंग में। नाउ जस्ट फॉर द सेक आपको पता होना चाहिए, दार्जिलिंग इज़ इन वेस्ट बंगाल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग में एक टॉय ट्रेन चलती है, ये आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा दार्जिलिंग है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तीस्ता। अब जो ये तीस्ता रिवर है ये निकलती है हमारे सिक्किम से, एंड आपको पता होना चाहिए कि तीस्ता नदी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। नाउ ब्रह्मपुत्रा से आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में जाती है तो द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश इज़ जमुना। ठीक है, एंड जब ये ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी के साथ बांग्लादेश में मिल जाती है देन इट इज़ नोन एज पद्मा। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश। गंगा का नाम क्या है बांग्लादेश में, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ आपका मैं स्टैटिक भी रिवाइज कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिमेन्स ऑफ सेंचुरीज ओल्ड आत्म पूजा रिचुअल्स हैव बीन फाउंड इन बेलूर विलेज ऑफ विच स्टेट। सो आत्म पूजा के रिचुअल्स मिले हैं केरला में। अब देख लेते हैं हम केरला के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट सीनियर सिटीज़न कमीशन जो है वो केरला ने लॉन्च किया है रिसेंटली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एन प्राउड इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय केरला। नाउ दिस इनिशिएटिव एम्स कि एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन का जो है यूज़ वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट केरला is about dunlin. Dunlin is a type of bird, ठीक है, which has been seen in Kerala। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डनलिन क्या है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, ये अभी केरला में स्पॉट हुई है। इसके अलावा आश्रय इज़ अ न्यू स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन केरला। नाउ आश्रय किस लिए है, इट इज़ न्यू फार्मर सर्विस सेंटर। ठीक है, फार्मर्स का सर्विस सेंटर, न्यू फार्मर्स सर्विस, फार्मर्स की सर्विस के लिए सेंटर इज़ आश्रय दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। इसके अलावा अगर मैं जोग्राफिकली बात करूं केरला के कुछ रिवर्स की, तो पेरियार रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। इसके अलावा मुल्लई पेरियार, ठीक है,
ये भी एक केरला की रिवर है। इसके अलावा कार्डमम हिल्स इज़ इन केरला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट पुलिस हैज़ डन द फर्स्ट EFIR थ्रू ईमेल ऑन 28 Feb 2025। तो फर्स्ट EFIR कौन से स्टेट ने की है? सॉरी, स्टेट यहाँ पे नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। ये यहाँ पे टेक्निकलिटी में नहीं बताते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट नहीं होगा यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर मैं जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सी कंपनी ने शुरू किया है? तो ऊबर ने शुरू किया है, बाय द नेम ऊबर शिकारा। शिकारा राइड इज़ अ फेमस राइड इन श्रीनगर, एंड श्रीनगर में एक लेक है जहाँ पे ये शिकारा राइड होती है। इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है डल लेक। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि डल लेक इज़ अ नेचुरल लेक, जिसमें कि जो वाटर है डायरेक्टली आता है फ्रॉम अ रिवर। कौन सी रिवर है? तो झेलम रिवर है, जहाँ पे जिससे डायरेक्टली पानी जाता है डल लेक को। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नाउ इस विंटर गेम्स का मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट का आपको नाम याद रखना है, विच इज़ शान। अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो शान। ठीक है, शान हमारा मैस्कॉट है ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन सर्वनाश कंडक्ट किया गया है, एंड दिस हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। किसके अगेंस्ट? तो टेररिस्ट को बॉर्डर के उस साइड या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के साइड उनको एग्ज़िट कराने के लिए ये ऑपरेशन सर्वनाश ये शुरू किया गया है। ठीक है, सॉरी, सर्वनाश नहीं है, ऑपरेशन सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है यहाँ पे चेनाब रिवर के ऊपर में इनॉग्रेट किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। जम्मू एंड कश्मीर इम्पॉर्टेंट है इस साल, आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A के बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ मेड तेलुगु कंपलसरी इन स्कूल्स। तो तेलंगाना ने तेलुगु को कंपलसरी किया है। नाउ तेलंगाना से रिलेटेड अगर मैं आपको करंट अफेयर बताऊं तो तेलंगाना में एक रिज़र्व है जिसका नाम है गुंडारम रिज़र्व। अब इस गुंडारम रिज़र्व में हमें सतवाहना डायनेस्टी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो आपको ये रिज़र्व याद रखना है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ द मोस्ट रीसेंट स्टेट और द मोस्ट मॉडर्न स्टेट टू बी फॉर्म। 2014 में तेलंगाना वॉज फॉर्म, एंड प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो 28 स्टेट्स इंडिया में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वेयर वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 हेल्ड। तो ये हेल्ड हुई थी गुजरात में। गुजरात से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसको कि आप नोट कर लेंगे, या अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि अगर आपको एनोटेड जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, अगर वो चाहिए आपको तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, नाउ गुजरात से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले तो गुनेरी एक मैंग्रोव साइट है। गुनेरी एक मैंग्रोव साइट है इन गुजरात, जिसको कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है गुजरात की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गुजरात की टॉप पोजीशन है इन सोलर इंस्टॉलेशन। सोलर इंस्टॉलेशन में टॉप पोजीशन है हमारे गुजरात की। इसके अलावा
फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया, ये गुजरात में हमारे बना है, गुजरात के सूरत में। दिस इज़ ऑपरेशनल राइट नाउ। इसके अलावा गुजरात में एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है जिसे विच इज़ नोन एज घड़चोला। घड़चोला को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक लूना क्रेटर है गुजरात में विच इज़ बिलीव दैट इट इज़ फॉर्म बाय मीटियोराइट इम्पैक्ट। मीटियोराइट टकराने की वजह से दिस लूना क्रेटर हैज़ बीन फॉर्म्ड। ठीक है, ये भी हमारे गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात में है। इसके अलावा जो सर क्रीक है, दिस इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो मैंग्रोव्स की बॉर्डर लगती है हमारे कच्छ के साइड से, दिस इज़ नोन एज सर क्रीक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच स्टेट विल द प्रगति पथ स्कीम बी लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द रूरल रोड नेटवर्क। तो ये प्रगति पथ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नाउ कर्नाटका इज़ फेमस फॉर गोल्ड, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटका से एक रिवर, इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन रिवर राइज करती है जिसका कि नाम है कावेरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका इज़ फेमस फॉर गोल्ड। गोल्ड की कौन सी जगह है? बहुत फेमस कोलार माइंस है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। दिस इज़ देयर इन कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। तो समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज विच सिटी हैज़ बिकम द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th टाइम। ये इंदौर को मिला है। इसके अलावा अगर मुझे अभी ध्यान में आ रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अभी न्यूज़ में रहा है। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये नीति आयोग पब्लिश करता है। यहाँ पे फर्स्ट रैंक की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड एंड केरला को फर्स्ट रैंक मिला है इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट रैंक तो ये मिला है बिहार को। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग के चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है हु इज़ दी वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। चलो ये मैं बता ही देता हूँ, सुमन के बैरी इज़ दी वाइस चेयरमैन। आपको मुझे बताना है हु इज़ दी सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखो आपका आंसर देना भी ज़रूरी है, ऐसे क्या होगा कि एक नेचुरल वे से चीज़ें आपको याद रहनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन 26 Feb, हु टॉप्स द ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर रेट। तो ये सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड हमारा न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। एक तसो मोरीरी ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही हैं। इनसे रिलेटेड एक मेंबर हैं इनके पार्लियामेंट में, उन्होंने एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया था, ट्रेडिशनल एक्ट परफॉर्म किया था बिफोर रिजेक्टिंग अ बिल इन द न्यूजीलैंड पार्लियामेंट। ठीक है, सो वो उससे बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में आया था। तो ये तसो मोरीरी ट्राइब्स विच आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, ये हमारे न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये सागर कवच एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्ट बंगाल। अब देख लेते हैं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम, ये एक हाउसिंग स्कीम है वेस्ट बंगाल की टू गिव अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पीपल इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया है इन द यूनेस्को हेरिटेज टूरिज्म। यूनेस्को हेरिटेज टूरिज्म में वेस्ट बंगाल को ये ऐड किया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो माया सुल्तानगंज पोर्ट ये है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बीच। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, with which state government has the Indian Solar Energy Corporation Limited signed an agreement for a solar project। तो ये मध्य प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मैं बता दूं, दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको रिमेनिंग 11 मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं तो उसका लिंक या तो कार्ड्स के रूप में आपको ऊपर वीडियो में दिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। मार्च मंथ का कंप्लीट करके आप वो 2025 फेब वाली वीडियो देख सकते हैं।
आपको बहुत हेल्प होगी एंड आपका पूरा 1 ईयर का वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नौ मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग अगर मैं आपको और करंट अफेयर्स बताऊं तो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा अ पार्थ इनिशिएटिव इज ऑल्सो इन न्यूज़। पार्थ इनिशिएटिव, इसमें क्या है इनिशिएटिव में कि यूथ है मध्य प्रदेश का, इनको इनकरेज किया जाएगा डिफेंस में और लॉ परस्यू करने में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को डेजिग्नेट किया है ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द ईयर 2025। किसने? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। ठीक है। इसके अलावा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज सेवेंथ है या 8th है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक लोकपथ मोबाइल ऐप है विच इज़ रिगार्डिंग कंप्लेंट्स विच आर रिलेटेड टू रोड्स। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग आपको ये सारी करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नाउ अब हम कंप्लीट करेंगे, अब हम आगे के करंट अफेयर्स को देखते हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड बाथोइज्म इज एन अल्टरनेटिव टू रिलीजन इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये असम ने बाथोइज्म को रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा असम इज़ वेरी फेमस फॉर कामाख्या टेम्पल। इसके अलावा असम से रिलेटेड है अहोम डायनेस्टी एंड अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है चरादेव मैदान। Now these are the burial site which has been designated as UNESCO World Heritage Site। ठीक है। इसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। नाउ अहोम डायनेस्टी इस्टेब्लिश किसने की थी? So it was established by सुखाफा who was the founder of अहोम डायनेस्टी। इसके अलावा द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ द अहोम डायनेस्टी वॉज लचित बोरफुकन। ठीक है। एंड एक और बैटल रिलेटेड है अहोम डायनेस्टी से, दैट इज बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट। ठीक है। जिसमें कि द अहोम सक्सेसफुली डिफीटेड द आर्मीज ऑफ जहांगीर। यस, नॉट जहांगीर, औरंगजेब की आर्मी को डिफीट किया था। ठीक है। सॉरी, जहांगीर की आर्मी थी, औरंगजेब नहीं था। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस। कर्नाटका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज विच पासपोर्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये मेक्सिको का पासपोर्ट है। मेक्सिको के रिगार्डिंग 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको इज़ क्लाउडिया शेनबाउम। ठीक है। इसके अलावा मेक्सिको हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, दैट आर टू बी इलेक्टेड थ्रू वोट्स। वोटिंग के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाएगा। तो मेक्सिको से रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेक्सिको में एक ब्लू होल मिला है विच इज़ ऑल्सो नोन एज तामजा ब्लू होल। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इन मेक्सिको। नो विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 25 फेब एज द मिलिट्री मार्टिडम डे। तो बांग्लादेश के करंट PM मोहम्मद यूनिस हैं and he is also a winner of Nobel Peace Prize। अब इनको नोबेल किस चीज़ में मिला था? फॉर द आइडिया ऑफ ग्रामीण बैंक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियन स्टेट्स जो बॉर्डर करते हैं बांग्लादेश को, वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा and Mizoram। These are the states that borders Bangladesh। Next है which state government has launched the witness security scheme। So this witness protection scheme has been launched by हरियाणा। हरियाणा से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट अफेयर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हरियाणा में अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थिंग, हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट to procure all the crops at MSP। ठीक है।
और हरियाणा के करेंटली सीएम कौन हैं? वो हैं नायाब सिंह सैनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड? सो दिस इज़ द मोपा एयरपोर्ट ऑफ गोवा। नाउ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग एयरपोर्ट ये भी है कि विंग्स इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 2024। ये ऑर्गेनाइज हुआ था हैदराबाद में। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट्स का अवार्ड मिला था। द फर्स्ट वन इज़ केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर एंड सेकेंड वन वॉज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, IGI एयरपोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेयर हैज़ द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पीस कीपर्स बीन ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज हुई है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, G20 की समिट 2023 की न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसका मोटो क्या था? इसका मोटो था वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है। नाउ अचीव क्या किया था इंडिया ने G20 समिट में? अफ्रीकन यूनियन बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द G20, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे रिसेंटली रेखा गुप्ता हैज़ बिकम द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अगर मैं फर्स्ट CM की बात करूं तो वो सुषमा स्वराज, सेकेंड वन वॉज शीला दीक्षित, थर्ड वन वॉज आतिशी मार्लेना एंड फोर्थ वन रेखा गुप्ता इज़ द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इन विच स्टेट हैज़ द झूमर बिनादिनी प्रोग्राम बीन ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज हुआ है आसाम में। हु हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 14,000 रन्स इन वनडे क्रिकेट? विराट कोहली। फ्रॉम वेयर हैज़ द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM किसान सम्मान निधि बीन रिलीज? ये रिलीज़ हुई है बिहार में। अब बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर मैं बताऊं तो रिसेंटली बिहार में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ द ईयर 2025 ये भी हमारे बिहार में ऑर्गेनाइज होने वाला है। बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट बिहटा में ओपन हो रहा है विच इज़ नियर पटना। इसके अलावा सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार इज़ गोइंग टू ओपन इन कैमूर, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हाँ, सेकेंड टाइगर रिजर्व कैमूर में है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब जो भी बिहार से वीडियो देख रहे हैं आप मुझे बताओ कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बिहार हैज़ बिन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ये भी हमारे बिहार में है। एंड इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट बिहार तो वुमेन एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ये भी बिहार में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था एंड सिल्वर मेडल किसको मिला था? ये मिला था चाइना को। इसका मतलब इंडिया डिफीटेड चाइना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रेजिंग द मोस्ट फंड थ्रू IPO? ये हमारा इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज़ फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन? IIT मद्रास। अब IIT से रिलेटेड यहाँ पे IIT बॉम्बे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IIT बॉम्बे ने डेवलप की है एक न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ CAR-T सेल थेरेपी। नाउ ये CAR-T सेल थेरेपी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए है बिकॉज दिस इज़ दैन इंडिजीनियस थेरेपी, मतलब इंडिया में बनी हुई थेरेपी टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है IIT बॉम्बे प्लस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इंडिया विल ट्रेन 1500 सिविल ऑफिसर्स ऑफ विच कंट्री इन नेक्स्ट 5 years? तो ये है श्रीलंका। बाई 2027 इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई व्हाट परसेंटेज? 6.3%। बाई विच कंट्री माउंट
डुकोनो वॉल्केनो इरप्टेड, ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट ईबू वॉल्केनो भी है, माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में है। नाउ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स की अगर मैं बात करूं तो माउंट फूजी या माउंट फूजियामा, दिस इज़ इन जापान। इफ़ आई टॉक अबाउट माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो है ये है तंजानिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू बैट कोरोना वायरस विच हैज़ नेम्ड HKU5-CoV-2, तो ये चाइना में मिला है। इन विच स्टेट द फर्स्ट ग्रीन बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, तो राजस्थान is the first state in which a green budget has been presented. Rajasthan is also the state Rajasthan is also the first state to provide reservation to अग्निवीर्स, ठीक है। अग्निवीर्स को रिजर्वेशन मिला है राजस्थान में इन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज वेल एज द राजस्थान पुलिस, ठीक है। Which app has been launched by RBI to improve the access to economic and financial data? So the name of the app is RBI Data. Also RBI has joined Project Nexus. Project Nexus is related to intercontinental पेमेंट सिस्टम, ये पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि डिफरेंट कंट्री के पेमेंट मैकेनिज्म को लिंक करने की बात कही गई है। नेक्स्ट इज हुज बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज वॉज रिलीज्ड, तो ये नमिता गोखले की बुक है। हु वॉन द 14th एशियन चैम्पियनशिप टाइटल, तो इट हैज़ बीन वॉन बाय पंकज आडवाणी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर मैक्सिमम नंबर ऑफ वल्चर फाउंड, ये हमारा मध्य प्रदेश है। नाउ वल्चर से मैं बात करूं अगर, तो वल्चर्स के लिए एक प्रोटेक्शन सेंटर फर्स्ट ऑफ इस काइंड हैज़ बीन ओपन। ये कहाँ ओपन किया गया है, ये ओपन किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगर इसके मैं IUCN स्टेटस की बात करूं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड ये राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में ये बर्ड मिलती है, ठीक है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 ODI रन्स, दिस इज़ रोहित शर्मा। Who has been made the principal secretary to Prime Minister Modi? Shaktikant Das. Next is, who is on the top in the list of the world's richest women? This is Alice Walton. Where has the 9th Asia Economic Dialogue been organized? So this has been organized in Pune. Who has become the second country to issue digital pilot license after China? So this is India. Who has become the director of the American Investigation Agency? This is काश पटेल। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इट इज़ JD वैंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, who has been chosen as the Woman of the Year 2025 by Times Magazine? This is Purnima Devi Burman. The forest project of which state has been awarded the Scotch Award? So this is the state of Nagaland. इसके अलावा अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू नागालैंड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Who has topped the bird count for the 3rd consecutive year? This is West Bengal. In which union territory organ donors have been given the state honors for their life-saving contribution? This is Puducherry. Now, who has won the Memory League World Championship 2025? This is Vishwa Rajkumar. India and which country have signed an MOU to strengthen cooperation in lithium exploration and mining? This is Argentina. Who has become the fastest bowler to take 200 wickets for India? This is Mohammad Shami. Next देखते हैं, which country has joined OPEC plus? Brazil. Now if I talk about OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है ये वियना में है, ठीक है, एंड वियना इज़ इन ऑस्ट्रिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है बट ऑस्ट्रिया खुद एक मेंबर नहीं है ओपेक का, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए।
Which state has celebrated its 38th Foundation Day? So this is Arunachal Pradesh. Who has launched one man office online service? This is LIC. Who has taken charge as the Election Commission of India? This is Vivek Joshi. Who has launched the AI powered platform Nugget for business? This is Zomato. Now, which state assembly will be the first assembly in India to be equipped with the translator facilities? ये है हमारे उत्तर प्रदेश. ना उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स मैं बता देता हूँ. ठीक है, सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश हैज़ कम अप विथ एन एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनिशिएटिव माँ की रसोई इनिशिएटिव, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश का है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. जेम पोर्टल को फुल्ली एक्टिवेट इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट उत्तर प्रदेश बना है. इसके अलावा अ बायोप्लास्टिक पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इन द लाइन इज़, मैंने आपको बताया था, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है रिसेंटली. ठीक है. Who is at the top of the ICC बैटिंग रैंकिंग्स? दिस इज शुभमन गिल. इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल इनॉग्रेटेड द इनलैंड वाटरवे टर्मिनल ऑन विच रिवर? दिस इज ब्रह्मपुत्रा. अब इनलैंड या नेशनल वाटरवेज की बात करूं तो NH2 हमारा ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है. अगर मैं बात करूं NH1 तो दिस इज़ रिलेटेड टू द रिवर गंगा. अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवे 3 या नेशनल वाटरवेज 3 की, दिस इज़ रिलेटेड टू केरला. एंड अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवेज 4 की, दिस इज़ रिलेटेड टू गोदावरी एंड कृष्णा रिवर. ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए. इन चारों के चारों का नाम आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़, वेयर वॉज द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? दिस इज़ अजमेर. वेयर डिड द गूगल ओपन इट्स लार्जेस्ट ऑफिस कैंपस अनंत इन इंडिया? ये बेंगलोर में लॉन्च हुआ. वेयर डिड द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप स्टार्ट? ये स्टार्ट हुई है चेन्नई में. नाउ विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट GCC पॉलिसी? दिस पॉलिसी हैज़ बिन रिलीज बाय मध्य प्रदेश. अभी मैंने आपको ये बताया भी था. GCC का क्या मतलब है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. ठीक है. नेक्स्ट इज, विच फिल्म हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एज द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म? दिस इज, द नेम इज कॉन्क्लेव. इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? दिस इज कतर. देयर वॉज द स्टैचू ऑफ फेमस तमिल पोएट एंड फिलोसफर थिरुवल्लुर. कहाँ पे इनके स्टैचू को अनवील किया गया है? सो दिस इज इन फिलीपींस. नेक्स्ट इज, where has the conference on border coordination between India and Bangladesh started? So this started in New Delhi. Which ministry has organized the Prime Minister Yoga Award? तो ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने. Which state has approved the Industrial Park and Green Energy Policy 2025? ये है द स्टेट ऑफ असम. Who topped the Local Governance Performance Index? कर्नाटका has topped this. इसके अलावा अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, दैट इज़ SDG इंडेक्स, फर्स्ट रैंक मिला है उत्तराखंड को एंड केरला को. इफ़ आई टॉक अबाउट द लोएस्ट रैंक, दिस हैज़ बीन गिवन टू बिहार. ठीक है. नाउ विच कंट्रीज अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी हैज़ बिन कम एज एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? ये कतर के हैं. Next is, joint military exercise Dharma Guardian was conducted between India and which country? This is between India and Japan. If I talk about different exercises, युद्ध अभ्यास, ये एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नोमैडिक एलिफेंट है. नोमैडिक एलिफेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. इसके बाद दस्तलिक एक्सरसाइज है इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान. ठीक है. काजिंड एक्सरसाइज है कज़ाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में. तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपको पता होनी चाहिए. ठीक है.
विच कंट्री विल बाई $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? ये फिलीपींस बाई करने वाला है एंड रिसेंटली फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बाई किए हैं। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई है? ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है मस्कट ओमान में। नेक्स्ट है हमारा who has been appointed as the next chief election commissioner of India? The name is Ganesh Kumar. Also आपको पता होना चाहिए कि the election commission is a constitutional body under article 324 of the constitution. The election commissioner and the chief election commissioner are appointed by the president. ठीक है, this you should also know. Next is who became the first person to complete a half marathon in less than 57 minutes? The name is Jacob Kiplimo. In which union territory has the Ayushman Bharat Vay Vandana Yojana been launched? So this has been launched in the union territory of Puducherry. Who has won the Forward Faster Sustainability Award of 2025? So NTPC. In which state is the Annaimudi Shola National Park which was in news? So this is in the state of Kerala. इसके अलावा सम ऑफ दी अदर नेशनल पार्क्स या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो है सिमलीपाल, दिस इज़ इन उड़ीसा। इसके अलावा साइलेंट वैली, ठीक है, दिस इज़ इन केरला। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पार्क्स हैं, नेशनल पार्क हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस स्पेस चिप आइरिस? तो दिस इज IIT मद्रास। हु विल रिप्लेस थम्स अप एज द को होस्ट ऑफ IPL 2025? दिस इज कैंपा कोला। नेपाल एंड विच कंट्री हैव साइंड द MOU फॉर हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट? सो दिस इज फ्रांस। Which Foundation Day of Delhi Police was celebrated? 78th Foundation Day was celebrated. Also, you should know that Delhi Police comes under the Ministry of Home Affairs because it is a paramilitary force. Now, some of the paramilitary forces in India is BSF, CRPF. These are some of the paramilitary forces. Who is at the top of the list of the highest earning athletes of 2025? Cristiano Ronaldo. In which state of Northeast India president rule has been imposed? So it is imposed in Manipur. Which state government has announced to give 10,000 per month to the victims of acid attack? This is Punjab. According to a report, by what percent will India's natural gas demand increase by 2030? तो ये 60% increase हो सकती है। Which IIT has developed solar dehydration technology for farmers? This is IIT Kanpur. इसके अलावा एक और IIT is in news. IIT Ropar is in news because it has discovered a mineral known as tantalum from the beds of Satluj River. ठीक है। Who led the Indian delegation at the 4th No Money for Terror conference in Munich, Germany? Nityanand Rai. Which state government has given permission to kill Neel Gai? So हरियाणा has given the permission. Also हरियाणा से related मैंने आपको एक fact बताया था, हरियाणा has become the first state to accrue all the 22 crops at MSP. ठीक है। Which IIT has developed the conductive fabric that converts electricity and sunlight into heat? This is IIT Guwahati. Where was Adi Mahotsav 2025 organized? So New Delhi. Who received the most excellent order of the British Empire? N.R. Narayan Murthy. Who topped the Bloomberg list of Asia's richest family? This is Mukesh Ambani family. Who hosted India's regional dialogue on social justice? First regional dialogue on social justice. This is India. Who has topped the medal tally of the 38 national games held? So services ने टॉप किया है। If I talk about the 37th national games,
तो महाराष्ट्र वॉज फर्स्ट एंड सेकेंड वॉज सर्विसेज, ठीक है। एंड 37 नेशनल गेम्स वेयर हेल्ड एट गोवा। Tulsi Gabbard has been appointed as the intelligence chief of which country? America. Who is top in the World Bank Logistic Performance Index? तो सिंगापुर ने टॉप किया है। नेक्स्ट इज which new digital platform has SEBI launched? तो the name is Mitra. Sohail Akhtar became the first female cricketer of which country to be banned on corruption charges? So Bangladesh. Which Indian has been appointed as the event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? So the name is Shikhar Dhawan. In which country the oldest Jurassic bird fossil has been found? So China. Next is Har Khet Swasth Khet campaign has been launched to promote the soil health. हरियाणा में लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम। Who has been selected as the ICC Player of the Month for January? This is Beth Mooney and Jomel Wadikan. Who is at the top in the Corruption Perception Index of 2024? So डेनमार्क का जो है वो फर्स्ट रैंक है and India's rank is 96th. Who will be honored with the IFA Outstanding Title Award? Rakesh Roshan. Who will host the 39th National Games? So it will be hosted in Meghalaya. Lok Sabha Speaker Om Birla has announced the expansion of translation services in Parliament in how many languages? So 6 languages का provision है. Where was Asia's first life-size animatronic elephant Ellie unveiled? So it has been unveiled in Bengaluru. Also आपको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी बोर्ड विच इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग अभी एक और न्यूज़ है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश। सो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है दिस हैज़ बीन गिवन इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। And Telangana was formed in the year 2014 by separation from Andhra Pradesh, ठीक है। Who won the Chennai Open 2025 tennis men's single title? So this is Kian Jacket. Where will the Olympic Sea Sports Game 2027 held? It will be held in Riyadh, Saudi Arabia. Researchers from which country has discovered brain activity related to autism? Israel. Who has been awarded the Padma Shri? Dr. Madhugula Nagfani. Where was India's Energy Week 2025 organized from February? So, India. What has the HAL renamed its training aircraft HJT-36? Yashas name has been given to it. By when India has set a target to become lymphatic filariasis free? So 2027 का टारगेट है। इसके अलावा टीबी का टारगेट है 2025 का। इसके अलावा सिकल सेल अनीमिया के रिगार्डिंग जो टारगेट है दैट हैज़ बिन गिवन इन द ईयर 2047, ठीक है। एक और आपको फैक्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, रिसेंटली अ बैक्टीरियल डिसीज़ को कंसिडर किया गया है इंडिया में कि दिस इंडिया इज़ ट्रैकोमा फ्री। सो ट्रैकोमा इज़ एन बैक्टीरियल disease and it is related to the bacterial infection of eyes, ठीक है। so this India has been declared as trachoma free. मलेरिया की मैं बात करूं तो इजिप्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री, ठीक है। so ये आपको ध्यान रखना है। एंड जॉर्डन रिसेंटली हैज़ बिन डिक्लेयर्ड लेप्रोसी फ्री, ठीक है। so ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वेयर हैज़ द थाई पूसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है ये। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स? विंग्ड रेडर इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। हु हैज़ बिकम द सेकेंड हाइएस्ट सिक्सर हिटर इन वनडे क्रिकेट? दिस इज़ रोहित शर्मा। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द ऑपरेशन डेविल हंट? बांग्लादेश। सो दिस ऑपरेशन डेविल हंट इज़ रिगार्डिंग फाइंडिंग और रिट्रीविंग बैक द president who just ran away from the country, Sheikh Hasina,
को ढूंढने के लिए एंड टू ब्रिंग हर बैक टू बांग्लादेश ये ऑपरेशन डेविल हंट हैज़ बीन कंडक्टेड. इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन विथ विच कंट्री? सो दिस कंट्री कौन सी है ये है इजिप्ट. एंड इजिप्ट को भी मैंने बताया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO. Which bank has launched the digital avatar of Amitabh Bachchan? So this is the IDFC Bank. विकसित गांव स्कीम ओडिशा में लॉन्च हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. Now, which state government has launched this सुजल project for विकसित ग्राम योजना भी मैंने बताया आपको, तो ये ओडिशा है इसका, ये आप ध्यान रखेंगे. इसके अलावा Mountaineer Nisha Yadav of which state has conquered the peak of Mount Kilimanjaro of the African continent? तो ये Mountaineer Nisha Yadav छत्तीसगढ़ की हैं. एंड दिस Mount Kilimanjaro is in अफ्रीकन कंट्री ऑफ तंजानिया. ठीक है, ये तंजानिया का है, सो आप इसको भी ध्यान रखिएगा. इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मेनी $1 million टू द यूनाइटेड नेशन बजट फॉर 2025? सो 37.64 जो है $1 million का बजट है. Tarundeep Rai won the medal in men's recurve archery in the 38th national games. So अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है. Where has the 2025 freestyle chess Grand Slam Championship competition started? It started in Germany. The government has allowed trading of how many new agricultural commodities on ENAM? So the number is 10. Also, I would like to tell you that in the GEM, that is government marketplace, Uttar Pradesh has acquired the topmost position in the GEM implementation. Now next is the Chief Minister of which state has launched Kaushal Uday Tongai training program? So the answer is Tripura. Which state has launched the Sujala project? So Karnataka. Scientists of which country have created a kangaroo embryo for the first time using IVF technology? Correct answer is Australia. Which permanent member of Sri Ram Janmabhoomi died? Kameshwar Chaupal. The book Hearts and Heroes Lives That Shaped Us, written by whom, was released? Correct answer is Kulbhushan Kumar. Where did the BIMSTEC Youth Summit 2025 held? So it was held at Gandhinagar. Also, if I talk about the BRICS Summit, so the BRICS Summit for the year 2025 was done in Russia, maybe in Russia, Kazan. If I talk about the SCO Summit took place in Kazakhstan, Astana. Now, Quad Summit of 2024, it took place in Washington, that is USA. If I talk about Quad Summit of 2025, it is going to take place in India. Now, the next in the line is ASEAN Summit. ASEAN Summit took place in Laos. Okay, so these are some of the important summits of this year which you have to remember. Now, where was the 75th anniversary of National Sample Survey celebrated? It was celebrated on 7th Feb. Which state government has approved the new exercise policy for 2025-26? So Uttar Pradesh. By how much percent has RBI cut the repo rate? The RBI has cut repo rate by 0.25%. By how much percent has the maternal mortality rate decreased in India? So it has decreased by 83%. FIFA has suspended the Football Federation of which country? So Pakistan. Who has won the gold medal in men's 50-meter rifle 3 position event in 38th national games? Correct answer is Neeraj Kumar. Now, who has changed its name to Eternal? So Zomato has changed its name to Eternal. Next is, after America, who has now decided to exit WHO? So Argentina has exited WHO. Also, Argentina at earlier stage signed up for BRICS membership, but later Argentina withdrew. Where has the 9th Asian Winter Games held? So it has been held in China. Which men's kabaddi team has won the title in the 38th national games? So Uttar Pradesh has won the title.
Now, the Indian Army has renamed Fort Williams, the headquarters of the Eastern Command, to what? So, it has been changed to Vijayadurg. Who has become the first black woman to win the title of Mrs. World 2025? The Sego Gelai. Which country has banned the transgender athletes in women's sports? So, America has banned it. Who has been awarded the Sahitya Academy Award for the year 2024 in Dogri? Correct answer is Chaman Arora. Now, next is on Feb 5, 2025, the Government of India has launched which new visa category for foreign citizens? So, the name is Ayush Visa. Which IIT has launched the first cancer genome atlas? So, IIT Madras has launched it. Where has the NIELIT Center of Excellence for Chip Design been inaugurated? So, it has been inaugurated in Noida. Where will India's first AI university be established? It is going to be established in Maharashtra. Who is at the top of ICC T20 batting rankings? Travis Head. Which country has exited the United Nations Human Council UNHRC? So America has exited. The government of which country has decided to reduce the weekly working hours of employee? So Spain has decided. Which country has launched the Michibiki satellite? So Japan has launched this Michibiki satellite. Now if I talk about the space mission, so Europa space mission, Europa Clipper, is a mission to Jupiter and it has been launched by European Space Agency. Next in the line is Artemis mission. So Artemis mission is a mission of NASA. Next in the line comes the Chandrayaan mission. Chandrayaan, as you all know, Chandrayaan 3 was a mission of ISRO. इसके अलावा SLIM mission is a mission of ISRO and Japanese Space Agency. In addition to it, if I talk about the space station, India has targeted to establish a space station, operational space station by 2035. And the astronauts that are going to the International Space Station are to be trained by the France. इसके अलावा the space station, the name of the space station that is established by China is Tiangong. ठीक है. So this is the all important information that you need to know. इसके अलावा Aditya L1 mission is a mission of ISRO and it is related to sun. Now next है FDI insurance in which sector has been increased from 74% to 100%. So insurance sector में FDI has been increased from 74 to 100%. WhatsApp based One Mitra will provide 161 government service in which state? So it will provide government services in Andhra Pradesh. Now which country celebrated its national day on Feb 4? So Sri Lanka celebrated it. Who will become the first country to declare AI tools a crime? So Britain has declared. Which country unveiled two missiles, Etemad and Gadar 380? So Iran has unveiled these two missiles. Who won the Grammy Awards in the Best New Age Ambient or Chat Album category and the 67th Grammy Awards? So Chandrika Tandon has announced this. Now, exercise equivalent between Indian Army and the National Defence Force of which country started on 3rd Feb? So correct answer is Maldives. Who won the prestigious Tata Steel Masters 2025 title on Feb 3? So R. Pragnananda won this. Now, if I talk about the FIDE chess champion for the year 2024, so D. Gukesh of India has successfully defeated Din Lering of China to become the chess master, chess champion. इसके अलावा if I talk about the FIDE championship, so both men and the women chess team of India won the gold medal. ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए. Who won the ICC Under-19 Women's T20 World Cup of 2025? So India won this. Also the men's Indian team also won the T20 2024 World Cup, which was held in USA and West Indies.
इसके अलावा 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी विच वॉज होस्टेड बाय पाकिस्तान वॉज ऑल्सो वॉन बाय इंडिया, ठीक है, बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स। Which country has become the first country in Africa to eliminate onchocerciasis? So Nigeria has become the first country in Africa. In which country the mountain is now recognized as a person by law? So in New Zealand this mountain has been recognized by as a person by law. Which state has denotified 3 reserved forests for land rights? So this is Assam. Which app has been launched by Indian Railways for seamless travel? So Swarail is the app that is launched by the Indian Railways. Also आपको पता होना चाहिए IRCTC has been designated as a महारत्न कंपनी। IRCTC एंड IRFC दोनों के दोनों को महारत्न स्टेटस दिया गया है। Now who has renamed the Gulf of Mexico in America? So the Google Maps has replaced this. Which Indian Air Force pilot was honored for anti-piracy mission in the Arabian Sea? तो अक्षय सक्सेना। नाउ यहाँ पे मैं कुछ स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें कि गोपी थोथाकुडा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, ठीक है। नाउ ऑन द फ्लाइट ब्लू ओरिजिन गोपी थोथाकुडा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज गुनेरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? सो गुजरात की ये साइट डिक्लेयर हुई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज़ प्लान टू डिक्लेयर बेगिंग अ क्राइम? सो पाकिस्तान is planning to declare begging as a crime. इसके अलावा इंदौर is a city in मध्य प्रदेश in which also begging has been declared as a crime, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इंदौर से रिलेटेड एक और करेंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th टाइम। इन विच रिपोर्ट? सो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। And the Swachh Bharat report has been is declared by Ministry of Housing and Urban Affairs. Now Sunita Williams record numbers of hours spacewalk done, तो 62 hours की spacewalk का record है। Who has been appointed as the head of the Judicial Commission on the Mahakumbh Stampede? So Justice Harsh Kumar has been appointed as the head of the Judicial Commission. Who will become the first Indian astronaut to go to International Space Station? So ये हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं and this is very much important. Who has launched the digital currency BIMcoin? So BIMSTEC ने डिक्लेयर किया है एज अ डिजिटल करेंसी BIMcoin, ठीक है। नो CBDC का आप नाम ध्यान में रखेंगे, दैट इज सेंट्रल क्या कहते हैं, CBDC का आप नाम ध्यान में रखोगे which is declared as the digital currency of RBI, ठीक है। Now who has won the Sir Garfield Sobers Trophy? Jasprit Bumrah has won it. Which state has become the first state in India to start a rural cricket league? So it is Bihar. Also ये आप ध्यान रखेंगे, बिहार has become the first state to conduct a caste census, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हैज़ अनाउंस्ड टू मेक विच सिटी द सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट? सो डिब्रूगढ़ हैज़ बीन अनाउंस एंड हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ द असम, सेकंड कैपिटल ऑफ असम। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, सो आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है दैट इज़ अमरावती। आप कंफ्यूज मत होना, हैदराबाद में टिक करके आना। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती है एंड तेलंगाना की नई कैपिटल जो है हमारी वो है हैदराबाद। इसके अलावा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बोथ तेलंगाना एंड आंध्रा की जो नेचुरल बाउंड्री जो माउंटेन्स बनाते हैं उनका नाम है नल्लामला हिल्स, नल्लामला हिल्स, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The country's first organic fisheries center has started in Soring district of which state? So Soring district of
असम, सिक्किम में ये डिक्लेयर किया गया है। WHO हैज़ डिक्लेयर विच स्टेट मलेरिया फ्री, तो जॉर्जिया को डिक्लेयर किया है। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट दी अफ्रीका, तो इजिप्ट को डिक्लेयर किया था मलेरिया फ्री, ठीक है। एंड जॉर्डन को जो डिक्लेयर किया था लेप्रोजी फ्री, ठीक है। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द ECI मीडिया अवार्ड ऑन 30 जनवरी, सो दूरदर्शन को ये अवार्ड मिला है। विच टेम्पल हैज़ रिसीव द FCRA लाइसेंस, तो बांके बिहारी टेम्पल को FCRA लाइसेंस मिला है। ये FCRA लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड जो NGOs होते हैं इंडिया में, उनको जो सर्टिफिकेशन है दैट इज़ बीइंग डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। एंड उनको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट हमारा नीति आयोग करता है। एंड अगर नीति आयोग की बात हो ही रही है तो आपको ये पता होना चाहिए, नीति आयोग जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द अनदर थिंग, जो चेयरमैन होते हैं हमारे नीति आयोग के, वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नो, यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक हैज़ होइस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाइएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री, सो जो ऑस्ट्रेलिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक रेंज है विच इज़ नोन एज डार्लिंग रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो एक कोरल रीफ है विच इज़ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ऑस्ट्रेलिया के दो नेटिव जो एनिमल्स हैं वो हैं हमारे कोआला एंड कंगारू, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंदौर एंड विच सिटी एज वेटलैंड सिटी, सो इंदौर एंड उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट सिटी ऑफ म्यूज़िक, सो ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सिटी ऑफ लिटरेचर, तो कोझिकोड को डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं सिटी ऑफ क्राफ्ट की मैं बात करूं, तो श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, ठीक है। और सांबर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जयपुर। सांबर फेस्टिवल आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए कि सांबर लेक हमारी राजस्थान में है, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर हैज़ बिन लॉन्च, तो ये है स्टेट हमारे नागालैंड का। नागालैंड में एक हॉर्न बिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ हु वॉन द मेंस एंड द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो जैनिक सिनर एंड मैडिसन कीज ने ये जीता है। एलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच स्टेट, तो बेलारूस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे जीता है। बेलारूस आप ध्यान रखना, बेलारूस शेयर करता है बॉर्डर रशिया के साथ भी, एंड ये शेयर करता है बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी, एंड ये बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड के साथ भी, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 44 में। इसके अलावा देयर इज़ ओनली वन स्टेट जहाँ पे ये UCC ऑलरेडी है, वो हमारा एरिया है गोवा का। गोवा में अकॉर्डिंग टू अ पोर्तुगीज़ लॉ, ठीक है, पोर्तुगीज़ लॉ मेरे ख्याल से 1961 का है। दिस इज़ द UCC दैट इज़ करेंटली इम्प्लीमेंटेड इन गोवा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट किया गया है एज ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बाय व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट द टारगेट ऑफ 10,000 GI टैग्स, तो 2030 तक 10,000 GI टैग जो है वो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। ऑल्सो GI टैग जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन उसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा ये टैग 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। रिसेंटली घरचोला आर्ट है ऑफ गुजरात, इसको मिला है GI टैग, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय, सो राजनाथ सिंह ने ये फ्लैग ऑफ किया है बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम।
वेयर हैज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड पिकल बॉल लीग स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट हुआ है मुंबई में। इसके अलावा वेयर हैज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज हुआ है बेंगलोर में। तो इसके साथ हमारा मार्च मंथ का जो करंट अफेयर वन लाइनर्स हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो आने वाली अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कार्ड्स के सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बाकी के 11th मंथ्स की वन लाइनर्स का, जिसको कि ऐसे ही मैंने लिंक करके पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो को वहाँ से देख लेना। जिसने वो वीडियो देखी है वन लाइनर्स की, वो सारे के सारे मार्च वाली अपडेट देख लो, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फेब 1 का करंट अफेयर है कि विच कंट्री हैज प्लान टू डिक्लेयर बेगिंग एज अ क्राइम। तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली बना है एक कंट्री जिसने बेगिंग को क्राइम डिक्लेयर किया है। इसके अलावा देयर इज एन इंडियन सिटी इंदौर के नाम से, इंदौर इज अ सिटी विच हैज आल्सो डिक्लेयर्ड बेगिंग एज अ क्राइम। ठीक है, तो इंदौर का नाम आप याद रखेंगे। ऑल्सो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू दी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। एंड ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण कौन करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सुनीता विलियम्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ आवर्स स्पेस वॉक डन। तो 62 आवर्स की स्पेस वॉक की है सुनीता विलियम्स ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुनीता विलियम्स हैज सक्सेसफुली रिटर्न टू अर्थ ऑन स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, एंड स्पेस एक्स इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क। एंड इलॉन मस्क की एक और कंपनी जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, दैट इज टेस्ला। ठीक है, विच मेक ईवी कार्स। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द जुडिशियल कमीशन ऑन द महाकुंभ स्टैम्पेड। तो जस्टिस हर्ष वर्मा को बनाया गया है द हेड ऑफ द जुडिशियल कमीशन, जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी उस कमीशन को लीड करने के लिए। नाउ हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? नाउ शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट वन। इसके पहले भी एक और इंसान है हमारे इंडिया के ही, जिनका नाम राकेश शर्मा है, वो स्पेस में जा चुके हैं। ठीक है, तो राकेश शर्मा का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज गोपी थोता कुरा। ठीक है, गोपी थोता कुरा। नाउ हु हैज लॉन्च द डिजिटल करेंसी बिम कॉइन? नाउ इट हैज बीन लॉन्च बाय बिमटेक। ठीक है, नाउ हु हैज वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी? सो इट हैज बीन वॉन बाय जसप्रीत बुमराह। Which state has become the first state in India to start a rural cricket league? तो बिहार is the first state. इसके अलावा एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप ऑफ हॉकी हैज बीन कंडक्टेड इन बिहार ओनली, जिसमें कि इंडिया ने बीट किया है चाइना को। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द मैस्कॉट ऑफ दिस चैंपियनशिप, नेम इज गुड़िया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज अनाउंस्ड टू मेक विच सिटी द सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट? तो डिब्रूगढ़ बनने वाला है सेकंड कैपिटल। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली अपनी कैपिटल को चेंज किया है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। एंड इफ आई टॉक अबाउट तेलंगाना, तो तेलंगाना की कैपिटल अभी रिसेंटली बनी है हैदराबाद। तो ये पॉइंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज सेंटर हैज स्टार्टेड इन द सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, ये सिक्किम में है। ऑल्सो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। एंड सिक्किम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ भी। इसके अलावा एक ग्लेशियर है सिक्किम में विच इज नोन एज जेमू ग्लेशियर, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ सिक्किम एंड नेपाल की बॉर्डर पे ही माउंट एवरेस्ट की पीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज ठीक है, WHO हैज डिक्लेयर्ड विच स्टेट मलेरिया फ्री? तो जॉर्जिया को भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है WHO में। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया ने रिसेंटली अभी WHO ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है ना। आपको पता होना चाहिए ट्रैकोमा इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ आइज। ठीक है,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये बुक। नो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द ईसीआई मीडिया अवार्ड, दूरदर्शन को मिला ये अवार्ड। विच टेम्पल हैज रिसीव द एफसीआरए लाइसेंस, सो बांके बिहारी टेम्पल को एफसीआरए लाइसेंस मिला है। ठीक है, एंड एफसीआरए लाइसेंस कौन देता है? तो ये सबसे पहले नीति आयोग रिकमेंड करेगा, एंड देन दिस एफसीआरए लाइसेंस इज गिवन बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड आपको पता होना चाहिए आवर करेंटली होम मिनिस्टर कौन है हमारे, वो हैं अमित शाह। ठीक है। नो यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक हैज होइस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाइएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? नो ऑस्ट्रेलिया है वो कंट्री जहाँ की हाइएस्ट पीक, जिस जो आपकी मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया की हाइएस्ट पीक क्या है। यहाँ पे शिवांगी पाठक ने अपना ट्राई कलर को होस्ट किया है। नाउ ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, क्वाड के 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे कोआला स्पीसीज पाई जाती हैं विच इज ऑल्सो नोन एज मारूसिपल्स। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ है विच इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड इंदौर एंड विच सिटी एज वेटलैंड सिटी? सो इंदौर एंड उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। नाउ सांबर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जयपुर। इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर हैज बीन लॉन्च? ये नागालैंड में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट इज हु वॉन द मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन? जैनिक सिनर एंड मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। Alexander Lukashenko has won the presidential election of which state? Belarus. Which state has become the first to implement the UCC, Uniform Civil Code? उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पहले से, प्रायर उत्तराखंड के भी पहले देयर वाज अ स्टेट गोवा जहां पे यूसीसी पहले से ही था। ठीक है, विच वाज बेस्ड ऑन द पोर्तुगीज लॉ। नेक्स्ट, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो जसप्रीत बुमराह को डिक्लेयर किया गया है। Now, by when has the government of India set a target of 10,000 GI tags? 2030 तक 10,000 GI टैग। GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का क्या मतलब है कि उस एरिया की सबसे ज्यादा फेमस चीजों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टैग देती है ताकि ऑथेंटिसिटी का टैग उस जगह के पास रहे। ठीक है। Who has flagged off the battlefield surveillance system, Sanjay? So this is done by Rajnath Singh, who is currently the Defense Minister of India. Where has the first edition of the World Pickleball League started? तो ये मुंबई में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा मुंबई इज इन न्यूज। वाई? बिकॉज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई। अब मुंबई है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो महाराष्ट्र रिसीव करता है अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें। इसके अलावा महाराष्ट्र की बंजारा कम्युनिटी इज वेरी फेमस, एंड यहीं पे बंजारा म्यूजियम इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, महाराष्ट्र में ही वर्ल्ड्स इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है, दैट इज अतल शेवा न्याय सेतु। ऑल्सो लॉन्गेस्ट टनल की भी बात यही की है, दैट इज दी थाने बोरीवली टनल। आई होप कि आपको मुंबई से रिलेटेड ये करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज वेयर एज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 बीन ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेटर? तो ये स्मृति मंदाना को मिला है। विच स्टेट्स डेब्यू हैज वॉन द बेस्ट डेब्यू अवार्ड इन द 76 रिपब्लिक डे? तो उत्तर प्रदेश, विच हैज डिपिक्टेड महाकुंभ इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला है इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इफ आई टॉक अबाउट द पुलिस और द आर्मी कॉन्टिजेंट, इसमें दिल्ली पुलिस की जो कॉन्टिजेंट थी उसको बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर हैज द 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज? तो ये बैंगलोर में ऑर्गेनाइज हुआ है। हु हैज बीन नेम्ड द T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द मंथ ऑफ 2024? अर्शदीप सिंह इज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नो, India and which country have fixed the energy price for
सामपुर सोलर प्लांट, तो सामपुर सोलर प्लांट ये श्रीलंका में है। इसके अलावा अनसुरा दिसयंके इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, अभी रिसेंटली ये बनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द 76th रिपब्लिक डे 2025 दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, तो गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। हु हैज won the 9th Johor International Open Chess Tournament in Malaysia? Inia Paneerselvam. International Pashmina Festival has been organized in Nepal. Next is who has topped the recently released first financial health index of 2025? ओडिशा की फर्स्ट रैंक है। ओडिशा इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि भुवनेश्वर इज इन ओडिशा, और भुवनेश्वर में क्या हुआ है, तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इसकी हेड कौन थी जिन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, तो आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड्स दिए हैं। इसके अलावा ओडिशा से एक सुभद्रा स्कीम इज वेरी फेमस, दैट इज अ स्कीम विच इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, सो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 55th फाउंडेशन डे? हिमाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है। विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन विदाउट गेटिंग आउट? तिलक वर्मा। नेक्स्ट इज हु हैज पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? नो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ये 2015 में हुआ था एंड अमेरिका ने साइन ऑफ कर दिया है। अमेरिका इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। नो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल कूलिंग बाय 106 डिग्री। ठीक है। Who has launched the Operation Sardhawa on the Indian-Pakistan border in Rajasthan? So BSF is the one. Next is Chief Minister of which state has announced a ban on the sale of liquor at 17 places? Madhya Pradesh. The president of which country has approved the formation of a cryptocurrency working group? That is America. Next is which state government has launched the Samman Sanjeevani app? Haryana ने launch किया है. Also, Haryana has become the first state to acquire all the products at the MSP. इसके अलावा हरियाणा is in news because की खो-खो कप, the first खो-खो cup of India is being organized in Haryana only. ठीक है. Next, Boy Mela has been organized in Kolkata. The country that has legalized gay marriage is Thailand. Which former player has been inducted into the Australia's Hall of Fame? Michael Clark. Which state's Foundation Day was celebrated on January 24? Uttar Pradesh. Where has the 11th edition of the International Children Festival started? Kolkata में start हुआ है. Where has the Khelo India Winter Games of 2025 started? Ladakh. Next is where has the meeting of the foreign minister of the Quad countries taken place? ये अमेरिका में हुई है. इसके अलावा अगर मैं दूसरे समिट की बात करूं तो 19th G20 समिट, दिस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ब्राजील। क्वाड की जो समिट है 2024 की, ये अमेरिका में हुई है। अगर मैं बात करूं 2025 क्वाड समिट की, तो ये ऑर्गेनाइज होने वाली है इंडिया में। इफ आई टॉक अबाउट द एशियान समिट, एशियान समिट हमारी हुई है लाओस में। इफ आई टॉक अबाउट द एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट, ये हुई है अस्ताना में। अस्ताना कहाँ पे है? ये कजाकिस्तान में। ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। Who has become the top chess player of India? D. Gukesh. Which country will host the Chess World Cup 2025? India host करने वाला है। Next is in the Global Firepower Index of 2025, India is at which position? India की 4th position है, first position अमेरिका की है। Next is virgin coconut oil from which country has got a GI tag? तो अंडमान एंड निकोबार। Which country has unveiled the world's longest tunnel? China. Who has been made the foreign minister of America? Marco Rubio. इसके अलावा if I talk who has become the FBI chief, तो ये काश पटेल हैं जो FBI chief बने हैं। Next is in which state the ancient Uma Maheshwar metal idol has been found? Karnataka. Which state has launched the Kavacham disaster system? Kerala. Which government scheme has completed 10 years on 22nd January? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना. Which state government has launched the दीन दयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना? छत्तीसगढ़. Which state's बादल village has been declared as infectious? जम्मू एंड कश्मीर का ये विलेज है जिसको infectious घोषित किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी for the 5th time has been won by Karnataka. Next is
Where was the 27th International Congress on Glass 2025 organized? Kolkata. Who has won the women's single title in the Indian Open Super Badminton Tournament? Ansi Young. Who has been appointed as the additional DGP of BSF? Mohan Kumar Agrawal. Which country has become the partner country of BRICS? Nigeria. Which state foundation day was celebrated on January 21? Manipur, Meghalaya and Tripura. Uttarakhand government has signed an agreement with which country to achieve carbon neutrality? Iceland. The Director General of CRPF, Gyanendra Pratap Singh bane hain abhi. Sanchar Sathi app has been launched by Jyotiraditya Scindia. Which team has won the first Kho-Kho World Cup? India. Which country has become the third largest startup ecosystem with more than 100 unicorns? यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? वो कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन 2 बिलियन से ज्यादा होती है. ठीक है. Now the 60th anniversary of the diplomatic relations between India and which country was celebrated? Singapore. According to the information, the word secularism will be removed from the constitution of which country? Bangladesh. Who has been made the record of playing the most Grand Slam matches? So Novak Djokovic. Which IIT has C. partner for the indigenous 6G optical chipset? IIT Mumbai. Next is, who has got the additional charge of the Secretary of the Ministry of? So ये charge मिला है निधि खरे को. Next is, who has been appointed as the batting coach of Team India? Sitanshu Kotak. Which Union Minister has launched the Bharat Ranbhoomi Darshan app? Rajnath Singh. In which city archaeological experimental museum has been inaugurated? ये वडनगर में है. New species of pangolin has been found in Arunachal Pradesh. Newly launched New Glenn rocket कौन सी कंपनी का है? तो ये ब्लू ओरिजिन का है. Where has the India Mobility Global Expo has been inaugurated? New Delhi. One plate, one gap, one bag campaign started in Prayagraj. India signed a deal with which country for the export of BrahMos supersonic cruise missile? Indonesia. Thiruvallur Day has been celebrated in Tamil Nadu. Former CII Director General Tarun Das has been honored with the Honorary Citizen Award of which country? Singapore. Which has become the fourth country to achieve unmanned docking in space? India. Which UT has become the fully literate administrative unit under the New India Literacy Program Ullas? So Ladakh has become the first UT. ठीक है. Next is, Future Mineral Forum started at Riyadh. First astronomical observatory of Eastern India inaugurated in West Bengal. Multipurpose vessel and L&T launched for the Indian Navy जिसका नाम है INS उत्कर्ष. Which state Gan Nagi festival organized हुआ मणिपुर में. Who has become the first private company to have its own constellation of satellite? Pixel. In which state does the Pavana river flow? That was in news. ये river महाराष्ट्र में है. The highest run scorer in the history of women's under 19 trophy is Zira Jadhav, who has been selected as the ICC Player of the Month for December. Jasprit Bumrah and Annabelle Sutherland. Where did the PM Modi inaugurate Asia's second largest ISKCON temple? Navi Mumbai. Kanuma festival is celebrated in Telangana. Countries that has made the most powerful hydrogen train engine? India. Which state the 10th Ajanta Virul International Film Festival started in? Maharashtra. Now next is, which state government will give pension to those who went to the jail? ये Odisha है. Next is, India and which country have announced to celebrate 2026 as a dual year? Spain. Who has launched the National Turmeric Board? Piyush Goyal, and the National Turmeric Board has been established in Telangana. Next is, where was the Nag Mk2 anti-tank missile successfully tested? Rajasthan. Who has been awarded the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? Aparna Sen. Makkar Vaikullu Festival celebrated in Kerala. 85th All India Presiding Officer Conference is being held at Patna. Next is, which state has become the 34th state to implement the Ayushman Jan Arogya Yojana? It is Odisha. Who represented India at the swearing-in ceremony of the US President Donald Trump? It is Dr. S. Jaishankar. Where was the Women's Hockey India League 2025 organized? It is organized in Ranchi. Where has the Indian Railways organized the Paint My City campaign? It is in Prayagraj. Now, the first Kho-Kho World Cup started in New Delhi. Which state chief minister has launched the Swami Vivekanand Yuva Shakti Mission? Madhya Pradesh. Which country magazine has selected Neeraj Chopra as the best javelin thrower?
अमेरिका की मैगजीन ने सेलेक्ट किया है। हु हैज रिलीज द बुक टाइटल डेवलप्ड इंडिया एट युवा शक्ति विजन फॉर 2047? इट इज नरेंद्र मोदी। Where as Pradhan Mantri Modi, PM Modi inaugurated the Sonmarg Tunnel, it is in Jammu and Kashmir. What is the name of the 6th Scorpion class submarine handed over to the Indian Navy? It is Vangshi. In which country the first Hindi certificate course has been launched? It is Sri Lanka. Which state police has started the feedback system? It is Telangana. What percentage increase has been recorded in the India's national highway in last 10 years? 60% increase record किया गया है. Where was the world first cardiac telesurgery done using a robotic system? It is India. Which country Tamim Iqbal is retired from international cricket? Bangladesh. Which language has been given the status of classical language? Marathi. मराठी के अलावा बंगाली, पाली, प्राकृत, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनको भी क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया। हु चेयर द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? इट इज अमित शाह। Now next is, which state has launched the Bima Shakhi Yojana? It is Goa. Where has the 21st edition of the Third Eye Asian Film Festival started? Mumbai. PM Modi laid the foundation stone of India's first green hydrogen hub in Vishakhapatnam. India's first cable stayed bridge has been inaugurated in Jammu and Kashmir. Who has topped the Henley Passport Index? Singapore. In whose honor the Himachal Pradesh government renamed the Himachal Pradesh Institute of Public Administration? It is Dr. Manmohan Singh. Next is, who has been awarded the Pravasi Bharatiya Samman Award? Dr. Sayyid Anwar Khurshid. 23rd Divya Kala Mela has been organized in Gujarat. National Youth Festival of 2025 has been organized in New Delhi. Now, the Chief Minister of the state of which state has announced the reward of $1 million for decoding the Indus script? It is Tamil Nadu. Which state has launched the Parth Yojana? Madhya Pradesh. In which country Mount Ibu volcano is erupted? तो ये इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। इंडोनेशिया में एक माउंट मेरापी वॉल्केनो भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। The which IIT has unveiled Asia's largest shallow wave basin? IIT Madras. Which state government has launched the Garunakshi online FIR system for forest crime? Karnataka. Who has been appointed as the new chairman of ISRO? V. Narayan. Which state government has launched the Gunotsav 2025 to access the performance of students? Assam. Who launched the cashless treatment scheme for road accident victims? Nitin Gadkari. How much has Microsoft announced to invest in AI and cloud infrastructure in India in next 2 years? That is $3 billion. Next is, where was the 18th edition of the Pravasiya Bharati Divas celebration? Bhubaneswar में conduct हुआ था ये. Who has become the oldest living person in the world? Ina Kanebro. Who has launched the SIP Air app for asthma testing on January 8? This is Sipla. Kiran Jadhav has won which medal in 10-meter air rifle in Lakshya Cup? That is gold medal. On January 7, the president of which country has declared a state of emergency for 60 days? In 7 provinces and 3 municipalities amid growing unrest and military conflict. This is Ecuador. Which country has become the 10th full member of BRICS group on January 7? That is Indonesia. Now next is, who has launched the Bharat Port portal? So this has been launched by Amit Shah. Banded royal butterfly has been discovered in Tripura. What is the name given to the torch of the 38th national game? Tejaswini. Aero India 2025 will be held at Bangalore. The first Jallikattu festival is being organized in Tamil Nadu. Which state government has declared unseasonal rains as a natural disaster? Odisha. Which IIT has developed the injectable hydrogel for cancer therapy? IIT Guwahati. The first photographic evidence of Palas cat has been found in Himachal Pradesh. India's first organic fisheries cluster has been started in Sikkim. Who inaugurated the Panchayat to Parliament 2.0 initiative in the central hall of the Constitutional House? Om Birla. Which country has become the third largest metro rail network? India. Who has been awarded as America's highest civilian order, Presidential Medal of Freedom? George Soros. Which IIT has developed bacteria to deal with the soil pollution? This is IIT Mumbai. Who has topped the global pollution ranking? Hanoi. Which bank has launched the Har Ghar Lakpati Yojana? SBI. Which state has become the first to link the forest ecosystem to green GDP? This is Chhattisgarh. 31st National Children's Science Congress has started in Bhopal.
8th Kautik International Film Festival started in Nainital. Tezing Yanki became the first woman IPS of the state of Arunachal Pradesh, who has joined the United Nations Security Council as a temporary member. Pakistan, which state government has celebrated Savitri Bai Phule's birth anniversary as Women's Teachers Day. This is Telangana. The forest department of which state has developed a park based on Mahabharat? It is Uttarakhand. Whereas the toxic waste being transported 40 years after the Bhopal gas tragedy, this is being transferred into Pitampura deposit unit of Dhar. The country's first coastal and wader bus census started at Jamnagar Marine National Park, which is in Gujarat. How many athletes honored with the Khel Ratna Award of 2024? 4. In the latest ICC reports, which bowler has got the first place in the test ranking? It is Jasprit Bumrah. From the next video, we are going to cover the current affairs from Feb का हमने कर लिया, then हम Jan 2025 ऐसे अब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है. So thank you for watching. Where has the first wine production unit been started? On 30th December 2024. So Uttarakhand mein first wine production unit has been started. Now I am going to tell you some of the important current affairs which are related to Uttarakhand for the past 1.5 years. Uttarakhand has become the first state to implement a law that is called UCC, Uniform Civil Code. If I talk about the Uniform Civil Code, this is mentioned under Article 44 of the Constitution, which was also a directive principle of state policy. Second important news या current affairs about Uttarakhand is Uttarakhand has introduced a yoga policy. Next, if I talk about Uttarakhand, Uttarakhand is going to host 38 national games this year. ठीक है. If I talk about the 37th national games, so it was hosted by Goa. ठीक है. Now, other important information is that Justice Ritu Bahari has become the first woman chief justice of Uttarakhand. Okay. Now, उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान में रखना है कि चाइना शेयर्स बॉर्डर विद उत्तराखंड. ऑल्सो सम ऑफ द passes that are very important in the state of Uttarakhand are Mana Pass, Niti, Lipulekh, sorry, not Niti, Lipulekh, Limpuadhara. These are the places in Uttarakhand, and Kala Pani. All these places are disputed territory. Kala Pani, Lipulekh and Limpuadhara, these three are disputed territory and has been used since last 1.5 years. This is disputed territory between India and Nepal. And Mana Pass is in Uttarakhand. Okay, so Uttarakhand regarding we have studied all the MCQs. Now important current affairs. Now let's move to the next one liner, that is who has topped the test all-rounder ranking. So Ravindra Jadeja. If I talk about the cricket, the World T20 Cricket 2024 का was won by India by defeating South Africa. If I talk about the Women's Asia Cup, it was won by Sri Lanka by defeating India. ठीक है. Now next is who has topped the T20 all-rounders ranking? Hardik Pandya. Next is how many medals has India won in the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship? 33 medals have been won, and this was hosted in Doha, Qatar. Now if I talk about Qatar and India, तो इन दोनों के बीच में exercise is very important, which is also known as roar of the sea exercise. Also Qatar के बारे में you should know that the Qatar is a member of Gulf Cooperation Council and Organization of Petroleum Exporting Countries. And this OPEC, you need to know OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रिया के वियना में. ठीक है. तो आपका यहाँ मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी रिवाइज करा दी एंड कतर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दी. नाउ लेट्स मूव अहेड. वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप ऑफ 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज बिहार की राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी में. सो बिहार के रिगार्डिंग बहुत सारी करंट अफेयर्स हैं, तो लेट अस सी दिस करंट अफेयर. सबसे पहला तो हमने अभी देख लिया, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. सेकेंड इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स. खेलो इंडिया यूथ गेम्स of 2025 is going to be organized in Bihar. Secondly, first dry port of Bihar has currently been in operation, and this is in Bihta, that is in Patna. Next important thing, Bihar has got its second tiger reserve, जिसका फाउंडेशन होने वाली है कैमूर में. If I talk about the first tiger reserve and the only tiger reserve of Bihar, that is Valmiki Tiger Reserve in West Champaran.
Next again, two Ramsar sites have been added recently in Bihar, which name is Nagi and Nakti Wildlife Sanctuary. तो ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट बिहार यू नीड टू नो. ओके, आई होप द थिंग्स ऐसे मैं लिंक करके आपको बता रहा हूं, तो दिस इज हेल्पिंग यू अ लॉट. ओके, नाउ लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन लाइनर्स. हु हैज लॉन्च्ड द सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान? So it was launched by Prime Minister Narendra Modi. Next is the sacrifice and bravery of Sahibzadas of Guru Gobind Singh will be included in the curriculum of which state? Correct answer is Madhya Pradesh. Now let me tell you some of the important current affairs regarding Madhya Pradesh. सबसे पहला तो पार्थ योजना has been launched by the state. पार्थ योजना, एंड ये पार्थ योजना किस चीज से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू करियर इन डिफेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट. Now, secondly, second important news is MP is designated as the global destination by Wall Street Journal. Wall Street Journal has designated Madhya Pradesh as the global destination. Next important news is केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट, तो यू विल आंसर कि ये मध्य प्रदेश में है. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग that the Geological Survey of India GSI has launched a museum in Gwalior. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. Now the face of MP tourism किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? सो पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है. आई होप कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन को कहीं नोट कर रहे होगे. अगर नोट नहीं कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स आप इसको देख लेना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी. Then again Madhya Pradesh is important because the world's largest solar floating project, ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन ओमकारेश्वर. नेक्स्ट इज कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शंस हैज बीन कंडक्टेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. And initiative, bagless school initiative has also been initiated by the Madhya Pradesh government. So this all information is really important regarding the Madhya Pradesh, जो आपको ध्यान में रखनी है. Now let's see the next current affairs, that is President Draupadi Murmu has awarded how many children with the Prime Minister National Bal Puraskar? So 17 children को ये award मिला है. Where has the Hockey India League 2024-2025 started? So it has started in Odisha. Now let us cover important current affairs regarding Odisha. सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा. सबसे पहले Odisha has declared unseasonal days as natural calamity. जब अनसीजनल डेज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होती है, या अनसीजनल जो सीजन चल रहा है उस हिसाब से डेज बिल्कुल रिवर्स है, विच इज डायरेक्टली हार्मिंग दी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, देन उसको उन अनसीजनल डेज को ओडिशा हैज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल कैलेमिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज ओडिशा हैज डेसिग्नेटेड 6 सुनामी रेडी विलेजेस बाय यूनेस्को. 6 सुनामी रेडी विलेजेस यूनेस्को ने डेजिग्नेट किए हैं ओडिशा में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग मनकाडिया कम्युनिटी. ये हमारे ओडिशा की कम्युनिटी है विच हैज बीन इन न्यूज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम इज सुभद्रा स्कीम which is related to financial help to the women. Subhadra scheme has been launched by the Odisha government. Also the first silicon carbide factory, ये कहाँ है? ये है हमारे उड़ीसा में. ठीक है. सो उड़ीसा के रिगार्डिंग ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री. करेक्ट आंसर इज अरुणीश चावला. Next is where will Divyang Cricket Championship Trophy held? So this is going to be held in Sri Lanka. अब श्रीलंका के रिस्पेक्ट में important है exercise that is conducted between India and Sri Lanka, that is SLEENEX exercise. If I talk about the other thing, तो India's first international cruise vessel ये ऑपरेट हुआ है फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, जिसका नाम क्या है? MV एम्प्रेस. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज बाल्ड ईगल हैज बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? करेक्ट इज USA.
ऑल्सो यूएसए से रिगार्डिंग इस साल इंपॉर्टेंट है, 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी। एंड डोनाल्ड ट्रंप हेल्स फ्रॉम विच पार्टी? ही बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी, सॉरी नॉट कंजर्वेटिव, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट let's move to the next thing, that is which medal has Martina Devi Maiba won in the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship? So silver medal. Next is according to the report released on 20th December, India has achieved a reduction of how many percent cases in malaria? 97% reduction in malaria cases has been registered. Now next is which country has become the largest recipient of remittances? So India has become the largest recipient एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट हमारा मेक्सिको है, ठीक है। आई होप द थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज हमारा लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रिगार्डिंग इंडिया। इंडिया का रैंक देख लेते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस में। सबसे पहला तो इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं सो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। 39th रैंक है इंडिया का। ये सारे के सारे रैंकिंग ऑफ द ईयर 2024 है। देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10th है। देन इफ आई टॉक अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का रैंक 105th है। इफ आई टॉक अबाउट और कौन सा इंडेक्स है? यस, पासपोर्ट इंडेक्स विच इज रिलीज बाय हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 82nd। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक 129th है। और कौन सा इंडेक्स बचा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 134th है। एक और इंडेक्स है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 108th है। तो ये इंडिया के रैंक्स आपको ध्यान में होने चाहिए। विच स्टेट हैज बिकम द फिफ्थ स्टेट टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड? तो ये है पंजाब। ऑल्सो पंजाब में मेटल मिला है विच इज नोन एज टैंटलम which was discovered by the scientist of IIT Roper, and this has been found in Satluj River. It is a highly corrosion resistive matter, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पंजाब से मिला है, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स स्टार्ट। Which state has been included in the go to global destinations for 2025 by Wall Street Journal? अभी मैंने मध्य प्रदेश के बारे में ये चीज बताई थी ना आपको, देखो उसी पे वन लाइनर आ गया, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट इज Kilauea volcano erupted on 26 December. Where is the volcano located? So this volcano is located in Hawaii Island. Now US से अब मैं कुछ volcanoes की अगर बात करूं तो माउंट, अगर किलिमंजारो की मैं बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए दैट द माउंट किलिमंजारो इज इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी तंजानिया में है ये। इसके अलावा यू शुड नो अबाउट माउंट फूजी या माउंट फूजियामा, इट इज इन जापान। माउंट मेरापी के बारे में आपको पता होना चाहिए, माउंट मेरापी इज इन इंडोनेशिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बैरन वॉल्केनो, ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड इट इज इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ वॉल्केनोज के नाम आपको पता होने चाहिए ना। नेक्स्ट इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे ऑन 26 दिसंबर 2024। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? नाउ चेंजिंग इंडिया इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी एंड पद्म विभूषण रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही ऑल्सो वॉज द 15th गवर्नर ऑफ द RBI, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हु टॉप द ICC टेस्ट बॉलर रैंकिंग। जसप्रीत बुमराह ने टॉप किया है। विच मेडल डिड शाहू तुषार माने विन इन द सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप इन भोपाल? गोल्ड मेडल मिला है। देन अगेन where did the Prime Minister Modi lay the foundation stone of the Ken Betwa link project? Madhya Pradesh. Who has become the India's first zero waste airport? That is Indore. Also Indore has topped in स्वच्छता रैंकिंग, दैट इज स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में जो रैंकिंग्स इशूड होती हैं उसमें टॉप में इंदौर है एंड सेकंड में सूरत है। दिस यू नीड टू नो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वेयर हैज द स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवील्ड? तो ये लखनऊ में अनवील किया गया है। नाउ जब लखनऊ की बात आ गई है तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि उत्तर प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। दिस इज अ न्यू पॉलिसी विच हैज बीन ब्रॉट अप बाय द उत्तर प्रदेश।
Second important thing is Uttar Pradesh has launched a new initiative, maa ki rasoi initiative. Third important is Uttar Pradesh has become the first state to fully implement government e-marketplace. This is an online platform for trading of government things. Okay. Then again, Uttar Pradesh has launched world's first Asian king vulture conservation center. Then Uttar Pradesh has first rank in compressed biogas production. ठीक है. So this is all of the important information regarding Uttar Pradesh. Now next है हमारा, which country's cargo ship has sunk in the Mediterranean Sea after an explosion? Correct answer is Russia. Now which space agency's Parker solar probe has tried to reach the closest to the sun? NASA. Now sun की अगर बात हो रही है तो इसरो इस साल बहुत important है. Why? Because of its Aditya L1 mission. And what is Aditya L1 mission? It is related to study of the corona layer of the sun, that is the outermost layer of the sun. तो sun के study के लिए ये mission है Aditya L1. Also ISRO has launched another mission, ExpoSat mission, ठीक है, to study the X-rays in the cosmic world or the space. ठीक है. Now who will host the Women's Kabaddi World Cup in 2025? Bihar. Where has the 100 days TB eradication campaign been launched? It has been launched in Punjab. Which country's highest award has been given to the Indian businessman Ravi Pillai? Bahrain ने मिला है दिया award. Next is where has the country's first digital museum opened? So it has been opened in Maharashtra. Now Maharashtra के regarding कुछ important current affairs देख लेते हैं. First of all, Maharashtra has become the first state to introduce an AI policy. Also AI museum has been set up by Maharashtra. Then a Guillain-Barré syndrome, ये एक नई बीमारी है that has been जिसके केसेस रिपोर्ट हुए महाराष्ट्र में. एंड इसके बारे में आपको पता होना चाहिए that Guillain-Barré syndrome is an autoimmune condition जिसमें क्या होता है, the cells of your own body kills healthy cells of your body. ठीक है. They mistakenly considered your healthy body cells as the vital cells that has been infected and automatically they start killing their own cells. ठीक है. So ये बीमारी has widely been reported in the Maharashtra state. So ये इसके बारे में आपको थोड़ा knowledge होना चाहिए. Next is who has topped the network readiness index? तो America has launched it. Which Gulf country has officially reopened its embassy in Syria? तो कतर ने reopen किया है. Next is हमारा, where has Dr. Ambedkar scholarship been started for Dalit student? ये दिल्ली में start हुई है. Which country has won the ICC Under-19 Women's T20 Asia Cup? India ने. India's first bio-bitumen national highway was inaugurated in Nagpur. Next again आ गया हमारा, the central government has approved 47 ethanol projects for loan subsidy in which state? तो बिहार. Prime Minister Modi received the highest honor of which country? कुवैत का highest honor मिला है. Then comes where has the third season of the World Tennis League concluded? अबू धाबी में conclude हुआ है. Who has been awarded as the Medical Excellence Award in the UK House of Commons? Ravindran Kumaran. Next is who has won the title of men's 50-meter rifle 3 position? Kiran Ankush Jadhav. Shri Ram Mandir projects has been awarded the Sword of Honor by which country? Britain ने order किया है. Who has been appointed as the President of the United States Nations International Justice Council? Madan Lokor. Now, where was the 72nd plenary sessions of the National Eastern Council held? It was held in Agartala. Next is who will host the World Boxing Congress in 2025? So, India will hold it. Next is which state government has launched the Sanjeevani Yojana for citizens above the 60 years of age? It is Delhi. Where was the 11th summit of the Developing Eight Economic Cooperation Organization held? ये हुई थी इजिप्ट में. What position has India achieved in the World Economic Forum's Travel and Tourism Development Index? 39th. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. एंड इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया का 39th ही रैंक था. Next is where was the 24th BIMSTEC meeting held? It was held in Thailand. And if I talk about the ASEAN Summit of 2024, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. It was held in
Laos. ठीक है. Now let's proceed to the next page, that is, who will host the World Para Athletics Championship of 2025? India is the correct answer. Who has become the first person to reach 500 billion net worth? Elon Musk. Next is, in which state Banglar Bari housing scheme has been started? So ये है, correct answer is West Bengal. अब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको बताता हूँ. हेरिटेज टूरिज्म में वेस्ट बंगाल हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर बाय यूनेस्को. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द अपराजिता बिल, which is an anti-rape bill which was introduced in the West Bengal Legislative Assembly. इसके अलावा if I talk about Shanti Niketan, it was designated as the 41st heritage site of India. Also, Maya and Sultanganj port is in news क्योंकि ये हमारे वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बीच में है. ठीक है. सो वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग ये सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं. नेक्स्ट इज, वेयर इज द इंडियन मेंस टीम रैंक्ड इन द वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग? 5th रैंक मिला है. अगेंस्ट विच टीम डिड द इंडियन वुमेन्स टीम स्कोर इट्स हाईएस्ट स्कोर इन T20I क्रिकेट? वेस्ट इंडीज. नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑफ 2024 ऑर्गेनाइज्ड? दोहा में ऑर्गेनाइज हुई थी. नेक्स्ट इज, who has been awarded the National Tansin Samman of 2023? Correct is Swapan Chaudhary. Next is, which country's astronaut have set the record for longest spacewalk? China ने record set किया है. Also, China has launched its own space station, and इस space station का नाम क्या है? इसका नाम है Tiangong-1. ठीक है. Next is, who has been awarded the Sahitya Academy Award of 2024? Correct is Gagan Gill. Now, if I talk about the next one-liner, that is about Gujarat. Which state Masali village has become the country's first border village to run on solar energy? तो ये गुजरात में है. Now let us see some of the important current affairs regarding the state Gujarat. सबसे पहले, Gujarat has designated its first biodiversity site, which is an inland mangrove, and ये जगह का नाम क्या है? So the name of the place is Guneri. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस, ये भी गुजरात ने कंडक्ट करवाया है रिसेंटली. एंड देन फर्स्ट यूनियन सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन गुजरात. इसके अलावा घरचोला हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ GI टैग, जो कि गुजरात का है. ठीक है. Who has been honored with the UNEP's Lifetime Achievement Award of 2024? Madhav Gadgil. Which state has stopped in installing solar power on roof? Gujarat. Who has been made the brand ambassador for Kho-Kho World Cup 2025? Salman Khan. Who won the Miss India USA 2024 title? Kathleen Sandra Neal. Next is, where was the world's largest cattle slaughter festival Gadhi Mahi celebrated? It was celebrated in Nepal. Next is, which Indian veteran cricketer has announced his retirement from international cricket? That is Ravichandran Ashwin. Which country's Vinicius Junior has won the FIFA's Best Men's Award of 2024? This is Brazil. Who has won both the FIDE Under-18 Youth Rapid and Blitz title? Pranav Venkatesh. Where has India organized Ganga River dolphin tagging for the first time? Assam. Next is, who has secured second place in the QS World University Rankings? It is IIT Kharagpur. Which country has announced to make a cancer vaccine? This is Russia. Which word has been declared as the Cambridge Dictionary Word of the Year? The word's name is manifest. In which city of India giving alms to beggar will be a crime from 1st January? It is Indore. Now, next is, on 18th December, the joint naval exercise LINERS has started between India and which country? It is between India and Sri Lanka. Where did Vice President Jagdeep Dhankar inaugurated India's first geoscience museum? It is in Visakhapatnam. Where was Gujarat's first semiconductor assembly and testing plant inaugurated? It was inaugurated in Surat.
Argentina president Javier Milei has been granted citizenship of which country? तो इटली की citizenship मिली है उनको. Which country has offered visa-free travel for Indians till 2025? It is Russia. Who has been awarded the Jamshedji Tata Award? Kiran Mazumdar-Shaw. Whose novel Kaun Desh Ko Vasi Venu Ki Diary has been selected for 34th Vyas Samman? It is Suryabala. Who has become the third largest smartphone exporter in the world? It is India. Earlier, India was second largest smartphone manufacturer. Who has implemented the code of conduct for the first time on online security? It is Britain. Nate Stewart-Brunt, who scored the fastest century in ICC Women's Test Cricket, is player of which country? So, she is a player of England. Where has the 10th International Forest Festival started? It has started in Bhopal. Where has the new survey ship INS Nirdeshak been inducted into the Indian Navy? So, it was inducted in Vishakhapatnam. Where did the Indian Navy launch the Sampark 4.0 initiative? So the initiative was launched in Maharashtra. Mount Semeru volcano of which country erupted? तो ये इंडोनेशिया का है. Which country has tested Dark Eagle anti-missile system successfully? It is USA. Who has won the Syed Mushtaq Ali Trophy of 2024? It is Mumbai. Who has become the 12th member of the Trans-Pacific Trade Agreement? It is Britain. Next is Desert Night War exercise has started in the Arabian Sea between India, France and which country? So it is between India, France and UAE. Where has India's first diabetes biobank been established? It is established in Chennai. Who has unveiled India's first yoga policy to become a global yoga center? Uttarakhand. अभी जब मैं आपको वन लाइनर्स बता रहा था, additional information about the one liners, so I have already taught you this. Where will India's first cargo hub be built? It will be built in Noida. Who has joined ISA as the 105th member? It is Moldova. Next is who has unveiled Gencast for weather forecasting? It is Google. Defense Minister Rajnath Singh and signed an agreement with whom for Sukhoi 12 Sukhoi 30 aircraft? It is the HAL. Now, next is RBI has decided to increase the limit of agricultural loan without collateral from 1,60,000 to how much? So the limit has been raised to 2 lakh rupees. Next is who has won the Women Junior Asia Hockey Cup of 2024? So it was won by India. Indian Postal Telecommunication Accounts and Finance Service celebrated which foundation day? So 50th foundation day was celebrated. Who tops the list of the world 25 richest family released by Bloomberg? It is the Walton that topped. How many Indian women have been included in the Forbes list of 100 most powerful women? So 3 Indians have been included. In which state the 21st livestock census has been started? It is Haryana. Which country has suspended most favored nation favored status to the India? So it is Switzerland. Where will the Suraj Kund Mela of 2025 be organized? So it will be organized in Faridabad. Where did the 23rd National Athletics Championship for 2024 for the blind start? So it is going to be started in Nadiad, Gujarat. Where has the 10th World Ayurveda Congress and Arogya Expo been organized? So it has been organized in Dehradun. Next is 22nd Divyakala Mela has been organized in Delhi. Where will the playoff tournament of the FIFA Football Women's World Cup of 2027 be held? So it will be held in Brazil. By when will India establish its own space station? So the target is 2035. Next is who has unveiled the revolutionary quantum chip Willow? So it has been launched by Google. Who will host the 2034 Men's FIFA World Cup? So it will be hosted by Saudi Arabia. President Draupadi Murmu honored the army chief of which country with honorary rank of the General of the Indian Army? So नेपाल के जनरल को ये दिया गया है. The 9th defense dialogue between India and which country has been held in New Delhi? So it is India and Thailand. Who will host the Khelo India Winter Games in 2025? It is Ladakh. Next is who has been chosen as a person of year by the prestigious Time magazine? This is Donald Trump. Who has been selected as the ICC Player of the Month for November 2024? It is Haris Rauf and Danny Watt Hodge. Who has become the first female cricketer to score 4 one-day centuries in a calendar year? This is Priti Mandana. Next is who has become the youngest world chess champion? It is D. Gukesh.
Next is who has released in this book The Secret of Dalai Lama's Happiness, that is Dr. Dinesh Sahara. Which position has India secured in the Asian Women's Handball Championship? 6th position. Next is the Guruvayur temple that was in news is located in which state? So it is in Kerala. Who has been appointed by Gujarat Giants as their bowling coach? Praveen Tambe. Where has a new species of damselfish has been found recently? So it is found in Maldives. Who has topped in India in the QS World University Rankings? It is IIT Delhi. Next is who has received the 2024 Champions of the Earth Award? So the award has been given to Madhav Gadgil. Who has become the first state to fully implement the central government's e-marketplace? That is Uttar Pradesh. I have already told you this when I was explaining the current affairs for the state of Uttar Pradesh. Who has been appointed by Donald Trump as the Assistant Attorney General for Civil Rights? It is Harmeet Dillon. When has CM Bhajanlal announced to celebrate Pravasi Rajasthani Day? It is on the 10th December. Next is where will Eagle Nest Bird Festival be held? So it will be held in Arunachal Pradesh. UNICEF Foundation Day celebrated on 11th December. Who has won the Abu Dhabi Grand Prix? So it has been won by Landy Norris. Who has been awarded the JC Daniel Award of 2023? So Shaji and Karun is the right answer. Who has been recognized as the emerging star woman leader in the banking sector? Correct is Bharti Kohli. INS Tushil will be inducted into the Indian Navy, has been built with the cooperation of which country? So it has been built with the cooperation of Russia. Who has become the 2024 Women's Tennis Association Player of the Year? That is Aryna Sabalenka. Which word has been declared by Merriam-Webster as the word of the year 2024? It is the word polarization. Next is to which country has India sent 2200 metric ton of rice? Correct is Myanmar. Who has won the crossword books prize? It has been won by KGS Dhillon. Who has been appointed as the new governor of RBI? Sanjay Manotra. Where has the Prime Minister Narendra Modi launched Bima Sakhi Yojana? So it has been launched in Panipat. Which US state has declared 6th December as Mahatma Gandhi Smriti Divas? To Nebraska, US state has declared it. Where did Union Home Minister Amit Shah unveil the statue of Sardar Patel? So it was unveiled at Jodhpur. How much has the sex ratio in the country increased from 918? So the sex ratio has been increased from 19 to 930. Now next is who has won the PSU Transformation Award on Innovation? So इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट था on the last page. Seki has won this. ठीक है. Next is हमारा where have the highest number of mobile malware attacks been found? It has been found in India. Who has been declared the best airline in 2024 ranking of Air Health? So Brussels Airlines has been declared. Who has won the second consecutive Under 19 Asia Cup? So it was won by Bangladesh. Where has the Urjaveer Yojana been launched? So it was launched in Vijayawada. Which state government will launch maize flour named Himbhog? So it is going to be launched by Himachal Pradesh. Who launched the PME Vidya DTH channel on 7th December? So it is going to be launched by Dharmendra Pradhan. It was launched by Dharmendra Pradhan. World Meditation Day is going to be celebrated on 21st December. Where has Foodco launched the Uphar Milk program to tackle malnutrition? So it was launched in the state of Chhattisgarh. Who has been appointed as the coach of Under 20 and Under 17 women's football team? Joachim Alexanderson. Who has been appointed as the head of the NASA by Donald Trump? Jared Isaacman ने appoint किया गया है. Which IIT has prepared India's first Hyperloop test track? It is IIT Madras. Who will receive the Indira Gandhi Award of 2024? Veronica Bachelet. Next is who has become the theme country of the 30th Kolkata International Film Festival? It is France. Which country has been awarded the 2024 ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific? It is India. In which state is the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary located? So this is located in Assam. Who has unveiled the Anna Chakra and Scan portal? So Prahlad Joshi. Where has weightlifting championship of 2024 started? It was started in Bahrain.
Whereas the third edition of Pustakyan book fair organized by Sahitya Academy, it was organized in New Delhi. Which state government has launched phase 1 of the Indrama Awas Yojana? Telangana is the correct answer. Where has the India's first vertical lift bridge been built? So it has been built in Rameshwaram. Next is, where has 9th edition of the International Conference on Waste to Recycle Technology been organized? So it was organized in New Delhi. Who has received the Britain's prestigious Turner Prize? So it was received by Jaslene Kaur. Who won the title of Men's Junior Hockey Asia Cup of 2024? So it was won by India. Which country will host the Blind Women T20 World Cup in 2025? So India will host this. First, which has become the first state in India to fully implement 3 criminal laws? So it is Chandigarh. Which country has opened the first atmospheric monitoring center in Antarctica? So it is China. Next is, which Indian player has won the bronze medal in the e-football event of the Asian Esports Games? So it is Pawan Kampeli. Next is, who has been approved by the central government to be made a judge of Supreme Court? Justice Manmohan. Which space agency Proba 3 mission has been launched by ISRO? It is the European Space Agency. Which portal did the government launch for fair trade and consumer protection? The name of the portal is eMap. Where has the Asia's first water transport service Uber Shikara has been launched? So it was launched in Dal Lake. Next is, who won the Esther Guardians Global Nursing Award of 2024? It is Maria Victor Juan. Which word has been declared by Oxford University as the word of the year? So the name of the word is brain rot. Who has got the tag of the World Craft City? It is Srinagar. Madhav National Park has become the 9th tiger reserve of which state? So Madhya Pradesh. Which Indian state has been declared as top destination for heritage tourism by UNESCO? So the name of the state is West Bengal. Who has won the men's single title in Syed Modi International Badminton Tournament? It is Lakshya Sen. Now, next is the 4th edition of the joint military exercise Harimo Shakti between India and which country has started on 2nd December? So Harimo Shakti is an exercise between India and Malaysia. Whereas the 16th conference of countries involved in the United Nations Treaty to prevent desertification started? So it started in Riyadh. Next is, which country has celebrated its 53rd National Day? It is UAE. Who has become the second Indian chess player to achieve 2800 yellow ratings? It is Arjun Erigasi. Who has become the largest source of FDI in India? It is Singapore. Ratapani has become the 8th tiger reserve of which state? So Madhya Pradesh. And the state government has increased the retirement age of judicial officer from 60 years to 61 years. This is Andhra Pradesh. So in this video we have completed the update of the month of January 2025 magazine. So you can watch this whole video जिसमें आपका पूरा का पूरा जनवरी तक का कवर हो गया है. If you want to see the videos for the month of December 2025 Speedy, so you can go to the playlist. A video has already been uploaded there last month. Thank you for watching. Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start one-liners for the month of December 2024. इन वन लाइनर्स को करने का तरीका बहुत यूनिक होने वाला है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको बताता हूं, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दीज करंट अफेयर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, मतलब नवंबर 30 जो कि लेटेस्ट है, वहाँ से बैक डेट जाएंगे हम 1 ईयर तक. सो क्रोनोलॉजी मेंटेन रहेगी आपकी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि करने को तो सिर्फ हम एक वन लाइनर्स करेंगे, बट उस वन लाइनर्स से रिगार्डिंग मैं और आपके 1 ईयर्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स करवा दूंगा. तो इससे ये होगा क्या कि एक कहने को तो आप सिर्फ एक वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप 4 से 5 करंट अफेयर्स साथ में रिवाइज कर लेंगे. ये तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड आपने सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था वीडियोज़ पे जो मैं ऐसे बना रहा था. तो इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट वंस अगेन. 1 ईयर का आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट तक आप देखना. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर्स. फर्स्ट वन लाइनर, हु हैज़ बिकम द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियन ऑन 30 नवंबर? तो करेक्ट आंसर इज दिविथ रेड्डी. अब चेस बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस साल. क्यों रहा है? तो चेस से रिलेटेड एक फीडे चैंपियनशिप हुई है अभी रिसेंटली की मैं बात बता रहा हूँ आपको. एंड यहाँ पे फीडे वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बने हैं हमारे इंडिया के डी गुकेश. इन्होंने हराया है चाइना के अपोनेंट डिंग लेरेन को. ठीक है, ये सेकेंड टाइम हुआ है जो कि इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन बने. फर्स्ट
चैंपियन ऑफ इंडिया वॉज विश्वनाथन आनंद इन द ईयर 2008-2009। इसके बाद 2024 में इस साल डी गुकेश हैज़ बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन, फिडे चेस चैंपियन। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है जसप्रीत बुमराह। साथ में ही आईसीसी इवेंट से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था एंड इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका। एंड 2023 का अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को डिफीट करके। इफ़ आई टॉक अबाउट द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2024 वुमेन का, तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी कहने को तो हमने सिर्फ एक वन लाइनर किया, इसके साथ हमने 3-4 और कंप्लीट कर लिए जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज द नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। तो ये कोची में इनॉग्रेट हुई है। नाउ कोची दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोची से मैं आपको कुछ करंट अफेयर बताऊंगा एंड देन वी विल मूव टू केरला। ठीक है, क्योंकि केरला, कोची हमारा जो है वो केरला में है। कोची में एक इम्पॉर्टेंट समिट हुई थी विच इज कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। तो ये पहली बार हुई है इंडिया में, इंडिया के कोची में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केरला से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि थिरुवनंतपुरम, ठीक है, इज इन न्यूज़ क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट समिट हुई है विच इज रिलेटेड टू हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कोजी कोड, तो कोजी कोड हैज़ बिन डेजिग्नेटेड द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोजी कोड को डेजिग्नेट किया गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्वालियर की, अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है जी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट केरला वंस अगेन, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले एक साल के मैं एक ही जगह बता देता हूँ। केरला से रिलेटेड है बांडीकूट। ये वर्ड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज फर्स्ट रोबोट विच इज गोइंग टू बी यूज फॉर मैन होल क्लीनिंग। सेकेंड इफ आई टॉक अबाउट केरला इज अमृत मिशन। ये केरला से रिलेटेड है एंड वाई इज इट रिलेटेड? इट इज अ मिशन फॉर एलिमिनेटिंग द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। थर्ड अगर मैं बात करूं केरला के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक्स बैंड रेडार हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी बहुत मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी, तो एक्स बैंड रेडार जो है वो वायनाड में लगाया गया है। ऑल्सो केरला हैज़ बीन द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर्स। यहाँ पे आपको मैंने कम से कम नहीं भी तो 15 करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा आपको। Now let us start with the next one liner. Which country has named the cyclone Fengal that has hit the Gulf of Bengal? तो ये फेंगल नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है। ठीक है। Now if I talk about मोचा, मोचा का नाम जो था वो ओमान ने दिया था। Now if I talk about सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहला तो ये नाम है रयन्ना बारनवी का। क्यों? क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट अरब वुमेन टू वेंचर इनटू स्पेस। मेरे साथ साथ आप नोट कर लेना, इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड करंट अफेयर विच इज़ रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया इज एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी। दिस इज एन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। Third thing is about NEOM. NEOM is the future mega city of Saudi Arabia. ठीक है. So these are some of the important current affairs regarding Saudi Arabia. Now let's move to America. Which country goalkeeper Alyasa Neher has announced her retirement? तो Alyasa Neher goalkeeper belongs from America. अब अमेरिका से भी रिलेटेड है नोआ लाइल्स। ठीक है, ही इज़ करेंटली द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी इन्होंने ओलंपिक्स में
गोल्ड भी जीता है फॉर अमेरिका, ही बिलोंग्स टू अमेरिका। नाउ अमेरिका में अभी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है ड्यू टू अ फंगस विच इज कॉल्ड कैंडिडा ऑरिस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कैंडिडा ऑरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ टाइप ऑफ फंगस। Second important thing is recently presidential election of America happened and 47th president अमेरिका को मिल गया है in the name of Donald Trump. Now you will have to know this कि Donald Trump belongs from the conservative party whereas his opponent was Kamala Harris and she belonged from the Democrats. ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था इन द 70th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप कौन से अमेरिकन स्टेट में अपनी स्पीच दे रहे थे? तो वो स्टेट था पेंसिल्वेनिया। ठीक है, ऑल्सो अमेरिका से एक और चीज़ रिलेटेड है इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड जिसका कि नाम है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। एंड ये क्या है कि अमेरिका की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि अमेरिका ट्रेड का प्रेफरेंसेस देता है टू डिफरेंट कंट्रीज। एंड अमेरिका ने अभी रिसेंटली थ्रेटेंड इंडिया कि हम आपको ये जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज होने लगेगा इंडियन गुड्स पे। ठीक है, तो अमेरिका के रिगार्डिंग ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। नाउ लेट्स मूव अहेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। Now, next is which country has signed the Riyadh Design Law Treaty? नहीं, एक सेकेंड, ये Where was the RAK Energy Summit held? तो ये हेल्ड हुई थी यूएई में। अब यूएई से रिगार्डिंग अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कुछ बेसिक पॉइंट्स आप देख लें कि यूएई का सबसे पहले इंडिया के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग सिविल यूज़, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का यूपीआई जो है वो इंटीग्रेट होने वाला है यूएई के फाइनेंशियल सर्विसेज से। थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया यूएई कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टर्म्स में क्या, तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। ऑल्सो यूएई की एक एआई रोबोट है जिसका नाम सारा है, ये आपको ध्यान में रखना है। And this AI robot is used for check-in assistance in airport. Also, UAE is famous for a grouping which is known as I2U2. I2U2 मतलब Israel, India, UAE and USA. अब ये I2U2 मैंने आपको क्यों बताया है क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑल्सो दिस I2U2 इज ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट क्वाड। एक क्वाड हमें पता है ना, क्वाड क्या है? 4 देशों का एक कोलैबोरेशन है विच इज़ यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड है। अभी मिडिल ईस्ट क्वाड बोला गया है I2U2 को एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको ध्यान में रखना है। नाउ आई होप देखो अभी ये 11 मिनट की वीडियो हुई है एंड नहीं भी तो हमने 45 प्लस करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका स्टैटिक भी कवर हो रहा है एंड करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये अप्रोच आपको कैसा लगा। नाउ विच कंट्री हैज साइंड द रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑन 29 नवंबर 2024? इट इज़ इंडिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको बता दूं कि इंडिया लीड रहा है, इंडिया का एक लीडिंग रोल रहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने में। सबसे पहला तो ISA है विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंडिया में है एंड इंडिया के इनिशिएटिव से इसे 2015 में लॉन्च किया गया था एंड इसका को चेयर फ्रांस है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2024 में इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज़ नोन एज इंटरनेशनल कैट्स अलायंस। ठीक है, इसमें 7 टाइप्स ऑफ जो हमारे लेपर्ड हैं, 7 टाइप्स ऑफ कैट्स हैं, ठीक है, उनको संरक्षण देने की बात की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने ये लॉन्च किया है। कुछ पोर्टल्स जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, एक तो है शी बॉक्स। शी जैसे कि नाम बता रहा है इज रिलेटेड टू
कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। एक तो शी बॉक्स पोर्टल का आप नाम याद रखें, एक आप दक्ष पोर्टल का नाम याद रखें, विच इज रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। ये दो पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द नागुसाबा गोरांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये बाली में सेलिब्रेट हुआ है। एंड बाली वी नो इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इस साल लाओस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि 21st इंडिया आसियान का समिट जो है वो लाओस में हुआ है, ठीक है। अब लाओस में भी एक जगह है लुआंग पाराबांग, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लाओस में है। इसके साथ साथ एक और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन न्यूज़, वियतनाम हमारा क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये लोथल में, लोथल विच इज़ एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, यहाँ पे ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इंडिया के साथ बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है वियतनाम की। तो वियतनाम इस साल इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। Now, next is who has become the youngest player to be sold in the history of IPL auction. नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी। He hails from समस्तीपुर and 13 years इनकी एज है। Who has become the most expensive player to be sold in the history of IPL auction? ऋषभ पंत। If I talk about the IPL winner of 2024, तो ये हमारे कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस फाइजर प्राइज 2024, तो प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रह्मोस एयर स्पेस, डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला एक्सपोर्ट जो इंडिया ने किया है ब्रह्मोस मिसाइल का, वो अभी रिसेंटली फिलीपींस को किया है। फिलीपींस के बाद जो सेकेंड कंट्री बनी है विच इज़ गोइंग टू रिसीव ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया इज अर्मेनिया, ठीक है। लेकिन ये अर्मेनिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नाडा हैज सस्पेंडेड इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स के लिए इनको सस्पेंड किया गया है। ऑल्सो दिस ईयर रेसलिंग इज इन न्यूज़। वाई इज इन ये न्यूज़ में है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ओलंपिक्स हुए हैं अभी, एंड ओलंपिक्स में 2 इवेंट्स हुए हैं रेसलिंग से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कि जो साक्षी मलिक जी हैं, इन्होंने 51 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इज रिगार्डिंग अमन शहरावत। ये इन्होंने 57 केजी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो रेसलिंग के रिगार्डिंग ओलंपिक्स इस साल इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 2 मेन फैक्ट्स थे आपको ये बता दिए हैं। नाउ हु हैज़ वॉन द चाइना मास्टर्स 2024? तो ये एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। नेक्स्ट इज एमा मैक्यून हैज़ रिटायर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन ऑफ विच कंट्री? तो ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन थी। अब ऑस्ट्रेलिया इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की मेट स्कीम को आप ध्यान रखेंगे। अब मेट स्कीम का मतलब क्या है? इट इज़ मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। सेकेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया तो इम्पॉर्टेंट है कैरिस वुमेरा। अब ये कैरिस वुमेरा क्या है? ये फैक्ट्स आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत रिसर्च की है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो कैरिस वुमेरा ये क्या है? ये पहली बार इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कैरिस वुमेरा, ये नाम आप याद रखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया ने 16 ईयर्स से कम के लोगों या बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और ये लॉ पास हो चुका है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये रही। चौथी, कोरल रीफ्स आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसका नाम है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया का फ्रेजर आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्रेजर आइलैंड कौन से कंट्री में है, तो आप आंसर करोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लिए। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। हु हैज़ वॉन द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जीता है। रितिका हुड्डा हैज़ वॉन विच मेडल इन द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप? तो इनको गोल्ड मेडल मिला है। अब मेडल्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को एक भी गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर हमें एक मिला है एंड बाकी जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट रैंक ऑफ इंडिया इन दी ओलंपिक्स तो 71st रैंक रहा है अमंग डिफरेंट कंट्रीज। पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन रही है एंड इंडिया का 18th रैंक रहा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी अबाउट ओलंपिक्स इन इंडिया। हु हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 रैंकिंग? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक मिला है। नेक्स्ट इज जी बाला सुब्रमण्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये मालदीव्स। अब मालदीव्स इस साल न्यूज़ में है, क्यों? इनके प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि एंटी इंडियन प्रेसिडेंट बन गए वहाँ पे। मोजिज़ो इनका नाम है। एक बस छोटा सा नाम ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को मालदीव्स ने ये बोला था कि आप अपनी जितनी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है एंड मिलिट्री पर्सनल हैं इनको आप विड्रॉ करिए हमारी कंट्री से। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मालदीव्स में एक ट्रैपिंग जोन है, ठीक है, जहाँ पे 400 प्लस इकोसिस्टम का हमें अवेलेबिलिटी मिली है। दैट इज़ वाई मालदीव्स दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश द गार्बेज टैक्स? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस साल न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है आइए देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेकेंड स्टेट बना है आंध्र प्रदेश किस चीज़ का? टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेट कौन सा था, तो वो बिहार था। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एक लेके आया एक सेमी कंडक्टर पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इफ आई टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश देन आंध्र प्रदेश को मिला है गुलबैकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाउ एक मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट भी न्यूज में रहा है, दिस इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। नाउ विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ फॉर क्लाइमेट एक्शन? तो करेक्ट आंसर हमारा है इंडसइंड बैंक। नाउ हु हैज लॉन्च द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन? तो ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने। नाउ हु हैज वॉन द डेविस कप ऑफ 2024 टाइटल? तो ये जीता है इटली ने। इटली इस साल इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि G7 की समिट हुई है यहाँ पे एंड ये G7 की समिट कहाँ पे हुई है? ये हुई है अपुलिया विच इज़ इन इटली। ऑल्सो इंडिया एंड इटली का एक इनिशिएटिव की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे विच इज़ नोन एज कॉटन रूट इनिशिएटिव। ये इंडिया एंड इटली के बीच में हुआ है टू प्रमोट दी ट्रेड टाइज। अभी इटली न्यूज़ में है, अगर आप स्टेट पीएससीज की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इटली की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए। एक नज़र मार लो यहाँ पे भी, तो बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है इटली की? तो वो है स्विट्ज़रलैंड, देन आ गई हमारी फ्रांस, देन हमारी आ गई ऑस्ट्रिया, देन आ गई स्लोवेनिया, फिर आ गई हमारी वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी का जैसे मैं नाम लूँ तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री एंड सैन मैरियो, ये जो हैं दीज आर द कंट्रीज विच बॉर्डर इटली। नाउ ट्रायल बेसिस में मैं इस वीडियो को 25 मिनट से कम का ही रख रहा हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये 25 to 30 मिनट्स वाली लेंथ जो है इस वीडियो के लिए सही है या आपको लंबी वीडियोस चाहिए अराउंड 50 मिनट्स या 1 घंटे की, तो मैं उसी हिसाब से आगे वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक मैं रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना एंड अपने वैल्यूएबल सजेशंस प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीडी वन लाइनर सीरीज़। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हम बहुत यूनिक मेथड से इन वन लाइनर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वन लाइनर्स को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एंड देन जो भी वन लाइनर होता है उसके रिगार्डिंग स्टैटिक प्लस
अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उसी स्टेट या उसी कंट्री से रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। इससे होता क्या है कि आपका स्टैटिक भी कवर हो जाता है एंड देन करंट अफेयर्स भी आपका होलिस्टिकली कवर हो जाता है। तो कल हमने इटली तक कंप्लीट किया था एंड इस सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट वन लाइनर्स को शुरू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच पार्ट 1 फर्स्ट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, which state government has announced a new pension scheme for senior citizens? करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली है। अब दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं पिछले एक साल में। आइए उन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो 2025 का पारा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाला है। सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, तो इसको फर्स्ट रैंक मिला है इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, दिल्ली के साथ साथ ये जो है बैंगलोर का भी फर्स्ट पोजीशन रहा है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। नाउ न्यू बबल टेक्नोलॉजी दिल्ली की इज इन न्यूज। न्यू बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड टू वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ये वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक जो है वो दिल्ली के जूज में, जो भी जू हैं वहां पे इम्प्लीमेंट की जाने वाली है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, ये हमारे दिल्ली में कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये भी दिल्ली में कंडक्ट हुई है। देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू जस्ट कीप अ कॉपी विथ योर सेल्फ एंड राइट दीज एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, ताकि आपका अच्छे से ये कवरेज हो जाए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। इसका 7th सेशन जो है वो नवंबर में हुआ है इन दिल्ली। नाउ बाकी की करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़, आप जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स अभी बताए हैं, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आए तो जस्ट वीडियो को रिवर्स में जाइए, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट आतिशी मार लेना। शी हैज़ बिकम द थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फर्स्ट कौन थी? सुषमा स्वराज एंड सेकेंड कौन थी? वो थी हमारी शीला दीक्षित जी। नो, इंडिया का फर्स्ट संकन म्यूजियम ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे? तो हुमायूंस टॉम्ब पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज इन न्यूज। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एग्जाम्स में ऐसे पूछते हैं कि ये डिक्लेरेशन का नाम दे देंगे और ये आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली। ठीक है, आइए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। हाउ मेनी यंग आर्टिस्ट वेयर अवॉर्डेड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार? 82 लोगों को मिला है। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज ऑन नवंबर 24? तो 2 लोगों को ये मिला है, डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद, इन दोनों को ये मिला है। नाउ विच कंट्री एंड इंडिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन लोकल करेंसी? तो मालदीव्स। मालदीव्स के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स है ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ हु हैज़ एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स फॉर द ACC टूर्नामेंट? तो वो सोनी इंडिया को मिला है। नेक्स्ट इज वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव द वर्ल्ड पीस अवार्ड? ही रिसीव्ड इट इन अमेरिका। ऑल्सो अमेरिका में क्वाड 2024 की समिट हुई है वॉशिंगटन में। दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया गया है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज द RBI हैज इंक्रीज द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर UPI 123 पे फ्रॉम 5,000 to 10,000। UPI पे इज अ फीचर दैट इज अवेलेबल ऑन फीचर फोन्स। जो डायल पैड वाले फ़ोन्स होते हैं उनमें UPI ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने का एक प्रोसेस है।
नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फूड बॉर्न डिजीज अ नेशनल डिजास्टर। तो साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया है। इफ आई टॉक अबाउट डिजीजेस, तो नोमा की मैं बात करूंगा। नोमा को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नोमा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मलेरिया, which country has been the among the most leading countries in eliminating malaria? तो सबसे पहला तो इजिप्ट, ठीक है, एंड केबो वर्डे, ठीक है। दीज टू कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड मलेरिया। एंड इफ आई टॉक अबाउट लेप्रोसी, सो जॉर्डन, अभी जॉर्डन ने रिसेंटली लेप्रोसी को इरेडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर बाय डोनाल्ड ट्रंप? स्कॉट बेसेंट। Who has become the 104th full member of the International Solar Alliance? अर्मेनिया को डिक्लेयर किया गया है 104th मेंबर। इफ आई टॉक अबाउट अर्मेनिया, अर्मेनिया का डिस्प्यूट चल रहा है विथ अजरबैजान। अजरबैजान इज अ कंट्री, ठीक है, एंड द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान इज कॉल्ड नागार्नो काराबाख, ठीक है। ये बहुत न्यूज में रहा है, तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो यू नीड टू नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ अर्मेनिया। Armenia is a landlocked country, ठीक है। I hope you understand this. And if I talk about the International Solar Alliance, it was launched in the year 2015 by India and France. Recently जो है International Solar Alliance के 120 प्लस मेंबर्स हैं। ऑल्सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दो इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच आर इन न्यूज़। ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने लीड किया है, इंडिया ने फॉर्म किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो व्हाट आर दीज टू इनिशिएटिव? फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। आई होप कि इससे आपके, मैं उम्मीद करता हूँ 10 प्लस करंट अफेयर्स आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। सो ये आप ध्यान में रखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। Who has topped the Sustainable Business Index of the year 2024? तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग टू इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इज रिसेंटली न्यूजीलैंड हैज पास्ड एन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ठीक है। एंड अभी अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ या यूट्यूब यूज़ करते होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लेडी पार्लियामेंटेरियन है न्यूजीलैंड की, जो एक ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म करती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वो तसो मोरीरी ट्राइब को बिलोंग करती हैं। तो अगर आपसे ये ट्राइब्स पे क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर करोगे कि जो तसो मोरीरी ट्राइब्स हैं वो न्यूजीलैंड के ट्राइब्स हैं। और ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ तो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ रिसेंटली। अभी रिसेंटली जो शॉम्पेन ट्राइब्स हैं, दीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, इन्होंने रिसेंटली वोट किया है इन दी 18th लोकसभा, ठीक है। तो ये आपको शॉम्पेन ट्राइब्स का पता होना चाहिए। अंडमान की अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आर वेरी फेमस है, ठीक है। एक तो शॉम्पेन है, सेंटेनलीज हैं, ये सबसे ज़्यादा वायलेंट है एंड इन्होंने अभी 10 साल पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस करके एक फॉरेन नेशनल को मार भी दिया था। जारवाज हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्राइब विच रिजाइड्स इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान से ही अगर मैं बात करूं तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि अंडमान की जो राजधानी है दैट इज पोर्ट ब्लेयर, उसको रीनेम करके श्री विजयापुरम के नाम पे रख दिया गया है। तो देखिए ये एक आपको वन लाइनर पे मैंने कितना कुछ बता दिया। आई होप ये बेनिफिशियल लग रहा होगा आपको। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये दिस मेथड ऑफ टीचिंग। एंड कोई सजेशंस हो तो वो भी आप बता सकते हैं ना। नेक्स्ट इज हु विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन द ईयर 2025? तो वो बिहार होस्ट करने वाला है। बिहार इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि सबसे पहला तो यही हमने देखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। सेकेंड, बिहार में शुरू हुआ है अभी महिला संवाद प्रोग्राम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार, तो ये बिहटा विच इज़ इन पटना, यहाँ पे ओपन हुआ है। सेकेंड टाइगर रिजर्व भी बिहार को मिला है, ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड इन कैमूर। एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार का
एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो नीलगाय को अभी बहुत सारी नीलगाय को अराउंड 70,000 नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स को मारने का ऑर्डर किया गया है, क्योंकि वो दे डिस्ट्रॉय दी क्रॉप्स. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन कन्फर्ड द ऑनररी जनरल रैंक बाय आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल की नेपाल ने दिया है. नाउ नेपाल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है. अभी रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं केपी शर्मा ओली. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो इंडिया के साथ नेपाल की एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है विच इज नोन एज सूर्य किरण. अगेन अगर मैं नेपाल की बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेपाल ने रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट किया है टू बांग्लादेश. अगर मैं और नेपाल से रिलेटेड बात करूं तो फुलकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जहां से नेपाल विल सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार. इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, तो नेपाल एंड इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारी है, ऑब्वियसली हमारी ही है, बट नेपाल का कहना है कि ये तीनों जो एरियाज हैं वो नेपाल में आते हैं. उन एरियाज का नाम है लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पुआ धारा. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नेपाल के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए. नो नेक्स्ट इज वेयर वॉज द अमूर फैल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मणिपुर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन? तो ये साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ. इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट स्पेस मिशन, तो स्लिम जो है ये जापान का एक स्पेस मिशन है टू मून. इफ आई टॉक अबाउट चैंग ई स्पेस मिशन, दिस इज ऑफ चाइना एंड इसका एम है टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. इफ आई टॉक अबाउट आदित्य L1, it is India's first mission to the sun. If I talk about Perseverance rover, this is a rover which was sent to Mars. ठीक है, स्पेस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कारमान लाइन. दिस इज अ लाइन विच डेजिग्नेट्स द स्पेस बाउंड्री जो कि बियॉन्ड 100 किलोमीटर है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ आगे प्रोसीड करते हैं. वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट हुआ है सोनीपत में बाय द OP जिंदल यूनिवर्सिटी. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें. एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट हरियाणा इज हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एक्वायर ऑल द क्रॉप्स एट MSP. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सारे क्रॉप्स को एक्वायर करने का हरियाणा ने अनाउंस किया है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. Who has been appointed as the global brand ambassador of climate advisor by the United Nations? Shubh, पंजाबी रैपर. Now, who has launched the Vision Portal? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है विजन पोर्टल. यही अगर मैं बात करूँ शी बॉक्स पोर्टल की, तो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है. किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन ने. ठीक है, एक शी बॉक्स पोर्टल को आप ध्यान में रखेंगे. Who has been appointed the chairman of newly formed election commission of Bangladesh? AMM Nasiruddin को बनाया गया है. A stand has been named in the Eden Garden Stadium in the name of which female cricketer? तो झूलन गोस्वामी. Now अभी झूलन गोस्वामी ने recently retirement announce की है. She was the player of Indian women's cricket team. If I talk about retirement, तो यहाँ पे आपको PR श्रीजेश का नाम पता होना चाहिए. Who has been the Indian goalkeeper हॉकी टीम के? इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है. एंड अभी रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है. एक और प्लेयर हैं जिन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो है टिम साउदी एंड ये न्यूजीलैंड के हैं. तो आपको इन तीनों का नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये तीनों बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्समैन रहे हैं. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? इक्वाडोर ने ये चीज़ अनाउंस की है. नाउ इक्वाडोर इज अ कंट्री. सबसे पहले तो मैं बता दूं, इक्वाडोर का नाम इक्वेटर पे आ रहा होगा,
आया है। अब इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसमें देख लें आप, इस एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स में यहाँ से। नाउ इक्वेटर्स पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले तो हमने देख लिया इक्वेडर सबसे पहले, देन आ गई हमारी कोलंबिया, फिर आ गई हमारी ब्राज़ील, नेक्स्ट आ गई हमारी साओ टोम, फिर आ गई हमारी गेबॉन, फिर आ गई हमारी कॉन्गो, फिर आ गई हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आया हमारा युगांडा, फिर आया हमारा केन्या, देन आया हमारा सोमालिया, देन आया हमारा मालदीव्स, फिर आया हमारा इंडोनेशिया। अभी सिर्फ एक एशियन कंट्री है जहां से ये इक्वेटर पास होता है, दैट इज इंडोनेशिया। एक और आइलैंड है मालदीव्स, एंड देन हमारा किरिबाती। तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर पास होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सब का नाम पढ़ लेना आप, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। सो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब नाउ प्रसार भारती हैज लॉन्च्ड इस ओटीटी प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम, वेव्स नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म इज केरला, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सिल्वेनी बर्टन हैज गिवन द हाईएस्ट नेशनल ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये डोमिनिका के हैं। नेक्स्ट इज हु हैज टॉप द आईसीसी T20 ऑल राउंड रैंकिंग्स, हार्दिक पांड्या। इन विच स्टेट द नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट हैज बीन चेंज टू श्रीभूमि, तो असम। असम भी बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग असम। नाउ असम में ही इंडियाज फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन को टैग किया गया है, उस पर टैग लगाया गया है। एंड ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये दिसंबर 20 की ही है, तो नेक्स्ट मंथ में शायद आपको स्पीडी में देखने को मिले, बट अभी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। नाउ सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग असम इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक अ स्टेट कमीशन फॉर राइट्स टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट असम इज एडवांटेज 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा समिट, ये हमारे असम में कंडक्ट हुई है। नो एडिशनली इफ आई टॉक अबाउट अ स्कीम, तो निजुत मोइना स्कीम, ये असम की फ्लैगशिप स्कीम है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असम। अब प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, 10th रैंक आया है इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में। इफ आई टॉक अबाउट हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो 105th रैंक है। इफ आई टॉक अबाउट इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स हमारा कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है वीपो, एंड इंडिया का इसमें 39th रैंक है, ठीक है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, आपको मुझे बताना है कि इंडिया का ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या रैंक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। नाउ आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द पार्टनर कंट्री इन द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, तो पार्टनर कंट्री डिक्लेयर किया गया है जापान को। नाउ जापान के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अभी जापान में अपहीवल चल रहे हैं, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको एक जनरल आइडिया लगेगा पिछले एक साल में जापान में क्या क्या हुआ है, ठीक है। जापान में रिसेंटली अ न्यू टेरासोर स्पीसीज विच इज़ अ डायनासोर स्पीसीज, ये जापान में डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट इंडिया एंड जापान का एक डिफेंस टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली डिफेंस टेक्नोलॉजी पे किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो आप उसको जापान मार्क करेंगे। रिसेंटली पीएम जो हैं जापान के री इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा। इसके पहले हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, हिज नेम वॉज फुमियो किशिदा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जापान इज जापान यूज टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि अब नहीं रही। अब कौन सी है, अब जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है जापान को। एंड
Japan is now the fourth largest economy and Germany is the third largest economy. ठीक है. Also the age of people in Japan and population, age नहीं, population in Japan is rapidly declining. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट आगे का. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क बीइंग बिल्ट. तो ये लखनऊ में बिल्ट हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024. तो इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है एंड रनर अप जो है वो चाइना रहा है. ये हुई कहाँ थी? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी. दिस हैपेंड इन बिहार. बिहार में कंडक्ट की गई थी, बिहार के राजगीर में. इफ आई टॉक अबाउट एशियन हॉकी चैंपियनशिप मेल की, मेंस की, तो ये चाइना में ही कंडक्ट कराई गई थी एंड इसके फाइनल्स में भी इंडिया वर्सेस चाइना का मैच हुआ था जिसमें कि चाइना जो है वो रनर अप थे एंड इंडिया को जो है वो गोल्ड मेडल मिला था. ठीक है. सो दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉकी जो कि चल रहा है इंडिया में. नाउ नेक्स्ट इज विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज रिटायर्ड. तो राफेल नडाल ने अभी रिटायरमेंट ली है. इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में टेनिस में गोल्ड किसको मिला है? तो वो मिला है नोवाक जोकोविच को. ठीक है. ही हैज डिफीटेड कार्लोस अल्कराज. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक्स है ये. एंड ओलंपिक्स आपको पता ही होगा पेरिस, फ्रांस के पेरिस में कंडक्ट किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री ऑनर्ड पीएम मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस. गयाना ने जो है वो पीएम मोदी को अवार्ड दिया है. इफ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज तो ग्रीस ने भी पीएम को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था, रशिया ने दिया था. ठीक है. एंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे प्रेसिडेंट को कौन कौन सी कंट्री ने दिया? तिमोर लेस्ते ने दिया, बाली ने दिया. ठीक है. तो ये दोनों अलग अलग हैं, आप इनको ध्यान में रखना. क्वेश्चन की डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द HADR एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024. ये अहमदाबाद में इनॉग्रेट हुई है. अब बात यहाँ पे अहमदाबाद की है तो आइए गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हम देखते हैं. सबसे पहला तो गुजरात एंड महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक है इन दी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन. ठीक है. कौन सी स्कीम के अंदर? PM सूर्य घर स्कीम. ठीक है. गुजरात एंड महाराष्ट्र का यहाँ पे फर्स्ट रैंक है इन इंस्टॉलेशन ऑफ द रूफटॉप सोलर अंडर द PM सूर्य घर स्कीम. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गुजरात इज द फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि एक्टिवेट हो चुका है गुजरात के सूरत में. Now another important information about Gujarat is about a product which has been given GI tag and उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? घर चोला. इट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ. ठीक है. ऑल्सो गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज इज ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया है इन गुजरात. सो these are some of the most important information regarding Gujarat. Let's now move to the next big thing, that is in which state has the joint military exercise पूर्वी प्रहार been organized. ये ऑर्गेनाइज हुई थी हमारे अरुणाचल प्रदेश में. अब अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर आपको बता देता हूँ मैं. सबसे पहला तो तातो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये इनॉग्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में. सेकेंड इज अबाउट दी सेला टनल. हाईएस्ट टनल बनाई जा रही है एट अराउंड 13,000 फीट. ये अरुणाचल प्रदेश में है. इफ आई टॉक अबाउट दी अदर पासेज विच आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहला तो सेला पास है, फिर है शिपकी ला पास, देन कम्स बम ला पास, फिर आता है हमारा बूंदी ला पास. ये चारों के चारों पासेज हमारे कहाँ हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है.
अरुणाचल प्रदेश में ही रिसेंटली एक एल्यूमिनियम पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, तो अरुणाचल प्रदेश। नाउ हु हैज वॉन द क्राउन ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024, तो शिवांगी देसाई को ये मिला है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड, ये मिला है कोल इंडिया को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट गोल्ड प्राइज की, तो वो मिला है आलोक शुक्ला को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज विच स्टेट विलेज नेम दुधमाराज हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन बेस्ट टूरिस्ट विलेज स्टेटस, तो ये विलेजेस कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, तो ये जो दुधमाराज विलेज है ना, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़ इज इंडियन रोड्स कांग्रेस, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मेरे कंफ्यूजन हो गया, वो जो एल्यूमिनियम पार्क की मैंने बात की थी ना, वो छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट एरर। ठीक है, गलती से मैंने अरुणाचल प्रदेश में बता दिया। छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम पार्क्स बनाए गए हैं। ठीक है, नो नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, गेबन ने अप्रूव किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेक्सिको की, तो दो चीज़ें याद रखना। अब मुझे पता है गेबन और मेक्सिको रिलेटेड नहीं है, बट आप ध्यान रखना। क्लॉडिया शेनबॉम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेक्सिको। ऑल्सो मेक्सिको ने एक लॉ पास किया है जिसमें कि जजेस आर गोइंग टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, जजेस आर गोइंग टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये दोनों के दोनों चीज़ें मेक्सिको से रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज हु हैज टॉप द फोर्थ नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप, तो वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्ट बंगाल इस सबसे पहले तो अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है बंगाल में, दैट इज बंगला बारी स्कीम। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू हाउसिंग फॉर रूरल एरियाज। सेकेंड इज वेस्ट बंगाल हैज बिकम ए हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन, एंड ये डेजिग्नेट किया है इसको यूनेस्को ने, वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल has become the first state to launch an anti-rape bill, and इस बिल का नाम है अपराजिता बिल। ठीक है, तो अपराजिता बिल की अगर बात कहीं होगी तो आपको ये समझ जाना है कि दिस इज अ बिल ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज फॉर अगेंस्ट द रेप दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेयर हैज एयर एक्सपो 2024 स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुआ है अबू धाबी में। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने होस्ट करने वाला है द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। नाउ रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, चलिए ये भी देख लेते हैं। विच स्टेट गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये छत्तीसगढ़ में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड अ सिलोफार पंचामृत कलश टू द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अनाउंस टू गिव वीजाज टू 2 लाख स्किल्ड पीपल, जर्मनी ये वीज़ा देने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो अराउंड 34 मिनट्स की हो गई है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएंगे इसके। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो ऑफ द वन लाइनर सीरीज। इफ़ यू हैव वॉच्ड वीडियो 1 and 2 यू विल ऑलरेडी नो कि हमारा वे ऑफ लर्निंग क्या है। सबसे पहले तो हम जो है वो करंट अफेयर्स को, वन लाइनर्स को कंप्लीट करते हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होता है या स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन सम पॉइंट्स। इससे होता क्या है कि आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों बहुत एफिशिएंटली रिवाइज होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दोज 2 पार्ट फर्स्ट। उन दोनों पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। हमने एंड किया था इस करंट अफेयर पे, जर्मनी पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ हु वॉन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, तो करेक्ट आंसर हमारा है ओडिशा। नाउ एक साल में पिछले ओडिशा के रिलेटेड कौन कौन सी करंट अफेयर न्यूज में रही हैं। सबसे पहले तो उड़ीसा हैज लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम। तो अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे आता है कि सुभद्रा स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप आंसर करेंगे ओडिशा।
The second thing is Smile scheme is also related to Odisha. Third important point is tsunami ready villages. ठीक है, ओडिशा को डेजिग्नेट किया गया है, ओडिशा के विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द मनकाडिया कम्युनिटी विच इज द कम्युनिटी ऑफ ओडिशा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओडिशा में फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इज टू बी ओपन. एंड लास्ट में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है ओडिशा के चांदीपुर में. ठीक है, so these are all important information regarding Odisha in past 1 year. I hope you have understood this. अब Odisha is a coastal state, तो मैं आपको बता दूं कि longest coastal state जो है हमारा वो गुजरात है, जिसकी border around 1600 किलोमीटर्स है. ठीक है, if I talk about जगन्नाथ पुरी टेम्पल, सो इट वॉज बिल्ड बाई गंगा डायनेस्टी एंड इनके रूलर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपको नहीं पता है तो डू मेंशन कमेंट्स में. ठीक है, मैं आंसर पिन कर दूंगा. नाउ लेट अस प्रोसीड. वेयर इज द नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विच वॉज इन न्यूज. तो नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कर्नाटका में है. अब कर्नाटका इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है? कुछ करंट अफेयर्स हैं, आइए देखते हैं. स्विफ्ट सिटी इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका. What are these swift cities? So these are various cities that has been made keeping in view the startup ecosystem in India. ठीक है, and if I am talking about startups, you will have to know, आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो हमारे इंडिया में है. फर्स्ट पे यूएसए आता है, सेकेंड नंबर पे चाइना है एंड थर्ड पे लार्जेस्ट स्टार्टअप जो है वो हमारे इंडिया में है. Now, next important current affair is about the AI tool that Karnataka government has developed. ठीक है, the name is Shiksha Copilot and this is for the teachers. ठीक है, next important news about Karnataka is OV trap basket. ठीक है, and this OV trap basket is related to curtail the rising dengue cases. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होगा ईवीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं. सबसे बेहतर ईवी चार्जिंग स्टेशंस की फैसिलिटी इज इन कर्नाटका, ये भी आप ध्यान रखेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने टारगेट रखा है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का. ठीक है, चाइना का ये टारगेट अराउंड 2060 का है, इंडिया का 2070 का है. ठीक है, so these are all the important information about Karnataka. Now let us proceed. Which country has launched the Global Energy Efficiency Alliance? So this has been launched by UAE. UAE की करंट अफेयर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले 2 वीडियोस में. तो अब इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं. Which country has returned more than 1400 artifacts looted from India? अमेरिका has returned. अमेरिका की भी मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 एंड 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है. अब वो ऑप्शंस रिपीट होंगे तो उनको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है. नो, हु हैज़ बिकम द मिस यूनिवर्स 2024? विक्टर केगर थैलविग, करेक्ट है. ADB has increased the climate loan with US and which country? जापान. अब जापान की मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन का इशू है, मैंने बता दिया था. इसके अलावा जो है वो फूमियो किशिदा इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये भी मैंने बताया था आपको. ऑल्सो जापान इज रिसेंटली द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जापान पहले 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, बट अब जर्मनी ने ओवरटेक कर लिया है जापान को टू बी दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड जापान इज नाउ द 4th लार्जेस्ट. नाउ Air India has officially completed its merger with Vistara Airlines. Prime Minister Modi has been awarded the highest national honor of which country? तो नाइजीरिया का ऑनर मिला है इनको. Who signed the Green Energy Agreement at COP29 Baku? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, इन तीनों ने साइन किया है. If I talk about Azerbaijan, तो अजरबैजान is in news because of its war with Armenia. Now Armenia के साथ में एक disputed territory है which is known as Nagorno-Karabakh. ठीक है, which is in न्यूज़ नगार्नो कारबाख. ठीक है ना. नाउ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान का एक एरिया है विच इज नोन एज लचन कॉरिडोर, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज़. एंड कजाकिस्तान इस साल न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि SCO की समिट हुई है कजाकिस्तान में.
कजाकिस्तान की सिटी की मैं बात करूँ जहाँ ये सबमिट हुई है तो वो अस्ताना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। और अगर मैं बात करूँ टेम्परेट ग्रासलैंड की जो कि सेंट्रल एशिया में होते हैं, उनका नाम स्टेपी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Who has become the India's second highest T20I wicket taker? करेक्ट आंसर इज अर्शदीप सिंह। एंड T20 के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने जीता है अभी रिसेंट का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, एंड ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बाई डिफीटिंग इंडिया, एंड ये कंडक्ट कहाँ हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्रिकेट। क्रिकेटर टीम सऊदी ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट? तो करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। एंड न्यूजीलैंड से इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है, द सो मोरीडी ट्राइब्स, जो कि रेड इंडियंस एक ट्राइबल कम्युनिटी है ऑफ द न्यूजीलैंड, जिनका प्रोटेस्ट का वे बहुत फेमस है। दे प्रोटेस्ट बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, जो बहुत आपने, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा ये चीज़। तो वो जो ट्राइब है वो तसो मरूरी ट्राइब है, एंड दीज ट्राइब्स बिलोंग फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऑल्सो अगर मैं ट्राइब्स की बात करूँ तो इंडिया में शॉम्पेन ट्राइब इज इन न्यूज़, एंड वाई इज दैट, क्योंकि शॉम्पेन्स हैव voted, Shompeans of Andaman and Nicobar Islands, these have voted for the first time in the 18th Lok Sabha elections. Now, next is who has become the top global greenhouse gas emitter? Correct is Shanghai. Indonesia and which country has started the joint naval exercise Keris Woomera in 2024? So, Indonesia and Australia both have started the Keris Woomera. Indonesia is particularly in news this year. Why is that? क्योंकि इसने कैपिटल को शिफ्ट किया है. The capital has been shifted to East कालीमतान. ये आपको पता होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया इज इन न्यूज़ वाई, क्योंकि अंडर 16 ईयर्स के एज के जो भी बच्चे हैं दे हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया. ऑल्सो मेट्स स्कीम is related to Australia. These points you have to remember. Also, Australia is famous for Great Barrier Reef. It is the largest coral system in the world. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये प्रेजेंट है. Now, Bali Jatra Fair is organized in Odisha. In which state the militant group Hientrap National Liberation Council has been banned for 5 years. This is a group of Meghalaya. ठीक है, मेघालय आपको ध्यान में होना चाहिए. मेघालय शेयर्स बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश. अगर बात बांग्लादेश की आई गई है तो बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स हम देख लेते हैं. वेस्ट बंगाल, देन कम्स असम, देन कम मिजोरम, त्रिपुरा एंड देन मेघालय. ठीक है, ये सारे स्टेट्स जो हैं 1 2 3 4 5 स्टेट्स बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं. उसमें से त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको ध्यान में होना चाहिए ये. यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज 24 विलेजेस ऑफ विच स्टेट एज सुनामी रेडी. तो ओडिशा के विलेजेस हैं ये. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कम एंड एस्टैब्लिश सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स. करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. ऑल्सो हिमाचल प्रदेश से चेनाब राइज करती है, यमुना राइज करती है, ठीक है, रावी राइज करती है. कौन सी हिमाचल प्रदेश से राइज नहीं करती है? तो मैं 3 नाम ले रहा हूँ यहाँ पे. एक तो इंडस रिवर है, एक हमारी सतलज है. ये दोनों राइज करती हैं हमारी तिब्बत से. ये आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी तो आप सब खुद से सॉल्व कर लोगे. एट हिमाचल प्रदेश में देयर इज अ डैम विच इज नोन एज पोंग डैम विच इज मेड ऑन रिवर ब्यास. ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश. फास्ट बॉलर मंसूर काम्बोज ऑफ विच स्टेट हैज टेकन 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स इन रणजी ट्रॉफी. हरियाणा के हैं ये. ऑल्सो हरियाणा हैज बीन द फर्स्ट स्टेट टू एक्वायर 24 क्रॉप्स ऑन एमएसपी. ऑल द क्रॉप्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, 24 क्रॉप जिसमें एमएसपी मिलती है, हरियाणा वो सबको एमएसपी पे रिक्वायर करने वाला है. विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस रिटायरमेंट? प्रजनेश गुणेश्वरन. CBSE has reduced the syllabus of class 10th and 12th by how much percent? 15%. ये सब तो ऐसे generic point है. A special logo has been issued on the completion of 75 years of diplomatic relations between India and which country? तो Philippines. Also Philippines को ब्रह्मोस मिसाइल दी है इंडिया ने, which is very much important this year. ठीक है, and ब्रह्मोस Philippines is the first country to receive ब्रह्मोस मिसाइल. इसके बाद अर्मेनिया को भी इंडिया देने वाला है ब्रह्मोस.
ना बोयता बंधन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा, ओडिशा में ही हीराकुद डैम है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एंड ओडिशा में ही चिलिका लेक है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक जहाँ पे वल्नरेबल स्पेसीज जो ऑलिव राइडली टर्टल होते हैं ना, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। On November 15, which state foundation day was celebrated? So Jharkhand was celebrated from Bihar in the year 2000, and most of the mineral reserves, mineral resources are there in Jharkhand. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है झारखंड हमारा किसका? कोल का, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। झरिया माइंस इन राजस्थान इज वेरी मच फेमस, ठीक है, न्यूज में भी रहा है। तो झरिया में क्या है? कोल माइंस है, ये आप ध्यान रखेंगे। वेयर हैज द फेमस जोलजीबी फेयर बीन इनॉग्रेटेड? तो उत्तराखंड में इनॉग्रेट हुआ है। ऑल्सो उत्तराखंड इज इन न्यूज दिस टाइम, क्यों? क्योंकि एक तो एम्स देहरादून के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताऊं तो उत्तराखंड की एक स्कीम आई है पेरोल लाओ पैसे पाओ, जिसमें पेरोल से रिलेटेड आप जो भी स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये स्कीम जारी की है। तो दिस स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। Now, who have created the eco-friendly biodegradable foam? IISc Bangalore. Next is ठीक है। Which country has launched the Global Energy Efficiency Index? UAE ने लॉन्च किया है। एंड UAE has also become the country जिसने रुपे एंड UPI सर्विसेज को लिंक किया है अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। एंड UAE में भी बाप्स हिंदू टेम्पल विच इज़ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। इंडिया ने UAE के साथ न्यूक्लियर डील साइन की है विच विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द सिविल पर्पसेस, ठीक है, कोई भी मिलिट्री उसमें कोलैबोरेशन नहीं है, सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर डील साइन की है। वेयर इज़ द न्यूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चलो ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया था, हाँ ओके डन, ठीक है, ये हमने कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे करने का तरीका ऐसा है ना कि वी आर डूइंग फ्रॉम नवंबर 2024 जो दिसंबर की है, इससे बैकडेट जाके हम दिसंबर 2023 तक कवर करेंगे ताकि लेटेस्ट वाली आपकी पहली कवर हो जाए। तो ये हमारा प्रोसेस है। What has Delhi Sarai Kale Khan Chowk has been renamed as? Birsa Munda Chowk. Birsa Munda revolt is very famous. It was a tribal revolt in the state of Jharkhand. ईयर कौन सा था? 1800 के अराउंड में ये रिवोल्ट हुआ था, अराउंड 1799 में, एंड इट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। एंड दिस मुंडा रिवोल्ट का एक निक नेम भी है विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्या नाम है? उलुगन रिवोल्ट, ठीक है, वाज द अदर नेम ऑफ मुंडा रिवोल्ट। Now, which airport has received the global award for digital innovation? हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद में एयरपोर्ट का नाम बेगमपुट एयरपोर्ट है, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन एंड ये जो कॉन्फ्रेंस थी इट वाज कंडक्टेड एट दिस हैदराबाद एयरपोर्ट ऑनली, ठीक है। इस विंग्स इंडिया जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली एंड केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट ऑफ बैंगलोर, इन दोनों को अवार्ड भी मिला है ऑफ बीइंग द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। विंग्स 2024 ध्यान में रखना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इसमें मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेयर एज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली? India's renewable energy capacity has increased by how much percent to 2023 gigawatts? So 13.5%. Where will the first high altitude para sports center be established? तो ये लेह में establish होने वाला है। If I talk about first dark sky park, so it has been inaugurated in Hanle National Park which is in Ladakh, ठीक है। Analog Center of ISRO for astronomical purposes, ये भी लेह में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल? तो सिलवासा। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 ODI बॉलर? शाहीन अफरीदी। झीरी मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू कश्मीर। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी? तो जस्टिस सूर्यकांत। अब ये सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी का जो प्रोविजन था इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड अ एक्ट विच इज नोन एज नैल्सा
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 वॉज मेड, जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होगा. एंड दिस प्रोविजन वॉज एडेड अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई होप कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है. आप मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि हमें इस प्रोसेस से बहुत हेल्प मिली है, एंड आई कैन अश्योर यू दैट. हु हैज़ won the title of Women's World Billiards Championship? El Shruti. Who has been appointed as the Director of National Intelligence by US President Donald Trump? Tulsi Gabbard. Garud Shakti exercise has been organized between India and Indonesia. Also, if I talk about some other exercises, तो वज्र प्रहार ऑर्गेनाइज होती है इंडिया एंड यूएसए के बीच. एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्म गार्डियन. दिस इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. वरुण एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है. काजिंद एक्सरसाइज इज बिटवीन कजाकिस्तान एंड इंडिया. गरुड़ शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया. ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पे. ठीक है. नोमैडिक एलिफेंट की मैं बात करूँ, इट इज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. विनबैक्स एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. ठीक है. ये सारी आपको ध्यान में रखनी है. हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2024? समांथा आरवी फॉर द नोबल ऑर्बिटल. हु हैज़ बिकम द WTA वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर फॉर द ईयर 2024? आरिना सबलैंका. द बुक माँ रिटन बाय whom was released? तो द बुक माँ was written by डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावर. Who has been awarded the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award? Philip Noyce. To which country has India sent the first batch of Akash weapon system? अर्मेनिया को दिया गया है आकाश. ऑल्सो ब्रह्मोस देने का भी प्लान चल रहा है. अभी मैंने बताया था द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ब्रह्मोस वॉज फिलीपींस. ठीक है. नो. वेयर वॉज द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली. Who has been declared as the face of Madhya Pradesh tourism? Pankaj Tripathi. Who has been selected as the ICC Player of the Month for October? Numan Ali of Pakistan and Amelia Kerr of New Zealand. Who won the World's Billiards Championship title? Pankaj Advani won. Which IIT has developed the patented mechanical knee rehab system? IIT Ropar. Also, if I talk about discovery of tantalum, it is the most corrosive element which is found naturally. ठीक है. इट इज बिन फाउंड बाय IIT रोपर. ऑल्सो सतलुज में ये मिला है. IIT बॉम्बे की मैं बात करूं तो IIT बॉम्बे विद द हेल्प ऑफ टाटा कैंसर सर्विसेज. ठीक है. उन्होंने डेवलप किया है एक कार टी सेल थेरेपी विच इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, जिससे कैंसर का जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का इट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली. An agreement has been signed between India and which country for Pansir air defense system? It is with Russia. Also Russia से इंडिया को क्या क्या मिला है? सुखोई जितने भी हैं. Then comes ब्रह्मोस का जो डेवलपमेंट हुआ है that is also developed with the help of Russia. If I talk about S-200, S-300 defense system that is also given by Russia. अमेरिका की अगर मैं डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो थार्ड इज अ डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का है. आयरन डोम, सी डोम की मैं बात करूं तो ये दोनों डिफेंस सिस्टम है हमारे इजराइल के. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट राफेल इज एन एयरक्राफ्ट ऑफ फ्रांस. तेजस इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है विच इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया. सो मैंने कुछ रिवाइज करवा दिया आप पे. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर, चिन्हूक हेलीकॉप्टर, दीज ऑल आर दी defense tech and defense equipments of America. Who has received the Coach of the Year award in the Indian Sports Award? Suma Shishud. Who has been declared as a national security advisor by US President Donald Trump? Mike Waltz. First aerial exercise, Space Exercise 24, has been organized in New Delhi. Who has been appointed as the United Nations ambassador by the newly elected US President Donald Trump? Alice Stefanik. Who won the title of Chennai Grandmaster? Arvind Chidambaram. Where has the 29th annual Climate Change Conference of United Nations started? Baku, Azerbaijan.
Which country has abolished fast track visas for students from 14 countries? Canada, जिसमें इंडिया इज ऑन द टॉप कि यहाँ से हमें इंडिया से स्टूडेंट्स को रोकना है. Which country trade center has been inaugurated in India? रशिया का ट्रेड सेंटर है. कोको गॉफ of which country has won 2024 WTA finals? अमेरिका. इगास बगवाल फेस्टिवल is celebrated in Uttarakhand. Women Asian Hockey Championship Trophy of 2024 was organized in Rajgir, which is in Bihar. Who has won the women's single title of the New South Wales Squash Open competition? Anahat Singh. Where has the Indian Navy submarine INS Vela reached? कोलंबो में रीच किया है. ग्लोबल सिटी इंडेक्स ऑफ 2024 में टॉप पोजीशन इज ऑफ दुबई. द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज साइंड अ ट्रीटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नॉर्थ कोरिया? तो रशिया हैज साइंड इट. 73rd ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली. Which country has passed a law to deport the relatives of attackers? Israel. Who has launched the GIMSAT-2 satellite to advance the space program? Zimbabwe has launched. Whom has Neeraj Chopra declared as his coach? Jan Jelenzi. Cricketer Mohammad Nabi of which country has announced his retirement from ODI? Afghanistan. Where has the first population clock been opened? Bengaluru. Who has been nominated for 67th Grammy Awards? So, Ricky Kajan, Anushka Shankar. Now next is which medal Krishna Verma win in the under 19 World Boxing Championship? Gold medal. Which anniversary did DD News celebrate? 21st. How many tons of gold are kept abroad has RBI brought back to India? 102. Who has been chosen as Collins Dictionary Word of the Year? Brat. Where was the 32nd meeting of Central Hindi Committee held? It was held in New Delhi. Who has topped the AI Readiness Index of 2023? Singapore. Meluri will become the 17th district of Nagaland. The president of which country will be the chief guest on Republic Day 2025? Indonesia. And if I talk about the 74th Republic Day, तो France के president थे हमारे chief guest. The chief minister of which state had demanded the inclusion of whole language in the 8th schedule? Assam. Where has the 5th edition of the India-Vietnam bilateral army exercise Winbacks? तो अम्बाला में हुई है. Levotobi volcano has erupted in Indonesia. Who has been elected as the president of International Solar Alliance? India. Which state has declared heat wave as a state-specific disaster? Tamil Nadu. Shilp Samagam Mela of 2024 started in New Delhi. The chief minister of which state has launched the Deepam 2.0 free cylinder scheme? Andhra Pradesh. Who has won the super featherweight world title of the World Boxing Federation? Mandeep Jangda. Which country has extended visa-free entry to the Indian tourists indefinitely? Thailand. In the new guidelines of the Supreme Court, Rajasthan has been given the target of ending child marriage by 2030. In which country fossil of 130 million old male mosquito have been found? Lebanon. Which country has launched a satellite made up of wood? Lignosat. ये जापान की है. Which state government has approved 35% job reservation for women? मध्य प्रदेश. Brazilian Grand Prix हमारी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है. Polo Stadium, first Polo Stadium is to be inaugurated in Ladakh. Republican Party candidate Donald Trump defeated whom to win the US presidential election? He defeated Kamala Harris, who hails from the Democratic Party. Trump will be the 47th president of America. Who has been elected as the vice president of America? J.D. Vance. Who has won the Paris Master 2024? Alexander Zverev. Where has the world's largest food and beverage industry event Gulf Host 2024 started? So it started in Dubai. Which bank has started real-time international money transfer tracking? IDFC First. Which country has hosted the Ocean Summit? India. Who has become the youngest FIDE chess player globally? Anish Sarkar. Which country is declared as the focus country of 55th International Film Festival of India? Australia. Which medal did India Tanushri Pandey win in the World Soft Tennis Championship? Silver. Who has topped the Hurun Philanthropy list of 2024? Shiv Nadar. Who has become the second lady of America? Usha Chilukuri. The first integrated checkpost started on the border between India and which country? Bhutan. Where has the Ningol
Chakoba festival being celebrated? It is celebrated in Manipur. Which state government has started the statewide caste census? Telangana. First state हमारा बिहार था, second state हमारा आंध्र प्रदेश था, and third state has been Telangana. 15-day water festival started in Arunachal Pradesh. Sultanganj railway station of which state has been renamed as Ajaib Nath Dham, to Bihar? Who has been given third Rohini Nayar award? Anil Pradhan. The government of which country has announced to make a law to ban use of social media for children under 16 years of age? Australia. Who topped the ongoing FIDE World Chess Championship? Magnus Carlsen. Who has been appointed as the Chief of the Staff of the White House? Susie Wills. Where has Australia joint military exercise Australian held? Pune mein. Which state has launched India's first dedicated semiconductor policy? Gujarat. Where has the 8-day Northeast Adi Mahotsav has been inaugurated? Guwahati. Who has topped the India QS World University ranking? IIT Delhi has topped. Where all the members of Human Rights Commission have resigned? So, Bangladesh. Foundation Day on 9th November celebrated Uttarakhand ka, which was separated from UP in the year 2000. According to the World TB Report of 2024, what is the percentage of TB reduction in India? 17.7% cases में reduction हुआ है. Now, okay, 10 elephants have died in which national park? Madhya Pradesh. Where was the 352nd meeting of the governor body of the ILO held? Geneva. Where was the Bali Padyami festival celebrated? It was celebrated in Karnataka. Who has become the new leader of Britain's Conservative Party? Kami Badenoch. Which country has successfully tested the new ballistic missile Hwasong-19? North Korea, and it is important. Now, who has developed the indigenous catalyst to convert CO2 into methanol? NTPC. India's first analog space mission, अभी मैंने बताया था, इसरो का space mission है, has been launched in Leh. 15th edition of Vajra Pahar exercise has been started between India and which country? America. जिस सब मैं आपको बता चुका हूँ वही रिपीट हो रहा है. Which state Durgesh Aranya Zoo is set to get India's first IGBC certification? Himachal Pradesh. Where has Union Minister Piyush Goyal inaugurated the One District One Product Wall? तो ये रियाद में हुआ है. Which state government has launched the Elevate 2024 program? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है. Where has the annual Shrab-La Mahotsav been celebrated recently? तो Ladakh. Recently, more than 40 migratory birds have died in Sambar Lake. Sambar Lake is in Rajasthan. If I talk about Vular Lake is in Jammu and Kashmir. ठीक है, श्रीनगर में. And this get water directly from the river Satluj. Now, which medal has Mansi Halawat won in the World Wrestling Championship? Bronze. Who has won the Asian Arm Wrestling Cup 2024? Kazakhstan. Recently, in which country Tilhar Utsav was celebrated? It was celebrated in Nepal. Indian Railway have partnered with which country to promote modernization? Switzerland. Who has won the SAF Women Championship title for the second time? Bangladesh. Which female footballer has received the prestigious Ballon d'Or award? Aitina Bonamati. Which country has launched the manned spaceship Shenzhou 19? China. Where has the Prime Minister Modi launched the India's first heli ambulance service, Sanjeevani? It was launched in Rishikesh. Which has become the world's most polluted city? Lahore. Now with this we have finished अभी latest month का November का सारा one-liners हमने complete किया है. So from the next video we are going to start from October and ऐसे करके हम reverse में जाएंगे and we will finish the whole of the Speedy of 1 year. अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारी स्पीडी के वन लाइनर्स. ये स्पीडी लेटेस्ट नवंबर 2024 का इंग्लिश एडिशन है. इसको हम नवंबर 2024 से रिवर्स ऑर्डर में नवंबर 2023 तक कंप्लीट करेंगे. सो ये आप पूरी कंपाइलेशन देख लोगे, पूरी वीडियो देख लोगे तो आपके वन लाइनर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. हु हैज टॉप द फीफा रैंकिंग 2024? अर्जेंटीना. Who has been announced to be awarded the Sakharov Prize 2024? तो मारिया कोरिना मचादो एंड एडमुंडो गोंजामेल उरुतिया को मिला है साखारोव प्राइज. Who has launched the 21st livestock census campaign on October 25? तो श्री राजीव रंजन सिंह. Who has been given the Mahatma Gandhi Leadership Award? तो दारा सिंह खुराना.
हु हैज टॉप द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो डेनमार्क ने टॉप किया है। वेयर हैज द एशियन गोल्डन कैट बीन रिकन्फर्म्ड, तो एशियन गोल्डन कैट हमारी मानस नेशनल पार्क में मिली है, विच इज इन द स्टेट ऑफ असम। अगेन, वेयर विल द एनटीपीसी एंड द इंडियन आर्मी इंस्टॉल सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, तो ये लद्दाख में इंस्टॉल होने वाली है। इसके अलावा इफ आई टेल यू कि अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो ये वन लाइनर जितने हैं वो तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, साथ में मैंने बहुत स्टैटिक का भी पोर्शन कवर किया है। तो एक बार इस वीडियो को देखना पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बेनिफिशियल, आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। Who has become the first country to stop coal-based power generation? UK. India has organized 34th Defence Manufacturing Program for candidates from which country? To Maldives. Where has the Asia Clean Energy Summit 2024 organized? तो ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज हुई है। Meta and India AI have launched the Center for Generative AI Shrijan in which IIT? तो IIT जोधपुर, इंपॉर्टेंट है ये। Where will the गंगा उत्सव 2024 be celebrated? तो ये हरिद्वार में होने वाला है। The loan limit under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना has been increased from 10 lakh to how much? तो 20 lakh. The book Ratan Tata, A Life written by whom will be published? To Thomas Matthews. Which award has been discontinued by the Sport Ministry? तो Major ध्यानचंद Lifetime Achievement Award को discontinue कर दिया गया है। Who has been ranked as the top central bank by the US-based Global Finance magazine? तो शशिकांता दास। L&T has received an order for a nuclear fusion project in which country? To France. Scientists of Agarkar Research Institute located in which country have developed the new non-viral molecules for the treatment of Alzheimer's disease? It is Pune. How many medals has India won in the Under-23 Championship, World Championship in Wrestling? तो 2 medal इंडिया को मिले हैं। Mohammad Rizwan became the captain of the ODI and T20 team of which country? Pakistan. Prime Minister Modi gifted the famous Sohrai painting of Jharkhand to the President of Russia, who is Vladimir Putin. The 20th edition of the Jasmandu Music Festival, काठमांडू में ऑर्गेनाइज हुआ है। Which medal did India's star shuttler Sukant Kadam win in Japan Para Badminton International? तो गोल्ड मेडल मिला है। The government e-marketplace has signed an agreement with which state to adopt GME? तो सिक्किम के साथ। Who has been appointed as the regular MD of NAFED? Deepak Agarwal. After what age will the central government give additional compassionate allowance to pensioners? To 80 years. Next is which medal? Just a second. Yes, which medal has India won in the Sultan Johar Cup Junior Hockey? तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। Which country has conferred its highest citizenship award to Sri Sri Ravi Shankar? Fiji. Which state government has announced the creation of special education zone? उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the C-295 military aircraft manufacturing complex? The correct answer is Vadodara, Gujarat. Where has the Barda Wildlife Sanctuary been inaugurated? गुजरात में inaugurate हुई है। Which medal has Chirag Chikara won in the Under-20 World Wrestling Championship? Gold medal मिला है। Which day was celebrated on 29th October 2024? Ayurveda Day. What is India's rank in Rule of Law Index 2024 of the World Justice Project? 79th rank है and first rank जो है वो डेनमार्क को मिला है। Which country has rejected China's Belt and Road Initiative? ब्राजील ने रिजेक्ट किया है। इसके पहले the Italy has also rejected it. Who has been appointed as the chairman of Airport Authority of India? Vipin Kumar. Who has won the Emerging Asia Cup 2024 title? Afghanistan has won. In which state has the country's first writers village been inaugurated? उत्तराखंड के थानो विलेज इन देहरादून inaugurate हुआ है। Who had been declared the winner of the prestigious Ballon d'Or award? Rodrigue Hernes Casante. The Indian Coast Guard has launched 2 indigenous patrol ships by which name? The name is Admaya and Akshar. Cricketer Matthew Wade of which country has announced his retirement? Australia. The government of which country is going to provide free cancer treatment to children below the age of 14 in public hospital? So Nepal is the correct answer. India and which country have agreed to celebrate 2026 as the Year of Culture, Tourism and AI? Spain. Who has been appointed as the new CEO of Bharti Airtel? The name is
Shashwant Sharma. Who has become the fourth Indian to score 9,000 test runs? Virat Kohli. Where did the first training squadron of the Indian Navy completed a long distance training deployment? Manama में complete किया है. Which state government has announced to name the residential school after Maharshi Valmiki? Karnataka. And this is an important current affair. Kati Bihu festival is celebrated in Assam. Government of India has launched the Scam Se Bachao campaign with Meta. Which state has launched the Citizenship Sentinel app to monitor traffic rule violation? Kerala is the correct answer. Important current affair है. Which IIT will start a global research center in Dubai? तो IIT Madras. In which state pink alarms have been installed in the hospital? Madhya Pradesh. Who became the first Indian woman to score 50 international goals? Bala Devi. Where did the Indian Coast Guard organize Sagar Kavach coastal security exercise? Gujarat and Daman and Diu में organize हुई है. Pubudu Dasyanke has been appointed as a mentor of the which country's cricket team? Nepal. Who has been selected as the ISSF Athlete of the Year? So Yan Jing and Yukun Liu. Indian Railways has reduced the advance reservation period from 120 days to 60 days. Rank of India in the Index of Economic Freedom 2024 is 84th. India and which country have organized a joint naval exercise? Naseem Al-Bahr, Oman के साथ organize किया है. First test bowler to take 300 wickets in the least number of balls in test cricket is Kagiso Rabada of South Africa. Which medal has Deepika Kumari won in the Archery World Cup? Silver medal. Who has won the ICC Women's T20 World Cup? New Zealand has won. The Chief Minister of which state has launched Mission Bansudhara? Assam. Which state government will set a special course for people with disabilities? Delhi. Where was the 24th National Para Swimming Championship held? Goa में held हुई है. Where was the Fool Walon Ki Sair festival organized? Is organized in New Delhi. How many games have been removed from the Commonwealth Game 2026? So, 9 games have been removed. Which country has named cyclone Dana? Qatar ने name किया है. 27th All India Forest Sports Competition concluded at Raipur. BRICS Summit Russia में हुई है in the city of Kazan. Which country has been declared malaria free by WHO? It is Egypt. Kalidas Samman 2023 is given to Raghupati Bhatt. India and Pakistan extended the Kartarpur corridor to 2029 तक extend किया है. United Nations Biodiversity Conference COP16 is held at Colombia. 24th National Para Swimming Championship has been held in Karnataka. Which country has become the 69th member of the Asian Development Bank? Israel. Who has been appointed the first female CFO at HSBC? Pam Kaur has been appointed. Who has been awarded the 2024 Global Anti-Racism Championship Award? Urmila Chaudhary. 24th October को which team has made the world record for the highest score in T20I? Zimbabwe. Who has become the highest wicket taker in the ICC World Test Championship? R. Ashwin. First dry port has been inaugurated in Beta. According to the Travel Trends report, which has emerged as the most popular destination for Indian travelers in 2025, Shillong. And ये important है. Which Indian woman hockey player has announced retirement? Rani Rampal. 31st edition of Simbex has been held between India and Singapore. Which country has signed an agreement with the IMF for global poverty alleviation? UAE के साथ sign हुआ है. Who has been appointed as the VC Vice Chancellor of the Jamia? तो Mazhar Asif. The Chief Election Commissioner of India has signed an MOU with the Central Election Commission of which country? Uzbekistan, and this is important. The 17th Urban Mobility Indian Conference has started. कहाँ? तो गांधीनगर में. Which state government has proposed to reduce the passing of for class 10th? महाराष्ट्र ने reduce किया है marks को. International Gita Mahotsav of 2024 will be organized at Kurukshetra. The Union Home Ministry has banned the organization Hizb ut-Tahrir of which country and declared it as a terrorist organization? So Jerusalem. RBI has increased the UPI wallet limit from 2000 to 5000. Which country's Nihon Hidayanko organization will be awarded the Nobel Peace Prize? So this is Japan. Where has the
सदुल्ला बथुकम्मा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज तेलंगाना में ऑर्गेनाइज हुआ है. In which district of Bihar will the state's second tiger reserve be established? Kaimur. And first tiger reserve in Bihar is in Valmiki Tiger Reserve, and it is in West Champaran. In which country the crown of goddess Kali was stolen from Jehoshaphat temple? Bangladesh. According to WWF report, how many percent has the global wildlife population declined? 73% का decline हुआ है. Ayodhya Puja is celebrated in Tamil Nadu. According to NABARD survey, how much percent has the average monthly income of rural families increased? तो 57% increase किया है. Which country has announced to break the diplomatic relations with Israel? Nicaragua ने announce किया. Where will the India Digital Agriculture Conference 2024 be held? तो ये न्यू दिल्ली में होने वाली है. Army Chief General Upendra Dwivedi launched the multi-target equipment Agnistra in Gangtok. The Thain festival is celebrated in Nepal. Which state has appointed Indian fast bowler Mohammad Siraj as DSP? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है. Where has the Indian Navy ship Shardul reached as a part of its long distance training deployment? Dubai. The former Prime Minister of which country has launched his book Unleashed? Britain ने अनाउंस किया है. Where did the President Draupadi Murmu reach in the first phase of her visit to 3 African countries? Algeria. 8th edition of Kazan exercise is held between India and which country? So, Kazakhstan. Vidyarambha Utsav is celebrated in Kerala. Which line of Delhi Metro has been given carbon neutral certificate? तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट का अवार्ड मिला है. अलई बलई सेरेमनी इज हेल्ड इन तेलंगाना. ISSF Junior World Cup of 2025 will be organized in India. Who has become the first Indian to climb Mount Shishpangma in China? Arun Vajpayee is the first person. Who has been declared to their heir to Jamnagar throne? Ajay Jadeja. Where will the 10th International Science Festival to be held? तो गुवाहाटी में हेल्ड होने वाला है. Who has won the women's single title at Bendigo International Challenge Badminton Tournament held in Australia? तो ये अवार्ड मिला है तानिया हेमंत को. Who has received the National Kishore Kumar Award of 2023? राजकुमार हिरानी को ये अवार्ड मिला है. In which state Skill University will be renamed after Ratan Tata? तो महाराष्ट्र में. Who became Russia's second largest supplier of band technology? India. Who has become the third state to launch caste survey? Telangana. इसके पहले first state was Bihar, second state was Andhra Pradesh. Which city has been declared the richest city in the world? Abu Dhabi. Who has been selected as the ICC Player of the Month for this September? Tammy Beaumont and Kamindu Mendes. Who has won the Shanghai Masters title? Jannik Sinner. Where has the 75th International Astronautical Congress started? It started in Milan. Which IIT has developed space-saving multi-purpose furniture for children? IIT Guwahati. Which country will send advanced THAAD missile defense system to Israel? To America. Where has the army renamed the Kaksar Bridge as Captain Amrit Bharadwaj Setu? Ladakh. Which Indian women cricketer has been inducted into the ICC Hall of Fame? Neetu David. Who has become the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir? Surinder Kumar Chaudhary. In which country has President Draupadi Murmu been awarded the title of Honorary Doctorate? In Algeria. Where has the Flying Festival been organized? तो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है. Who has won the Best State Award in the 5th National Water Awards of 2023? Odisha. Who won the title of Miss Femina India 2024? Nikita Porwal. Which has been declared as the India's second largest butterfly diversity park? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया है, and it is in Assam. Mera Hochongba festival is celebrated in Manipur. 27th All India Forest Sports Competition has started in Raipur. Who has won the second Vizag Open title? Angad Chima. To which country has Britain decided to hand over sovereignty over the Chagos Island? Mauritius को hand over किया जा रहा है. Banjara Heritage Museum has been inaugurated in Maharashtra.
who has become the official sponsor of FIFA's World Cup 2026 and FIFA's Women World Cup 2024. Lay's is the official sponsor. In which state a program Krishi Sakhi Yojana has been launched for empowering women in agriculture? Uttar Pradesh, who has been given additional charge of Ministry of Road and Transport and Highways? Pankaj Agrawal. Where has Jal Jagan Mahotsav been organized? In Chhattisgarh. Vistara will be merged in which airline? It will be merged in Air India. Who won the Best Actress Award at the 70th Film Awards? तो Manasi Parekh. Where has the Armed Military Exhibition organized? तो छत्तीसगढ़ में organize हुआ है. Who won the Midori Award for Biodiversity? Vera Voronova and Isabel Agustina. Who won the Irani Cup? Mumbai ने जीता है Irani Cup. The Chief Minister of which state has launched the Nijut Moina Yojana? It has been launched by Assam. Who won the Singapore Open title in billiards? Pankaj Advani ने जीता है. Who topped the world talent ranking? तो Switzerland. Where did the Indian Navy deploy its first training squadron? Oman में deploy किया गया है. Who has been awarded the Best Playback Singer Male Award at the 70th National Filmfare Awards? It's Arjit Singh. Prime Minister Modi handed over more than 700 housing units built with the cooperation of India to which country? It has been given to Maldives. Who has been selected for the Nobel Prize 2024 in the field of physiology and medicine? Victor Ambrose and Gary Dukovan. Deloitte की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग by when will India's e-commerce market reach $325 billion? It is to 2030 तक. Where will the Indian Institute of Foreign Trade open its first overseas campus? So the campus is being opened in Dubai. Where has the Arctic Open Badminton competition started? It started in Finland. Who has been selected for the Nobel Prize in Physics 2024? Geoffrey E. Hinton and Hopfield, John J. Hopfield. The bilateral investment treaty of 2024 has come into force between India and which country? Between India and UAE. In which country has payment started with RuPay card? Maldives. Who has launched the Humsafar policy in Delhi? It has been launched by the Roads and Highway Minister Nitin Gadkari. Who has won the China Open 2024? Coco Gauff. Which country has been declared trachoma free by WHO? It is India. Which country's football player Andres Iniesta has announced his retirement? To Spain. World Pickleball Championship has been organized in Mumbai. Ustad Alauddin Khan Festival has started in Madhya Pradesh. Sankalp initiative has been launched to deal with drug trafficking. Himachal Pradesh. Who has become the first player to score 5,000 runs in World Test Championship? It's Joe Root. Who has been appointed as the head coach of Sri Lankan cricket team? Sanat Jasuria. Marburg virus is rapidly spreading in Rwanda. Which state government has issued a special postal cover in honor of Ratan Tata? Bihar is issued. With whom has the DigiLocker partnered for seamless access Umang app? Which country Nima Rinji Sherpa has become the youngest mountaineer to climb 14 highest peak in the world? It's Nepal. Where was the Indian Institute of Skill inaugurated? In Mumbai. Legends Cricket League tournament started in Kashmir Valley. Gross enrollment under the Atal Pension Scheme has crossed 7 crore. 38th national game will be held at Uttarakhand. Tennis player Rafael Nadal of which country has announced his retirement? Spain. Han Kang of which country will be awarded 2024 Nobel Prize for Literature? To South Korea. Army's Commanders Conference 2024 has been organized in Gangtok. Which medal did Indian men's team win in the Asian Table Tennis Championship? Bronze medal. Global Hunger Index में India की position is 105th. World's tallest imaging Cherenkov telescope has been unveiled in Ladakh. Chairman of Tata Trust is Noel Tata. Best Actor Award in IFA 2024 has been won by Shah Rukh Khan. Which state has given the status of Rajyamata native cow? To Maharashtra. Who has hoisted the tricolor on the Mount Uman 20,300 feet peak of Himachal Pradesh? To Abhineet Maurya. Who has been awarded the 25th Lal Bahadur Shastri National Award? Rajshri Birla. Where was the India's first of season bird park inaugurated? It is inaugurated in Maharashtra.
Fastest player to score 20,000 international runs, Virat Kohli. Harpoon missile has been developed by USA. Kho World Cup will be held in India. Top bowler in the ICC bowling ranking is Jasprit Bumrah. Which country has UAE ambassador's residence been attacked? So, Sudan. Where has the Prime Minister Modi inaugurated Jamaica Mark? In New Delhi. Bapu Tower has been inaugurated in Bihar. In which state PM Modi launched the Dharti Abba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan? In Jharkhand. First China Open has been won by Carlos Alcaraz. Google for India 2024 event has been organized in New Delhi. India's first modern cowshed with a bio-CNG plant has been inaugurated in Madhya Pradesh. Which state government will launch the Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana? It will be launched by Uttar Pradesh. SAF Under-7 Championship title by India. Who will be honored with late Vasudev Gaitonde Lifetime Achievement Award by Maharashtra government? Lakshman Shrestha. India, Nepal and which country have signed a trilateral electricity trade agreement? Bangladesh. How many languages have been given the status of classical language? तो 5 languages, पहले से 6 languages थी, तो total number of classical languages are 11. India's first super capacitor plant has been inaugurated in Kerala. Shastra Ramanuja Prize 2024 has been given to Alexander Dunn. Chhatrapati Shivaji Lifetime Achievement Award has been given to Pradeep Gandhi. Pashmina wool has got the GI tag from Ladakh. And next video we will start from September. Thank you. On September 30, 2024, who unveiled the new suicide drone Shahid 136B? तो ये शाहिद 136B इज़ अ ड्रोन और ये रिलीज़ किया है ईरान ने. ईरान के बारे में अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो ईरान के अगर मैं ड्रोन की बात करूं तो यहाँ शाहिद 136B है. अगर ईरान की मिसाइल के बारे में बात करूं तो ये शाहब, ज़ोल्फागर और इमाद, ये तीनों ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. ईरान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल के साथ ईरान का बहुत डिस्प्यूट चल रहा है. ठीक है, ईरान के हम बॉर्डर्स देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ लगते हैं. तो नॉर्थ में इसकी बॉर्डर है अज़रबैजान के साथ, दूसरी कंट्री है हमारी अर्मेनिया, तीसरी कंट्री हमारी तुर्कमेनिस्तान, चौथी है हमारी कैस्पियन सी. अगर मैं ईरान की ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में ईरान की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ. अगर मैं बात करूं साउथ की तो साउथ में ईरान की बॉर्डर लगती है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के साथ. ठीक है, तो इससे आपका ये ईरान का पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री बिकेम द थर्ड एशियन कंट्री टू अलाउ गे कपल मैरिज? तो ये है हमारी थाईलैंड. अब थाईलैंड यहाँ पे थर्ड कंट्री है टू अलाउ गे कपल मैरिज. तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है टू अलाउ गे कपल मैरिज? ये थी ताइवान. ये भी आप ध्यान में रखना. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर टू द नेशन? तो परम रुद्र कंप्यूटर्स पीएम मोदी ने दिए हैं कंबोडिया को. अब सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है ऐरावत. इसका नाम आप याद रखना. एंड दूसरी अगर इम्पोर्टेंट मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो फैल्कन एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ऑफ यूएसए. ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है. नाउ नेक्स्ट, कंबोडिया में एक रिवर बहती है जिसका नाम मैकोंग रिवर है. मैकोंग रिवर न्यूज़ में रही है तो इसके बारे में मैं आपको यहीं बता देता हूँ डिटेल में. मैकोंग रिवर जो है वो हमारी 6 कंट्रीज से निकलती है. पहली तो है चाइना, दूसरी है म्यांमार, तीसरी है लाओस, चौथी है थाईलैंड, पांचवी है कंबोडिया एंड छठी है वियतनाम. ठीक है, आई होप कंबोडिया से रिलेटेड फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे. और ये ध्यान रखना, परम रुद्र इज अ सुपर कंप्यूटर एंड ऐरावत जो है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है. नेक्स्ट देखते हैं. विच कंट्रीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो अनाउंस द रिटायरमेंट? वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज से एक फैक्ट याद रखना, T20 का फाइनल था जो वर्ल्ड कप में वो गयाना में खेला गया था एंड गयाना इज इन वेस्ट इंडीज. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी बनाकही स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? तो ये स्कीम लॉन्च की है मिजोरम ने. अगर मैं मिजोरम के बारे में कुछ और फैक्ट्स बताऊँ आपको
तो सबसे पहला तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो ऐज़वाल है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ऐज़वाल को रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है और ये नॉर्थ ईस्ट का फोर्थ कैपिटल होगा जो रेल से कनेक्ट होगा। ठीक है, रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है 2025 तक। रिसेंटली मिज़ोरम एक साइक्लोन रेमल से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अब रेमल साइक्लोन कहाँ आया था? ये आया था बे ऑफ बंगाल में। एंड आपको पता होगा हर साइक्लोन का नाम दिया जाता है, तो रेमल का नाम कौन सी कंट्री ने दिया था? तो ओमान ने दिया था, ये भी आप याद रखना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मिजोरम। आई होप यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग। ठीक है, इससे आपका ना माइंड मैप से आपको ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम के टाइम में यू विल बी एबल टू रिलेट दीज थिंग्स। अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोज़ में या तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं सीधे वन लाइनर्स को कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन? तो जीसी मुर्मुर। अब जीसी मुर्मुर क्या है? ये हमारे 14th कैग हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अब हम थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में भी सीख लेते हैं। कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कैग का मेंशन कौन से आर्टिकल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 148 में कैग का मेंशन किया गया है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो कैग की जो पावर्स हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ है, ये मेंशन की गई है आर्टिकल 149 में। कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और कैग को रिमूव कौन करता है? तो कैग को जो रिमूव हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव होंगे? तो पार्लियामेंट एक लॉ या एक बिल को पास करेगा टू रिमूव दी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये कैग है हमारे जीसी मुर्मू, तो ऑडिट से रिलेटेड भी, इसीलिए जीसी मुर्मू ही चेयरमैन बने हैं। Where has the Global Aerospace Summit been inaugurated on 28 September 2024? तो ये इनाग्रेट हुई है अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में एक और चीज़ हुई थी अभी, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बाप्स टेम्पल जिसको बोला गया है, ये भी अबू धाबी में ही बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 8th मीटिंग ऑफ द इंडिया म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड? इंडिया म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमेटी कहाँ हेल्ड हुई है? तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में G20 समिट भी ऑर्गेनाइज हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये साइन हुई थी। G20 समिट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ज्ञान मंडपम में। ऑल्सो G20 समिट का स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था वसुदैव कुटुंबकम, ये भी आप याद रखना। और वासुदेव कुटुंबकम की मैं बात करूं तो ये कौन सी बुक से लिया गया है? तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल? तो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली इंडिया हुआ है, इंडिया बना है। अब नेपाल एंड इंडिया की मैं बात करूं तो दोनों के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो सूर्य किरण है, ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो मैं कुछ आपको बता देता हूं। इंडिया एंड यूएसए के साथ कौन सी होती है? तो युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, वो इंडिया यूएस के बीच होती है। देन द सेकेंड वन इज वज्र प्रहार। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज वरुण होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। The sixth session of the Joint Trade Committee between India and which country has been organized in New Delhi? तो इजिप्ट के साथ ये ऑर्गेनाइज की गई है। अब इजिप्ट की एक एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23, ये भी आप ध्यान रखना। इसको ब्राइट स्टार 23 को ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट में। इसमें 30+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया। अगर मैं इंडिया एंड इजिप्ट के रिलेशन की बात करूं
तो इनके बीच जो एक्सरसाइज होती हैं उनका नाम भी याद रखना। सबसे पहली एक्सरसाइज तो साइक्लोन है, दूसरी है डेजर्ट वॉरियर, एंड तीसरी एक्सरसाइज है हमारी होपेक्स। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल किल नीलगाय एंड वाइल्ड बोर दैट डैमेज द क्रॉप्स? तो बिहार ने किल करने का सोचा है नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स। अब बिहार से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखेंगे ताकि आपका एक ही साथ में मेजोरिटी ऑफ द करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। अब सेकेंड टाइगर रिजर्व बिहार में ओपन होने वाला है, तो कहाँ ओपन होने वाला है? तो वो ओपन होने वाला है कैमूर में। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो बिहार में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल ये भी इनॉग्रेट होने वाला है। कहाँ? तो वेस्ट चंपारण में। बिहार से रिलेटेड अगर मैं और बात करूं तो अभी एक नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी बिहार में है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात करूं तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिहार फर्स्ट स्टेट बना है किस चीज़ के लिए? कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने वाला पहला स्टेट बना है। सेकेंड स्टेट कौन सा है जिसने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया है? ये है तमिलनाडु। तो ये सारी फैक्ट्स आप बिहार से रिगार्डिंग याद रखना। ऑल्सो बिहार की जो रामसर साइट्स हैं, एक तो मैंने बता दिया नागी नकती, दूसरी है कबरताल लेक। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रखना रिगार्डिंग बिहार। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश। अब जैसे हमने बिहार के सारे करंट अफेयर एक साथ कर लिए, हम मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स एक साथ कर लेते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला तो जो संवानिधि स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके डिस्बर्समेंट में टॉप स्टेट कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। दूसरी अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग, अगर मैं दूसरी न्यूज़ की बात करूं तो वो है लोकपथ मोबाइल ऐप, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड इट इज़ फॉर दी एड्रेसिंग दी रोड इश्यूज़। मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग अगर मैं थर्ड न्यूज़ की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक स्टैचू ऑफ वननेस इरेक्ट किया गया है, जो कि आदि शंकराचार्य का बनाया गया है। ये स्टैचू ओमकारेश्वर के पास है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ऑल्सो फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन की मैं बात करूं तो वो भी मध्य प्रदेश में कंडक्ट हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन लाइनर। वेयर हैज शाह आलम स्टेडियम बीन डेमोलिश्ड? तो ये डेमोलिश किया गया है मलेशिया में। नाउ वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन? अभी देखो, अभी बताया था मैंने मध्य प्रदेश, तो यहाँ आपका रिवीजन हो गया इस पॉइंट का। इसका करेक्ट आंसर हमारा मध्य प्रदेश है। Who has won the IBSF World 6 Red Championship in उलान बातार? तो कमल चावला ने ये जीता है। Where the CM सात scheme has been started to provide support to the meritorious student? तो देखो, त्रिपुरा में ये स्कीम की शुरुआत की गई है। ऑल्सो अगर मैं त्रिपुरा के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स की बात करूं तो एक जियोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट जान लो कि त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बॉर्डर करता है बांग्लादेश को। मतलब त्रिपुरा के 3 बाउंड्रीज पे, 3 साइड की बाउंड्रीज पे बांग्लादेश है। अनदर अगर मैं आपको बताऊं तो त्रिपुरा के कुछ जीआई टैग हैं रिसेंटली जिनको अप्रूवल मिला है। सबसे पहला तो है माता बाड़ी पेरा, सेकेंड इज पचारा टेक्सटाइल। ऑल्सो त्रिपुरा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू इट्स एडुकेशनल रिफॉर्म्स। एडुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं त्रिपुरा में, ठीक है। एंड इसी रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। ऑल्सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है
पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, वहाँ की नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेज, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये भी त्रिपुरा में साइन हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2024। तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो ये करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का इस इनोवेशन इंडेक्स में इस बार 39th रैंक है। ये 2024 की लेटेस्ट रैंकिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसको। Now, where did the External Affairs Minister S. Jaishankar participate in the first joint ministerial meeting of L69 and C10 nation groups? तो ये न्यूयॉर्क में अटेंड किया है एस जयशंकर जी ने। अब L69 and C10 क्या है, तो ये डेवलपिंग नेशंस हैं। अभी इनका ग्रुपिंग क्यों बनी है, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं, यूएनएससी के रिफॉर्म्स, ताकि परमानेंट मेंबर्स की सीट्स बढ़ाई जाए, जो अभी 5 है, ठीक है, P+5 है ना। तो अभी ये L69 और C10 वैसे नेशंस का ग्रुप है जो ये चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। नाउ विच फाउंडेशन डे ऑफ सीएसआईआर वाज सेलिब्रेटेड, तो 83rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है। ऑल्सो सीएसआईआर के जो चेयरमैन या हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, होते हैं कंट्री के। ऑल्सो सीएसआईआर का एक अवार्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, जिस अवार्ड का नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। नाउ डीआरडीओ हैज डेवलप्ड एवीएचईडी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट इन कोलैबोरेशन विथ आईआईटी। तो आईआईटी दिल्ली के हेल्प से डेवलप किया गया है। हु हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन फ्रॉम इंडिया, तो अर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्सो इंडिया ने रिसेंटली अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में अभी वॉर चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था, कौन से रीजन को लेके, तो नागार्नो कारबाख का ये रीजन है, जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा था अर्मेनिया और अजरबैजान में। तो इस रीजन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अजरबैजान में एक और रीजन है जिसका नाम लचिन कॉरिडोर है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। मानकीडिया कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्राइबल ग्रुप। मानकीडिया कम्युनिटी जो है वो ओडिशा की है। अगर मैं बाकी कम्युनिटीज़ की बात करूं तो एक हक्की पिक्की ट्राइब है, ये ट्राइब जो है ये कर्नाटका की है। अगर मैं मालधारी कम्युनिटी की बात करूं तो मालधारी कम्युनिटी गुजरात की है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं इसको ताकि इजी हो आपके लिए रिवीजन करना। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द एकलव्य अवार्ड 2024, तो प्रत्यक्षा राय हैज़ बीन सेलेक्टेड। Which state in Northeast has declared itself free of extremism? मणिपुर। मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि अ काइंड ऑफ सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा है बहुत टाइम से, जो अभी तक चल रहा है, बिटवीन कुकी एंड मेइटे कम्युनिटीज़। ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, वहाँ की कम्युनिटी हैं, तो इनका भी आप नाम याद रखना। हु हैज़ टॉप द एशिया पावर इंडेक्स 2024? अमेरिका ने टॉप किया है। ऑल्सो अमेरिका से अगर मैं इंडिया की बात करूँ रिलेशंस की, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अमेरिका ने इंडिया के साथ डील की है कि वो अपने प्रीडेटर ड्रोन्स इंडिया को देगा। तो प्रीडेटर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रोन, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो कि अमेरिका ने दिए हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अमेरिका ने इंडिया को दिए हैं, ठीक है। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम थार्ड है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया के डिफेंस सिस्टम का नाम S-200, S-300, ये रशिया के डिफेंस सिस्टम का नाम है। और अगर मैं वहीं इजराइल की बात करूं तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम का नाम सी डोम है, आयरन डोम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गे मैरिज हैज़ बीन लीगलाइज्ड? तो थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
In which state the first gas-based Yelhanka gas power plant has been started on 24 September? तो ये स्टार्ट हुआ है हमारे कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका इज ऑल्सो फेमस फॉर कोलार माइंस। कोलार माइंस में क्या मिलता है? तो गोल्ड की माइंस है। ऑल्सो कर्नाटक के अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो कर्नाटका ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ओवी ट्रैप बास्केट। ओवी ट्रैप बास्केट किस चीज़ के लिए है? तो डेंगू के कंटेनमेंट के लिए है। दूसरी अगर मैं कर्नाटका की रिगार्डिंग बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन ये कर्नाटका में है। इसके अलावा एआई शिक्षा टूल, ठीक है, ये टीचर्स के लिए बना है, ये भी कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल डिटॉक्स, तो ये भी कर्नाटका से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखना। कर्नाटका के रिगार्डिंग हमने करंट अफेयर्स देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र विल बी रिनेम्ड एज जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये इनॉग्रेट हुआ है पुणे में। वेयर हैज द टाटा स्टील स्टार्टेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? तो कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में किया गया है। ऑल्सो ओडिशा इज वेल नोन फॉर मिनरल्स, और इंडिया का जो है हाफ ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन जो है वो हमारे ओडिशा से होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द यूके पार्लियामेंट? तो विनोद बच्चन को वो अवार्ड मिला है। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर? तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हुई थी समिट। Which new airline has been approved by the Ministry of Aviation in India? शंख एयरलाइन एक नई एयरलाइन है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। Who has been appointed as the commissioner of the US National Cricket League? Aaron Lorgat. Who has been awarded the Outstanding Actor Award in the Indian film industry by the Guinness World Records? तो चिरंजीवी जी को ये अवार्ड मिला है। Which Indian film has been nominated for the 97th Oscar Awards? तो वो फिल्म का नाम है लापता लेडीज। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? तो रिया सिंघा। वेयर हैज द इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द G7 संस्कृत मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इटली में हुई थी। ऑल्सो G7 की जो समिट है वो इटली में हुई थी। वी ऑल नो G20 की जो 2023 की समिट थी ये हुई थी हमारे इंडिया में। 2024 की G20 की समिट होने वाली है ब्राज़ील में, और 2022 की समिट हुई थी इंडोनेशिया में, ठीक है। विच मेडल हैज इंडिया वॉन इन द 45th चेस ओलंपियाड? तो इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। वुमेन्स की टीम ने भी गोल्ड जीता है एंड मेंस की टीम ने भी गोल्ड जीता है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट? तो बॉस्टन है, लॉस एंजलिस में ही ओपन होगा। आईफा अवार्ड्स 2025 विल बी हेल्ड इन जयपुर। हु हैज वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस। 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस will be held at Dubai. Who will host the Quad Summit 2025? तो ये होस्ट कर रहा है इंडिया। अगर मैं क्वाड 2024 की बात करूं तो ये हुआ है यूएसए में। क्वाड के मेंबर कंट्रीज को अगर मैं रिवाइज करवाऊँ आपको तो वो इंडिया प्लस यूएसए प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज हैं। एक मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है जिसका नाम I2U2 है, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये मिडिल ईस्ट क्वाड है, ठीक है। क्वाड की समिट याद रखना ये होने वाली है इंडिया में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिनिस्टीरियल कमीशन मीटिंग? तो पीयूष गोयल। Who is the first Indian wrestler to win a mixed martial art fight at the Gamma International Fighting Championship in Georgia? तो ये हैं संग्राम सिंह।
हु हैज़ लॉन्च द बीच क्लीनिनेस कैंपेन 2024 इन मुंबई? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट इज विच कंट्री स्टार्टेड ऑपरेशन सद्भाव? तो इंडिया। वेयर हैज़ द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द संविधान मंदिर? तो मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ल्यूवन? अनमोल खराब। Who has launched the जन सुनवाई पोर्टल टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री? तो ये पीयूष गोयल। Who has launched the चामरान 1 सैटेलाइट? अभी मैंने आपको बताया था ईरान, थोड़ी देर पहले जब ईरान का रिवाइज कराया था, ईरान इसका करेक्ट आंसर है। Who has won the बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट द सीमा 2024? ऐश्वर्या राय को यह अवार्ड मिला है। Where did the Prime Minister Modi inaugurate the Global Renewable Energy Investor Summit? तो ये गांधीनगर में इनॉग्रेट हुई है। ऑल्सो फर्स्ट प्लांट, अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं, नैनो यूरिया का प्लांट ये कलोल गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। When did स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्टार्ट? तो ये 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। What has been the name of India's first one-day metro change to? तो इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो का नाम चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। Who has launched the भास्कर प्लेटफॉर्म? It has been launched by DPIIT. Salima Imtiaz became the first woman from which country to join the ICC Empires panel? तो ये पाकिस्तान की हैं। Who has been appointed as the head coach of the national senior women's team by the All India Women Federation? तो ये है संतोष कश्यप। Which Indian has won the gold medal in the 10-meter air pistol event at Top Gun Cup? तो ये अनमोल जैन को मिला है। Where did the Prime Minister Modi launch the सुभद्रा योजना? तो ये ओडिशा में लॉन्च हुई है। अभी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है। Which country's hockey team won the Asian Championship Trophy title for the 5th time? इंडिया ने जीता है। Where has the first container school opened in a remote forest area? तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। Which country will kill 200 elephants due to severe drought? तो ये जिम्बाब्वे है। Who has been appointed by Amazon as the country's manager in India? समीर कुमार। Who has launched the pension scheme NPS वत्सालय for children? तो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। ऑल्सो जो नई यूपीएस स्कीम आई है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है उसको लॉन्च करने वाला? तो वो है महाराष्ट्र। Now, who has become the first female fighter pilot in the LCA Tejas fleet? तो मोहना सिंह। Which country's government has issued a special coin in honor of the Cristiano Ronaldo? तो ये पोर्तुगल के हैं। Who has been awarded the राजभाषा कीर्ति अवार्ड? भेल को मिला है ये। Who has been declared the most photogenic UNESCO World Heritage Site? तो अंगकोर वॉट, दिस इज इन कम्बोडिया के टेम्पल से ये इनको दिया गया है। Which country has been declared the world's first country to be leprosy free by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जॉर्डन है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेप्रोसी फ्री पहली कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? तो वो है जॉर्डन। By when will India will establish its own Indian space station? 2028 तक इस्टेब्लिश कर लेंगे। Who won the Azerbaijan GP Grand Prix? तो ऑस्कर PS3। Chief Minister of which state has launched the new MSME policy? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। Who has won the title of Miss India Worldwide? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है ये टाइटल। Which state government has implemented the Historic Property Damage Recovery Act? तो उत्तराखंड ने ये चीज़ लॉन्च की है। ऑल्सो अगर मैं उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो फॉरेस्ट को कंसिडर करके जीडीपी मेजर करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट हुआ है।
इसके अलावा उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आया है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो गोवा इज़ दी ओनली स्टेट जहां पे यूसीसी टाइप का एक लॉ चल रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन पोर्तुगल लॉ। ठीक है, यूसीसी का पहला बिल जो है वो उत्तराखंड में आया है। ऑल्सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मैंशनड इन दी अंडर दी हेड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा डीपीएसपी है। हु हैज़ वॉन द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, तो ये जीता है पंजाब ने। वेयर हैज़ द ओपन वाटर स्विमिंग कैंपेन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये इनॉग्रेट हुआ है। ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार की जो शॉम्पेन ट्राइब है वो पहली ट्राइब बनी है जिसने वोट किया है 18th लोकसभा, जो रिसेंटली कंक्लूडेड 18th लोकसभा है उसमें अंडमान एंड निकोबार की शॉम्पेन ट्राइब ने वोट दिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वेयर हैज़ द 19th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड, तो ये इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम में। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च द वाइट रेवोल्यूशन, अमित शाह ने लॉन्च किया है। ऑल्सो वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स। पिंक रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू पोल्ट्री। गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, तो ये आप ध्यान रखना। वेयर हैज इंडियाज थर्ड इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बीन एक्टिवेटेड, तो ये एक्टिवेट हुआ है हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने अग्निवीर, जो कि एक नई स्कीम आई है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट करेगा अपनी स्टेट की पुलिस में और फॉरेस्ट सर्विस में, तो ये भी आप ध्यान रखना। वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पीएम मित्र पार्क, तो ये अमरावती में फाउंडेशन जो है वो किया गया है। वेयर हैज़ पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम, तो ये स्कीम है महाराष्ट्र की। ऑल्सो अगर मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको और करंट अफेयर्स बताऊं तो सबसे पहला तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है जिसने राज्य माता का दर्जा दिया है काऊ को। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ढांगर कम्युनिटी जो है वो महाराष्ट्र की है, जो अभी अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में सुजाता सोनिक जो हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की। उसके अलावा इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है दैट इज थाने बोरीवली टनल, वो महाराष्ट्र में ही बिल्ट हो रही है। ऑल्सो महाराष्ट्र का जो न्याय सेतु है, अटल न्याय सेतु, वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो सी पे बना है। तो ये महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। इन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड विथ अ ग्रैंड सेरेमनी, तो नेपाल। एंड नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना नहीं इंडिया है। ऑल्सो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपाल की वो मैंने आपको बता दी। तीसरा नेपाल एंड इंडिया के मैं डिस्प्यूट की बात करूं तो लिपो लेक, काला पानी, ये कुछ प्लेसेस हैं जो नेपाल बताता है कि वो उसके एरिया का पार्ट है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे अंडर आती हैं। तो लिपो लेक काला पानी का जो एरिया है वो जो है वो दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। वेयर वॉज द 6th क्वाड लीडर समिट हेल्ड, तो ये हुई थी डेलावेयर में। नाउ नेक्स्ट इज हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट ISS इन 2025, तो ये है शुभांशु शुक्ला। अगर मैं फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट की बात करूं तो उनका नाम है गोपी थोथाकुरा।
ठीक है, जो कि अमेजन कंपनी की एक ब्लू फ्लाइट है, उसमें ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं, तो इनका भी आप नाम याद रखना। इन विच कंट्री हैज टॉन पुलासन रेक्ट हैवॉक, तो ये चाइना में आया था। नेक्स्ट इज हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024, तो समारा विक्रमा एंड दुनिथा वेलालगे। Who has secured the first position in the State Food Security Index of 2024, तो केरल को फर्स्ट रैंक मिला है। ऑल्सो जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये FSSAI रिलीज करता है। दूसरा, अगर मैं केरला से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करूं तो फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये केरला में ओपन हो रही है। इंडिया का फर्स्ट ग्रेफाइट सेंटर जो है वो भी केरला में है। इसके अलावा कोझिकोड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये सिटी ऑफ लिटरेचर को डिक्लेयर किसने किया है? तो ये डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को ने एक तो सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है, दूसरा डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ म्यूज़िक। तो सिटी ऑफ म्यूज़िक कौन सी है? तो वो है ग्वालियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो केरला ने एक नया मिशन लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत के नाम से। अब इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू रिड्यूस द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थी हमारी केरला से रिलेटेड। नाउ विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड गे मैरिज फॉर क्रॉस स्टेट कपल्स? तो ये ताइवान। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फीडे 100 अवार्ड ऑन 21 सितंबर? तो ये मैग्नस कार्लसन है, जुदित होलगर हैं। इंडियाज धनुष लोगनाथ हैज वॉन विच मेडल इन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। The central government has appointed whom as the Chief Justice of Jharkhand High Court? तो ये हैं SS रामचंद्र राव। Air Force of India and which country has successfully completed the Eastern Bridge 7 war exercise? तो ये एक्सरसाइज हुई है ओमान के साथ। अब अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट रह रहा है यहाँ पे गुजरात। गुजरात के बारे में आपको कुछ मैं न्यूज़ बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था गुजरात का बट मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं तो गुजरात एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, और फर्स्ट रैंक आया है गुजरात का इन दी 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीटिंग में। ओके, दूसरा, इंडिया एंड वियतनाम की मदद से गुजरात में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो लूना क्रेटर जो है ये गुजरात में है, और ये एक मीटियर इम्पैक्ट के साथ बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात के गरबा डांस को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। गुजरात की अगर मैं स्टेट फिश की बात करूं तो वो घोल है। ठीक है, इससे हमने गुजरात भी कवर कर लिया। यूपी के का भी देख लेते हैं। चलो, यूपी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है कि यूपी इज बीइंग द फर्स्ट स्टेट टू पास एन एंटी कन्वर्जन लॉ। सेकेंड अगर मैं बात करूं, बायोप्लास्टिक पार्क ये यूपी में ओपन हुआ है। तीसरा, वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर के कंजर्वेशन का सेंटर ये भी यूपी में ओपन हुआ है। यूपी का जो है वो फर्स्ट रैंक रहा है इन दी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज यूपी हैज अचीव द टारगेट ऑफ 100% ODF प्लस कवरेज मिला है यूपी को। ऑल्सो यूपी हमारा फर्स्ट रैंक करता है इन दी प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स।
तो इसी के साथ हमने अपना पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब देखो इस पहले पार्ट में मैंने नहीं भी तो आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं, आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें बहुत कम रहेगा हमारे पास डिस्कस करने को, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना कुछ कवर कर लिया है। सो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो आपको, एंड वीडियो को शेयर कर देना इफ़ यू वांट, कंटेंट अच्छा लगा हो तो। ठीक है, आने वाले टाइम में आई विल कंप्लीट ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द वन लाइनर्स। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड पार्ट स्पीडी के वन लाइनर्स का। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में हमने माइंड मैप्स के थ्रू मैंने 40 मिनट्स में अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पार्ट 1 के वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप MCQ करना चाहते हो लेटेस्ट अक्टूबर 2024 का, तो वो भी मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। स्पीडी हमारी लेटेस्ट है अक्टूबर 2024 की, मीडियम हमारा इंग्लिश रहने वाला है। नाउ लेट अस स्टार्ट। द टूरिज्म बोर्ड ऑफ विच कंट्री हैज वॉन द पाटा गोल्ड अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म? करेक्ट आंसर इज नेपाल। ऑल्सो रिसेंटली अभी नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया बन चुका है, एंड 4th टाइम के लिए नेपाल के PM बने हैं KP शर्मा ओली, ये भी आप याद रखना। ऑल्सो लिपुलेख, लिम्पुआधारा और काला पानी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं अभी फिलहाल नेपाल एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स समुद्र प्रताप हैज बीन लॉन्च्ड इन, ये लॉन्च हुआ है गोवा में। ऑल्सो गोवा ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे UCC टाइप का लॉ चलता है। दिस UCC टाइप ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन पोर्तुगल लॉ। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसमें UCC का बिल आया है, तो वो उत्तराखंड का स्टेट है। ऑल्सो चलिए यहाँ तक ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लॉन्च द प्रोजेक्ट नमन? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। विच फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 सितंबर? तो 7th इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का इंसेप्शन ईयर मनाया गया है। विच मेडल हैज प्रीति पाल वॉन इन पेरिस पैरालंपिक्स? ब्रॉन्ज मेडल। 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? लखनऊ में। बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड हैज बीन वॉन बाय नैल्को। Which state has tied up with Google for AI laboratory? Correct answer is Tamil Nadu. Also, Tamil Nadu has become the second state to conduct a caste-based census. Caste census करवाया है कंडक्ट तमिलनाडु ने। वहीं पे अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूं जिसने कास्ट सेंसस करवाया है, तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार से रिलेटेड अगर मैं फैक्ट बताऊं तो बिहार की नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, ये भी आप ध्यान में रखना। इन विच कंट्री हैज मास्टर कार्ड लॉन्च पेमेंट पास की सर्विस? तो इंडिया में लॉन्च की है। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैव बीन रीनेम्ड? 8। वेयर वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द इंडो रशियन कमीशन ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड? ये हेल्ड हुई है मॉस्को में। इंडियन नेवल शिप INS ताबर कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ अतल्या, ए नेवल शिप ऑफ विच कंट्री? तो स्पेन। ये याद रखना, अतल्या इज ए नेवल शिप ऑफ स्पेन। ठीक है। विच मेडल हैज निशाद कुमार वॉन इन पेरिस पैरालंपिक्स? तो सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। विच मेडल हैज हिमांशी तोकस वॉन इन द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप? सिल्वर मेडल। विच कंट्रीज फिल्म मेकर हयाओ मियाजाकी हैज अवॉर्डेड द रैमन मैगसेसे अवार्ड 2024? जापान के हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। Who has launched the AI project Morni for 125 Indian languages? It has been launched by Google DeepMind. Important question है, ये भी आप याद रखना। With which country has India signed a semiconductor ecosystem? सिंगापुर के साथ साइन हुआ है। Which state government has planned a Buddhist tourism circuit under स्वदेश दर्शन स्कीम? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। Which country's president was awarded the Olympic order? फ्रांस। क्यों? क्योंकि ओलंपिक जो है वो फ्रांस में ही हुआ था 2024 का।
जिसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स जो थे वो जीते थे। विच मेडल हैज इंडियन शूटर अनुया प्रसाद वॉन इन द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप? गोल्ड मेडल मिला है। डुरान कप 2024 किसने जीता है? इट इज वॉन बाय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। Indian Navy's P-81 aircraft has reached which country to participate in the second exercise वरुण? तो इंडिया की जो एक्सरसाइज है वरुण वो होती है फ्रांस के साथ। In which state assembly has the anti-rape bill been passed? वेस्ट बंगाल में पास हुआ है। Where will the UP government build a Vedic 3D museum? वाराणसी। अगर मैं फर्स्ट या लार्जेस्ट रामायण म्यूजियम की बात करूं या रामायण मंदिर की बात करूं तो दिस विल ओपन इन बिहार। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेलेक्टर ऑफ द मेंस क्रिकेट टीम? अजय रात्रा। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल? ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्धा विहार? ये महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया है। Who has been named as FICCI Youth Icon? नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना। Where was the virus war exercise mock drill organized? ये organized हुई थी अजमेर में। Which bank has launched Giga, a financial package for gig workers in India? HDFC Bank। Important है ये क्वेश्चन। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि ना तो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों सिस्टम के बाहर जो ऑपरेट करते हैं, दीज आर नोन एज गिग वर्कर्स। इनको रिकॉग्निशन मिली थी 2020 कोड ऑफ सिक्योरिटी जब आया था इन द ईयर 2020। फॉर्मल रिकॉग्निशन गिग वर्कर्स को इसी कोड में मिली थी। वेयर 129 पीपल हैव डाइड व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम जेल? कॉन्गो। ताहिर जमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज हॉकी टीम? पाकिस्तान। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी। Which country has scored the highest total in power play in T20I? This is Scotland. Which union minister has been included in the Time magazine list of most influential people in AI? Ashnavi Vaishnav. Which state government has approved 33% reservation for women in the police force? Rajasthan. Which Indian female wrestler won the gold medal in the Under-20 World Wrestling Championship? Jyoti Barwal. Which state government will celebrate सूता दिवस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, सूता दिवस इज रिलेटेड टू असम। कपिल परमार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ पैरा ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज जूडो। हु हैज रिलीज द हिंदू कॉफी टेबल बुक ऑन इसरो? करेक्ट आंसर इज एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज ऑल्सो द इसरो चीफ, ये आप याद रखना। Who has won the gold medal with a world record in the World Deaf Championship? Shaurya Saini. Which country's Independence Day was celebrated on 7th September? This is Brazil. Where had Agni 4 ballistic missile been tested? Odisha. Who was chosen as the flag bearer of the India in the Paris Paralympics closing ceremony? Preeti Pal and Harvinder Singh. Important है ये। अगर मैं नॉर्मल ओलंपिक्स की बात करूं तो उसमें मनु भाकर एंड आर श्रीजेश ऑफ इंडियन हॉकी टीम, दे वेयर द फ्लैग बियरर्स। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 900 कैरियर गोल्स? रोनाल्डो। इन विच स्टेट असेंबली अ बिल टू एंड पेंशन फॉर पार्टी हॉपर्स हैज बीन पास? हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड NRC रिसिप्ट नंबर मैंडेटरी फॉर आधार कार्ड? असम। Who has won the first US Open title? Arya Sabalenka. Super Typhoon Yagi caused massive destruction in which country? So Vietnam. Where has the Khelo India Asmita Wushu League started? Uttar Pradesh. India's launched its first reusable hybrid rocket Rumi 1 from Tamil Nadu. Which bank launched the Avni saving accounts? It was launched by Bandhan Bank. Where was the 90 feet high bronze statue of Lord Hanuman, Statue of Union, unveiled? ये अनवील हुआ था टेक्सास USA में।
वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड फाउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज बोत्सवाना। साउथ इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी कानू विल ओपन इन कर्नाटका। टू विच कंट्री हैज पीएम मोदी गिफ्टेड भीष्म क्यूब्स, यूक्रेन को दिए गए हैं। भीष्म क्यूब क्या है? ये एक मोबाइल हॉस्पिटल है जो कि बहुत जल्दी असेंबल हो सकता है एंड जो भी इंजर्ड हैं उनको हेल्प कर सकता है। तो भीष्म क्यूब याद रखना, ये एक्चुअली है क्या। वेयर हैज द ग्लोबल मुथमईज मुरुगन कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड, तमिलनाडु। हु हैज सिक्योर्ड कोटा फॉर एशियन गेम्स इन सर्फिंग, इंडिया। इन विच कंट्री द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में आया है। Ministry of Education has launched the e-magazine सपनों की उड़ान in collaboration with whom? So in collaboration with NCRT. How many new districts have been announced to be created in the Union Territory of Ladakh? 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। चांगथांग में एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जो कि पहला डार्क स्काई रिजर्व भी वहीं पे है। कहाँ ये? लद्दाख में। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क की, अगर मैं बात करूं तो ऐसा पहला पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी पेंच टाइगर रिजर्व है विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क भी वहां पे है। तन्वी पात्री हैज वॉन विच मेडल इन द अंडर 15 इन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, तो गोल्ड मेडल मिला है उनको। Which state has become the first state to implement unified pension scheme? Maharashtra. Which medal has the Indian team won in the Asian Surfing Championship? Silver medal. Which country has unveiled a suicide drone? North Korea. अगर मैं बात करूं स्पेस एजेंसी की जो कि लेटेस्ट है, तो साउथ कोरिया ने अपनी कासा स्पेस एजेंसी को अनाउंस किया है, ये भी आप ध्यान रखना। Which country has signed an agreement with BHU for research on language, literature, culture and philosophy? Correct answer is Nepal. Which state government has approved the Chief Minister Shukh Shiksha Yojana? Himachal Pradesh. Who became the youngest person in Asia to reach Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa? His name is Tegbir Singh. Also ये Mount Kilimanjaro जो है, this is in the country Tanzania, ठीक है। Which state government has announced to build Sri Krishna Gaman Path? तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। Where is the 24th मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज? जो दुबई में ऑर्गेनाइज होने वाला है। Who has topped the global property price index? मनीला ने टॉप किया है। Who has been made the captain of Indian team in Women's T20 World Cup? हरमनप्रीत कौर। Who won the Formula One Dutch Grand Prix? Lando Norris. Who won the IBSF World Under 17 Snooker Championship? Christian Richard ने ये जीता है। Who won the National Chess Championship? Karthik Venkatraman. Who has launched the AI assistant Rufus for shopping? It has been launched by Amazon. Where will the e-cabinet system be implemented for paperless council meeting? आंध्र प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है ये। ऑल्सो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल जो है वो अमरावती है, ये भी आप याद रखें। Which state government has increased the marriage age for women to 21 years? हिमाचल प्रदेश। फतेमे मोहाजिरानी has been appointed as the first female government spokesperson. ईरान की अपॉइंट की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल ये किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। पाकिस्तानी क्रिश्चियन जोसेफ फ्रांसिस पेरेरा हैज बिकम द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट टू गेट द सिटीजनशिप अंडर CAA? तो ये है गोवा में। गोवा में मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है गोवा में फर्स्ट पर्सन बने हैं जिनको CAA के अंदर में सिटीजनशिप दी गई है, वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है जिनका नाम जोसेफ फ्रांसिस पेरेरा है। वेयर वॉज द इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात इंडक्टेड? ये इंडक्ट हुई थी विशाखापट्टनम में। इंडिया टीम ने जीता था 17th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड
कितने मेडल जीते हैं इसमें? 5 मेडल। इन विच स्टेट एन अलर्ट वॉज इशूड ड्यू टू साइक्लोन असाना? द स्टेट वॉज गुजरात। हु इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन राजगीर? नीतीश कुमार। वेयर वॉज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? मुंबई। Who has been awarded the Pata Gold Award 2024? Kerala Tourism. In which sport did Avni Lakhera win the gold medal at the Paris Paralympics? Shooting में gold medal मिला है। To which country did India make the first payment for the hybrid power project? Sri Lanka. Which country's Dhulikhel has become the first WHO recognized health city? ये नेपाल में है। Important current affairs है, ये ध्यान रखना। WHO first recognized health city कहाँ है? धूलिखेल, which is in Nepal. Which ministry has launched the She Box portal? Ministry of Women and Child Development. Vistara will merge into which airline? ये merge होने वाली है Air India में। Where transgender Amir Mehto has been appointed as the first community health officer? झारखंड में अपॉइंट हुए हैं ये। Which country's fast bowler Shannon Gabriel has retired from international cricket? वेस्ट इंडीज के प्लेयर रही हैं। वाधवान पोर्ट कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। अमृत लाल मीना हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज सस्पेंडेड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स? तो वो है ब्राजील। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIT गांधीनगर हैज लॉन्च्ड ई-नर्मदा इन कोलैबोरेशन विद विच IIT? तो IIT इंदौर इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो मैं आपको बताऊं, IIT बॉम्बे ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के साथ मिलके एक कार टी सेल थेरेपी जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है इंडिया में, वो भी लॉन्च की है, जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ऑल्सो अगर मैं बात बताऊं, कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उस पर GST को 18% से लेस करके 5% कर दिया गया है कैंसर रिलेटेड मेडिसिन पे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अवॉर्डेड द शौर्य चक्र टू whom? तो विंग कमांडर वर्णन देशमन कीन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द एंशियंट रत्नागिरी रॉक आर्ट एज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट? तो रत्नागिरी इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्सो इंडिया विद द हेल्प ऑफ वियतनाम एक मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ओपन करने वाला है गुजरात में एट अ प्लेस लोथल। अब लोथल में क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एंशियंट पोर्ट था विच वॉज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगस टू रिड्यूस वेस्ट? करेक्ट आंसर इज जर्मनी। When was Parsi New Year Navroz celebrated? It is celebrated on 16th August. In which country has the Constitutional Court dismissed the Prime Minister from his post? Thailand. Which airport in India has been given the status of net zero carbon emission airport? IGI, Delhi. Who has topped the NIRF list for the 6th time? It is IIT Madras. Who has been appointed as the India's next ambassador to the United Nations? Parvataneni Harish. Which state government has introduced a one-day menstrual leave for working women? ओडिशा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन ओमकारेश्वर। ऑल्सो ओमकारेश्वर में श्री आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू ऑफ वननेस भी इनॉग्रेट हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। Who has launched किसान की बात रेडियो प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद फार्मर्स? इट इज शिवराज सिंह चौहान। Where has the 6th India Australia Maritime Dialogue been organized? कैनबरा में ऑर्गेनाइज हुआ है। Who has won the Best Actor Award at the 70th National Film Awards? ऋषभ शेट्टी को यह अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आप ध्यान रखना। Which country celebrated its Independence Day on 17th August? It is Indonesia. How many medals has India won in the 17th International Earth Science Olympiad? 8 मेडल जीते इंडिया ने। Who became the 18th member of the United Nations Command in South Korea? It is Germany. Chief Minister of which state has launched the युवा उद्यम विकास अभियान योजना? यूपी में ये लॉन्च हुई है। ऑल्सो यूपी में एशियन वल्चर का एक ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर
भी इनॉग्रेट हुआ है उत्तर प्रदेश में। विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय इसरो, तो इट्स नेम इज EOS-08। पैसेंजर बोट सर्विस हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में स्टार्ट हुई है। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका। मान्याचीवादी विलेज हैज बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ विच स्टेट, महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर विलेज बना है। ऑल्सो फर्स्ट सोलर सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो सांची है, ये भी आप ध्यान रखना एंड सांची इज इन मध्य प्रदेश। विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड एडवांस साइनाइड सेंसर फॉर सिक्योरिटी, ये केरला यूनिवर्सिटी है। The storm Ampil is related to which country? It is related to Japan. Ulchi Freedom Shield exercise has started between America and which country? America and South Korea. Chief Minister Bal Poshan Ahar Yojana has been launched in which state? It has been launched in Himachal Pradesh. The joint military exercise Mitra Shakti was organized between India and which country? तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति ऑर्गेनाइज हुई है। Who has been appointed as the referee for 8th FIFA Under-17 Women's World Cup? तो Riolan Dhar. Which medal did Indian wrestler Ronak Dahiya win in the Under-17 World Wrestling Championship? So he won a bronze medal. Which company has announced the manufacture of Mpox vaccine? Biological E Limited. Important है ये। Also जो Cervavac vaccine है for cervical cancer, it has been launched by the Serum Institute. ये भी आप ध्यान रखना। Who will host the first esports Olympic Games? Saudi Arabia. Important question है ये। Who received an A+ rating in the Global Finance Center Banker report card? Shashikant Das. He is the RBI governor. Who has been named the chef de mission for the Paris 2024 Paralympics? Correct answer is Satya Prakash Sangwan. Which player has made the record of scoring highest 39 runs in an over? Darius Wilson ने ये रिकॉर्ड बनाया है। Where will the upcoming Women's T20 World Cup be held? It will be held in UAE. Who has been awarded the 26th CET Cricket Award? Rohit Sharma. India and which country has started the SLCR project for cleaning the river? Denmark and India ने start किया है। Who won the National Racing Championship? It was won by Diana Kundol. Who has started the country's first digital court to settle the case of Negotiable Instrument Act? केरला ने ये लॉन्च किया है। ऑल्सो केरला ने पहला स्टेट रन OTT प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम सी स्पेस है, ये भी केरला ने लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना इसको भी। Who has won the Cincinnati Open title? It was won by Jannik Sinner and Aryan Sablenka. Which state has become the first to launch the Gross Environmental Product Index? It is Uttarakhand. Who has become the first state to notify rules for issuing online summon and warrant? So Madhya Pradesh has become the first state. Whose autobiography, The Scientist Entrepreneur Empowering Millions of Women, has been released by सौम्य स्वामीनाथन? तो ये कल्पना शेखर के ऊपर में ऑटोबायोग्राफी है। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग स्टार्ट कहाँ हुई है? बिहार में। इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दी BPSC पॉइंट ऑफ व्यू। नीरज चोपड़ा broke his own record with a throw of how many meter in diamond league? तो 89.49 meter. Which airport has achieved the net zero carbon emission status? It is the IGI airport. Important है ये, ध्यान रखना। CM of which state has launched the Subhadra योजना? Odisha. Who has launched the Arambh program to promote early childhood education? पंजाब ने लॉन्च किया है ये। In which legislative assembly a bill for scheduled tribe reservation was introduced? गोवा में इंट्रोड्यूस किया गया है। Who has launched the e-evidence न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई-समन ऐप? अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है इसे। Which country hosted the BIMSTEC Business Summit? ये समिट होस्ट की है इंडिया ने। अगर मैं BIMSTEC की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज अ मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज कहाँ होस्ट की गई है? तो तमिलनाडु में। विच कंपनी हैज टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो वॉलमार्ट ने क्रॉस किया है।
इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है। ग्लोबल मेडटेक सेंटर मेडटेक कॉन्फ्रेंस 2024 started in New Delhi. Wrestler Vinesh Fogart was out of the Paris Olympics due to how many grams of his excess weight? 100 grams. How much has India's renewable energy capacity increased in a decade? 165% का increase हुआ है। Which country has launched the first satellite constellation network to compete with Starlink? चाइना ने ये लॉन्च किया है। Starlink जो है वो SpaceX का एक ऑनलाइन SpaceX का एक सैटेलाइट है विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। एंड SpaceX के जो CEO हैं या फाउंडर हैं वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की एक और कंपनी है इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जिसका नाम टेस्ला है। हाउ मेनी मीटर डिड द नीरज चोपड़ा थ्रो इन द क्वालिफायर राउंड एट द पेरिस ओलंपिक्स? 89.34 मीटर्स। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज बिल? महाराष्ट्र ने ये इंट्रोड्यूस किया है। ऑल्सो महाराष्ट्र ने जो है वो काऊ को राजमाता का दर्जा दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आप। और अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना वन लाइनर्स पे, तो इसमें इस वीडियो में जितने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग 15 to 20 क्वेश्चन है जो मैंने उसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको करवा दिए थे। तो आगे अगर आप इसको करोगे ना तो आपका वो रिवाइज ही होगा, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रिवीजन हो जाएगा आपको। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वन लाइनर्स की तो प्लीज़ उसको देख लेना, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो। वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ द आईपा एडवाइजरी काउंसिल हेल्ड? ये हेल्ड हुई थी लाओस में। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? ये है असम में। असम में कुछ और सेंचुरीज हैं, काजीरंगा। अब अगर मैं पूछूं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोरस कहाँ है तो आप बोलोगे काजीरंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस कहाँ है तो उसका करेक्ट आंसर होगा पोबीतोरा। डेंसिटी सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसोरस की पोबीतोरा में है। ऑल्सो अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूं वन हॉर्न राइनोसोरस का तो वो वल्नरेबल है, ये भी आप याद रखना। अब असम के साथ असम में मानस, दिहांग पटकाई, दिहांग दिबांग, ओरांग एटसेट्रा ये सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। RBI हैज़ इंक्रीज द UPI टैक्स पेमेंट लिमिट टू हाउ मच? 5 लाख तक इंक्रीज कर दिया गया है। वेयर इज द एयर प्रैक्टिस उदार शक्ति 2024 ऑर्गेनाइज? इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मलेशिया। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। On which country has won the second title of Kawa Women's Volleyball Nation League? India has won. Neeraj Chopra won in Paris Olympics, so he has won a silver medal. How many villages have been organized as the best tourist village in the year 2023? There are 35 villages. Which medal has India team won in the Paris Olympics? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज ही जीता था। Which state government has approved the logistic policy to create 5 lakh employment opportunities? तो महाराष्ट्र ने बनाई है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इसके साथ साथ अगर मैं लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो लॉजिस्टिक्स का एक इंडेक्स लॉन्च होता है जो कि रिलीज करता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की मैं बात करूं तो ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2015 और इसके जो चेयरमैन हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जो कि करेंटली है नरेंद्र मोदी। Which IIT has created e-shoes for location tracking in real time? इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। Who has become the DG of the Armed Force Medical Services? अनुपम कपूर। In which country did President द्रौपदी मुर्मू address the International Education Conference? इन्होंने एड्रेस किया था इसे न्यूजीलैंड में। Which state government has launched the उपस्थिति पोर्टल? तो ये झारखंड में लॉन्च किया गया है। Which state government has abolished 2 children policy for individual contesting local elections? आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राइस ATM कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में। यूनिसेफ एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर टू इन्वॉल्व फादर्स इन ब्रेस्ट फीडिंग? तो वेस्ट बंगाल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो तिमोर लेस्टे। फॉर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है अभी? तो इलॉन मस्क हैं। हाथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ इन असम। ऑल्सो अगर मैं बात करूं एलिफेंट्स के बारे में तो एक कुमकी एलिफेंट्स होते हैं। कुमकी एलिफेंट्स का काम क्या होता है?
कि जो मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसके रिगार्डिंग कुंकी यानी एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो। अमन शेरावत वॉन इन पेरिस ओलंपिक्स, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वेयर विल इंडिया ओपन ए कॉन्सुलेट टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ऑकलैंड में ओपन करना है। हु वॉज अवॉर्डेड द पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड एट द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, शाहरुख खान को वो अवार्ड मिला है। वेयर हैज़ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पार्टिसिपेटेड इन दी होटा शो, टिमोर लेस्टे, और टिमोर लेस्टे का ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है हमारी प्रेसिडेंट को। Who has been awarded the Olympic order by IOC, अभिनव बिंद्रा। रैंक ऑफ इंडिया इन दी मेडल टेबल ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, तो 71st रैंक है। विच गवर्नमेंट हैज मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल मोनेस्ट्रीज एंड ट्रस्ट मैंडेटरी, बिहार में, और ऑल्सो बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस, ये भी आप याद रखना। पीएम मोदी हैज रिलीज्ड हाउ मेनी क्लाइमेट रेजिलियंट सीड वैरायटी टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, तो 109 सीड्स को उन्होंने लॉन्च किया है। काशुर रिवाज उत्सव कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका के बीच होती है। विच कंट्री हैज टेस्टेड द लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन, चाइना ने टेस्ट किया है। इन विच स्टेट भेल गॉट अ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झारखंड। हु टॉप्स द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आईआईटी मद्रास। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव हिम उन्नति टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ये है हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर बीन डिस्कवर्ड, टर्की। अगर मैं बात करूं केव पेंटिंग की, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, तो वो इंडोनेशिया में मिली है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज बिग क्रिकेट लीग हैज टाइड अप विथ whom फॉर लॉन्ग टर्म ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती के साथ। Now, which state has become the first to send money to student bank account for sanitary pads? Madhya Pradesh. Who has been excluded for Paris Paralympics due to violation of anti-doping weird about rule? Pramod Bhagat. DRDO tested long range glide bomb. Gaurav कहाँ टेस्ट किया, ओडिशा में। Now rest of the questions we will do in the next video. Thank you. RDO वन लाइनर्स में पूछ सकता है, ठीक है। IIT Gandhinagar has launched e-Narmada in collaboration with which IIT? IIT Indore. President Draupadi Murmu has awarded the Shaurya Chakra to whom? To Wing Commander Vernon Deshman Keane. Which state has declared the ancient Ratnagiri rock art as the protected monument? Maharashtra. Ratnagiri क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है। Scientists of which country have discovered plastic eating fungus to reduce waste? Germany. When was the Parsi New Year Navroz celebrated? 16 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। On August 15, 2020, in which country has the Constitutional Court dismissed the Prime Minister from his post? Thailand में। How many meters did Neeraj Chopra throw in qualifier round? ये तो खैर कुछ भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Which state has approved the Prisoners and Correctional Services Bill? महाराष्ट्र ने अप्रूव किया है। Where was the 7th meeting of IPA Advisory Council held? लाओस में हेल्ड हुई थी। लाओस इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है। ओबितोरा इज इन विच स्टेट, तो असम में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस कौन से नेशनल पार्क में है? कमेंट सेक्शन में बताना आंसर, एंड जिसने भी फर्स्ट करेक्ट आंसर दिया उसका आंसर मैं पिन करूंगा कमेंट सेक्शन में, और वो पिन रहेगा हमेशा के लिए। RBI has increased the UPI tax payment limit from to how much? तो 5 लाख तक लिमिट कर दी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेयर इज एयर प्रैक्टिस उदार शक्ति 2024 ऑर्गेनाइज्ड? मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुई है। वेयर हैज पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज? लद्दाख में हुई है। विच कंट्री हैज वॉन द सेकेंड टाइटल ऑफ कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग? इंडिया। विच मेडल हैज द नीरज चोपड़ा वॉन इन पेरिस ओलंपिक्स? सिल्वर मेडल। How many villages have been recognized as the best tourist village in year 2023? 35 villages को best tourist village recognize किया गया है। Which medal has the Indian hockey team won in Paris Olympics? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो 2020 में भी हमें ब्रॉन्ज ही मिला था हॉकी टीम को।
Which state government has approved the logistics policy to create 5 lakh employment opportunities? Maharashtra. Which IIT has created e-shoes for location tracking in real time? IIT Indore. Who has become the Director General of Armed Forces Medical Services? Anupam Kapoor. In which country did the President Draupadi Murmu address the International Education Conference? ये न्यूजीलैंड में हुआ. Which state government has launched the attendance portal? छत्तीसगढ़ में. एंड छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब है बैगा ट्राइब. ये फर्स्ट थे जिनको कि राइट्स मिले थे फॉरेस्ट को यूज़ करने के. ठीक है, अगर आप अदर स्टेट पीएससी या यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैगास ट्राइब आपसे पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में. बैगा ट्राइब्स याद रखना, नोट डाउन कर लो. Which state government has abolished the 2 children policy for individual contesting local body election? That is Andhra Pradesh. Where has the country's first rice ATM inaugurated? Odisha. वेग टाइप का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. UNICEF and which state government has partnered to involve fathers in breastfeeding? So West Bengal. President Draupadi Murmu has been awarded the highest civilian honor. Which country? Timor Leste विजिट किया था हमारी प्रेसिडेंट ने, तो वहाँ का उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है. फॉर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप कौन है? तो एलन मस्क है. इन विच स्टेट हाथी ऐप हैज बीन लॉन्च टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट? असम में लॉन्च किया गया है. एक चीज़ मुझे आप बताना, एलिफेंट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. देखो, अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्टिव रिकॉल होता है ये, आपके दिमाग का एक पोर्शन, आपके माइंड का एक पोर्शन, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें रहती हैं. अगर आप तुरंत, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी आप तुरंत रिकॉल करोगे उसको तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. Which medal Aman Sehrawat has won in Paris Olympics? Bronze medal. Where will India open a consulate to strengthen diplomatic relations? Auckland. Who was awarded the Pardo Allah Career Award at the Locarno Film Festival? That was Shah Rukh Khan. Divyangjan Abhiyan Dal of which ministry has hoisted tricolor on the highest peak of Africa? That is Ministry of Defense. Rest of the current affairs जो हैं subsequent part आएंगी 1, 2, 3, 4. ठीक है, एंड एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी आएगी. तो आप जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, पीडीएफ में अपलोड करूँगा धीरे धीरे चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पीडीएफ से रिवाइज करके वीडियोस को 1.5x पे देखना, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी. एंड चैनल एक बार अगर आप आए हो तो चैनल को विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और देखो मैंने ऑलरेडी कितना मटेरियल अपलोड किया है. ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना. अराउंड 10 दिन के अंदर मैं पूरी स्पीडी कवर करा दूंगा सितंबर मंथ की. ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप स्टडिंग. हेलो फ्रेंड्स, वेयर हैज द स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड? न्यू दिल्ली. विच हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड सेक्शन 77A अनकॉन्स्टिट्यूशनल? मद्रास हाई कोर्ट. वेयर हैज द विरासत एग्जीबिशन स्टार्टेड? न्यू दिल्ली. Who has won the first gold medal in tennis Paris Olympics? That is Novak Djokovic. Also Novak Djokovic first athlete हो गए जिन्होंने हर अपने यॉनर में हर मेडल को जीता है, एवरी मेडल. उनके पास बस गोल्ड मेडल नहीं था ओलंपिक्स में, वो भी इस बार उन्होंने जीत लिया है. एंड ही डिफीटेड हमारे इटली के कार्लोस अल्काजार. Who won the title of Miss Nepal? Ashma Kumari. Which state has become the first state in the country to get disaster management insurance? Nagaland. Which state has received the Jeevan Dan Award? Andhra Pradesh. Which state government will purchase all crops at minimum support price? Haryana. Central government has declared Adichunagiri and Chulanur of which state as peacock sanctuary? तो कर्नाटका हमारा आदिचुचनगिरी एंड केरला का चुलनचुर रीजन. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? फिजी. वेयर हैज द NCW, that means National Commission of Women for Women, launched the डिजिटल शक्ति केंद्र टू डील विद द साइबर क्राइम? न्यू दिल्ली. ऑल्सो जो हमारा NCW है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन द लेट 1990s. Who has launched the Nivahika web portal for data management? NIT Calicut. Which country's Deccan University has set up its campus at Gift City, Gujarat? Australia.
Which state government has formed a task force to remove encroachment in forest and western ghats? Karnataka. Comment section में मुझे बताना which is the place where eastern and western ghats meet. इसके साथ साथ आपका स्टैटिक का भी रिवीजन हो जाएगा, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछते रहूंगा. In which legislative assembly a bill for scheduled tribe reservation was introduced? Goa. Who has launched the e-evidence Nyay Setu Nyay Shruti e-summons app? Amit Shah. Which country hosted the BIMSTEC Business Summit? India. Where has the multilateral air exercise Tarang Shakti started? Tamil Nadu. Which company has topped the Fortune Global 500 list? Walmart. India's first GI tag fig juice has been exported to Poland. Who has become India's most affordable housing market? Ahmedabad. Where has the Global MedTech Conference 2024 started? New Delhi. Wrestler Vinesh Fogaz was out of Paris Olympics due to how many grams of excess weight? 100 grams. How much has India's renewable energy capacity increased in a decade? 165% increase हुआ है. On 7th August, which country has launched the first satellite constellation network to compete with Starlink? Starlink हमारे एलोन मस्क जी ने लॉन्च किया था and he is the owner of the Tesla group and SpaceX. and इसी को टक्कर देने के लिए अब चाइना ने भी Starlink जैसा लॉन्च कर दिया है. Who has become the first woman DG of the Army Medical Service? Sadhana Saxena. Who has become world's second largest aluminium producer? India. First is China. ध्यान रखना आप. Chief Minister Pramod Sawant has launched the GOM Vinayamul Vivajan scheme. तो गोवा. एंड गोवा के सीएम प्रेजेंटली कौन है? तो ही इज प्रमोद सावंत. Which is the third startup to become a unicorn this year? Rapido. Which country has handed over the first F-16 fighter jet and new air defense system to Ukraine? America. Who is in the top in the Travel and Tourism Development Index? America ने टॉप किया है. Who has been chosen by ISRO as its chief astronaut for the Axiom 4 mission with America? That is Group Captain Subhanshu Shulda. Who chaired the 52nd conference of the governor? तो गवर्नर की जो कॉन्फ्रेंसेज है सारे स्टेट्स की, दैट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अभी आवर प्रेसिडेंट इज श्री द्रौपदी मुर्मू. विच सिटी हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी श्रीनगर. व्हाट पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स? 8th पोजीशन है. How many bagless days has been proposed by NCERT for classes 6 to 8? 10 bagless days. Where was the 4th National Hindi Science Conference 2024 held? हमारे भोपाल में हुई है. Which country and India have partnership on the Maritime Heritage Complex at Lothal? तो वियतनाम ने. Lothal is the port city. ठीक है, इंडिया में, which is in the state of Gujarat on the banks of river भोगवा. अब इससे क्या होगा, आपका इंडस वैली का भी ये पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिया. Who has become the second largest supplier of LNG plant in India? That is America. Who has become India's youngest Olympic referee in boxing? Kabilan Sal Ashok. Indian naval ship Tabar conducted a maritime partnership exercise with the naval ship of which country? Russia. The government has approved what percentage of FDI in aircraft maintenance, repair and overhauling? 100% FDI को अप्रूव किया है. Which country won gold medal in 100-meter race after 20 years? USA ने जीता है. Where will the Doppler radar be installed for weather forecasting? लाहौल स्पीति में. Where was the 5th ITIGA Joint Committee meeting held to review the ASEAN India Goods Trade Agreement? Jakarta. Where was the 14th India-Vietnam Defence Policy Dialogue held? New Delhi. Which state government has launched the Mukhyamantri Maiya Samman Yojana for women? That is Jharkhand. In which state will the guilty of love jihad will be given life imprisonment? हमारे असम ने ये लॉ बनाया है. Who won the Women's Asia Cup 2024?
श्रीलंका ने डिफीट किया था इंडिया को बाय 8 विकेट्स। इंडियन वॉरशिप INS ताबर पार्टिसिपेटेड इन द नेवी डे परेड ऑफ विच कंट्री? तो रशिया की नेवी डे परेड में पार्ट लिया था। द स्टैचू ऑफ कारगिल हीरो कैप्टन हनीफुद्दीन अनवील्ड, कहाँ अनवील हुआ था ये? केरला में। हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू विन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द पेरिस ओलंपिक्स? दैट इज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 10 मीटर एयर पिस्टल कॉम्पिटिशन। एक बात अब यहाँ पे याद रखना कि जो भी एथलीट गेम से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मनु भाकर इज रिलेटेड टू शूटिंग, तो आप याद रखना। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू जैवलिन, ये भी आप याद रखना। विच IIT हैज ऑनर्ड सुंदर पिचाई विद द टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस? IIT खड़गपुर ने ऑनर किया है। The ninth Governing Council meeting of Niti Aayog held in New Delhi was conducted under the chairmanship of PM Modi. सब्जेक्ट क्या था इसका? विकसित भारत एक्ट 2047। Now, where was the India House inaugurated? तो पेरिस में इनॉग्रेट हुआ था। कुल्हाड़ी बंद पंचायत कैंपेन कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ था? तो ये हमारे राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। Which country's Sado gold mine was registered as a UNESCO World Heritage Site? जापान। ये सादो गोल्ड माइन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है एंड दिस इज इन जापान। विच कंट्री हैज इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या? लाओस ने इशू किया है। हु हैज लॉन्च सर्च जीपीटी? ओपन AI ने लॉन्च किया है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड? 5 मेडल। हु हैज वॉन द वी वेंकटेया एपिग्राफी प्राइज? So it was won by V. Vedachalam. Who has become the youngest and fastest swimmer to swim across the English Channel? G.R. Raj. The government of which country has improved the controversial law of euthanasia of stray dogs? Turkey. In which tiger reserve had a wind turbine installed for electricity generation for the first time? Periyar Tiger Reserve, which is in Kerala. Important हो जाता है ये। Who will host the T20 Asia Cup in 2025? That is India. Who has won the Belgian Grand Prix? Lewis Hamilton ने जीता है। Where did the External Affairs Minister S. Jaishankar unveil the statue of Mahatma Gandhi? Tokyo. Who has launched the e-health teleconsultancy facility for ex-servicemen? Indian Army ने लॉन्च किया। Which state has amended the anti-conversion law? Uttar Pradesh. PM Modi released the book Call of the Gate written on Asiatic lions by who? तो परिमल नाथवानी। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इनॉग्रेटेड द युग युगिन भारत म्यूजियम, न्यू दिल्ली में बना है। न्यू स्पीशीज ऑफ केव फिश कहाँ पे मिली हमें? तो वो मिली है हमें मेघालय। हु हैड टॉप द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? 2024 की रैंकिंग्स का पूछा है, तो सिंगापुर ने टॉप किया है। इंडिया हमारे का 82nd रैंक था। हु हैज टॉप द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया एक्सपेंशन? चाइना। एंटी पेपर लीक बिल कौन से स्टेट ने पास किया है? बिहार ने पास किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम टू अचीव TB फ्री म्यूनिसिपैलिटीज? तेलंगाना। द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड UNRWA a terrorist organization? That is Israel. इसराइल ने जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया था, द अटैक वाज नोन एज अल अक्सा। इसराइल ने जो रिस्पॉन्ड किया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, और इंडिया ने जो अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू किया था इसराइल से, दैट वाज ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इसराइल से। ठीक है, इसराइल और पैलेस्टीन से। इंडियन नेवी लॉन्च INS त्रिपुत कहाँ किया गया? गोवा में। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी फॉर द सेकंड टाइम? नीता अंबानी। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लीडर समिट 2024 हेल्ड? वॉज हेल्ड इन लंडन। द ग्रेवन म्यूजियम ऑफ पेरिस हैज इशूड अ गोल्डन कॉइन इन ऑनर ऑफ विच इंडियन एक्टर? शाहरुख खान। Which will be the fourth capital city of the Northeast region to come under railway connectivity?
एजवाल को हम कनेक्ट कर लेंगे हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया से। वेयर हैज रियून्यू इनॉग्रेटेड अ 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, तो राजस्थान। व्हाट हैज द नेम ऑफ दरबार हॉल लोकेटेड इन द राष्ट्रपति भवन चेंज टू, तो जो दरबार हॉल था इन द राष्ट्रपति भवन उसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। वेयर हैज द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, तो मंगोलिया में। 57th मीटिंग ऑफ एशियान फॉरेन मिनिस्टर कहाँ हेल्ड हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन लाओस। Who were the flag bearer of Indian contingent in opening ceremony of Paris Olympics? Sharat Kamal. He is a player of table tennis, and PV Sindhu, we all know, is related to badminton. Who has announced the launch of 4-year undergraduate course BTech in Design? IIT Delhi ने launch किया है। Who has passed its first comprehensive climate change law? South Africa. The government has announced to open how many Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras across the countries by 31st March 2027? So 25,000 Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra लॉन्च किए जाएंगे। 27 जुलाई को 86 फाउंडेशन डे मनाया गया सीआरपीएफ का। 10% रिजर्वेशन देने का किस स्टेट गवर्नमेंट ने वादा किया है? तो द फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान ने, कि अग्निवीरों को हम 10% रिजर्वेशन देंगे। A bilateral agreement has been signed between India and which country for return and preservation of cultural assets? That is America. Where has the Mandela Heritage Site got the status of UNESCO Heritage? South Africa. In which state will the think tank GRIT be established? Gujarat. Where was the 4th BIMSTEC Security Chiefs meeting held? So Myanmar. Where as the foreign minister as Jaishankar inaugurated Maitri Udyan, Mauritius? Which state government has formed SCR like NCR? यूपी ने, जैसे NCR दिल्ली का है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, ये दिल्ली के कुछ एरियाज, इसमें दिल्ली का तो एरिया है ही है, साथ में हरियाणा, राजस्थान के कुछ पार्ट्स, यूपी का कुछ पार्ट भी इंक्लूडेड है। ऐसे यूपी ने भी ऐसा एक एरिया बनाया है। DMRC has inaugurated the e-waste recycling box facility in collaboration with which country? Japan. The Supreme Court of which state has been provided the government benefits to gay couples? South Korea ने. Chief Minister of which state has launched the Rajiv Gandhi Civil Abhyastham Yojana? Telangana. Where has the Chhatrapati Shivaji Maharaj weapons Bagh Nakh been brought from? London. तो लंदन से ये मुंबई लाया गया। Sultan Ibrahim Iskandar has been crowned as the emperor of which country? Malaysia. Who has been awarded as Oman Chandi Lok Sevak Award? So Rahul Gandhi. Which space agency has announced the discovery of sulfur on Mars? NASA. Who will host the first Olympic Sea Sports Game in 2025? Saudi Arab host करेगा। Important है, ध्यान रखना। Who topped the 65th International Maths Olympiad? America. Which state government has launched the Gross Environmental Product Index? Uttarakhand. The researchers of which IIT have discovered the African swine fever virus protein? IIT Guwahati. Gandhi Mandela Award of 2020 was given to Digoberta Menchu Tum, who has been awarded the International Olympic Order Award by IOC. Abhinav Bindra. श्रमिक बसेरा योजना फॉर लेबरर्स गुजरात स्टेट ने लॉन्च की है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन अनवील्ड बाय चाइना। हाईएस्ट रन स्कोरर इंडियन प्लेयर्स इन वुमेन्स T20 स्मृति मंदाना बनी हमारे इंडिया की। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन? जापान। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? दैट इज बाय अजरबैजान। और एक रीजन है नगार्नो कारबाख, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड रीजन है अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के बीच में। तो ये पूछ सकता है कि ये रीजन कहाँ पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। विच स्टेट हैज लॉन्च अ गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म? हेलो, मेघालय ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग्स? सिक्किम ने।
Second woman officer to be deployed in Siachen Glacier, Suprita City. चरादेव मैदम of which state has been nominated for UNESCO World Heritage? असम के हैं। अब ये चरादेव मैरिदम जो हैं these are related to अहोम डायनेस्टी, बहुत फेमस डायनेस्टी है जिसके कि ग्रेटेस्ट रूलर रहे थे लचित बोरफुकन। एंड फाउंड किसने किया था इसको? तो सुखाफा वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी। ठीक है, ये बहुत न्यूज में रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके बारे में बहुत बात की है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहोम डायनेस्टी इज रियली इंपॉर्टेंट। कौन से स्टेट में होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस? मध्य प्रदेश। कोपा अमेरिका टाइटल किसने जीता? अर्जेंटीना। 96 फाउंडेशन डे 16 जुलाई को मनाया गया था आईसीएआर का। सुदर्शन पटनायक ने जीता है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड। हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हमारे उत्तराखंड में। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है हमारे यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। लड़का भाव स्कीम लॉन्च बाय महाराष्ट्र। 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड लॉन्च बाय कजाकिस्तान। हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल स्टॉर मैक्स लॉन्च किया है इंडियन ऑयल ने। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है टू द अग्निवीर्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस, माइनिंग एंड जेल डिपार्टमेंट? तो हरियाणा ने। अभी रिसेंटली हमने देखा था राजस्थान ने हर फील्ड में 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया था। कतरंगमा एसला उत्सव सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका। अमृत दृष्टि स्कीम बाय एसबीआई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है अस्मिता प्रोजेक्ट यूजीसी के कॉर्पोरेशन से। एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेट हुआ है फरीदाबाद में। 18 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ था? तो नेल्सन मंडेला डे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? तो महाराष्ट्र। फीफा रैंकिंग के टॉप पे कौन है? अर्जेंटीना। एंड अर्जेंटीना ने ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया फर्स्ट नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन मानस वॉज लॉन्च बाय अमित शाह। इसने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ 6 न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम? दैट वाज नासा। Which country has implemented visa-free policy for 35 European countries? तो Belarus. Where did the Foreign Minister S. Jaishankar inaugurated the first जन औषधि केंद्र? तो मॉरिशस में। एंड पीएम मोदी ने 2027 तक ये बोला है कि 25,000 जन औषधि केंद्र हम लॉन्च करेंगे। मेंस T20 बैटिंग रैंकिंग में टॉप कौन है? ट्रेविस हेड है, ऑब्वियसली ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 2023 का नवंबर का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है? Which Indian has won the bronze medal in the World Junior Squash Championship 2024? It was Shaurya Bawa. वुमेन्स एशिया T20 कप ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। एंड इसके फाइनल में श्रीलंका वॉन बाय डिफीटिंग हमारी वुमेन्स इंडिया टीम बाय 8 विकेट्स। Which state has become the best performing state under PM Swanidhi योजना? मध्य प्रदेश। Who has joined the United Nations Water Convention as the 10th African country? तो आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है। Where has the new species of dogfish shark has been discovered by Zoological Survey of India? केरला में डिस्कवर हुआ। What percentage of reservation has been announced by the Central Armed Police Force to former Agniveers? 10% reservation. Which university will establish a center for Hindu, Buddhist and Jain students? JNU. Which country's iSpace rocket has failed after its launch? China. साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? तो न्यू दिल्ली में। जेम्स एंडरसन ऑफ विच कंट्री हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? इंग्लैंड। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड? तो के चोला लिंगम। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रजिस्टर बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी? केरला। विच स्टेट हैज अप्रूव द IT सक्षम युवा योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट? हरियाणा ने अप्रूव किया है। Which Indian female pilot has created history by participating in the pitch black military exercise? भावना कंत।
In which state India's longest urban tunnel project Thane Borivali Tunnel inaugurated? Maharashtra. खर्ची पूजा ऑर्गेनाइज कहाँ होती है? इन त्रिपुरा. सेकेंड रीजनल प्रोग्राम ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर प्रयागराज में इनॉग्रेट हुआ था. सबीर हैरिस वॉन अ मेडल इन दी शॉटगट जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली. कौन सा मेडल जीता उन्होंने? ब्रॉन्ज. इन विच स्टेट द फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप हैज बीन अपॉइंटेड? तो बिहार में अपॉइंट हुई है. नाम याद रखना, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप, बिहार. A road has been named after the Indian origin doctor, Dr. George Mathew, in which state? Abu Dhabi. The central government has amended the rules to give more power to the LG of which state? Jammu Kashmir. Bahuda Yatra, Odisha में. India and which country have agreed to work together in the field of environment and climate change? Bhutan. Who won the men's and the women's singles titles of Wimbledon? Men's singles में Carlos Alcaraz won and वुमेन्स में बारबोरा क्रेजिकोवा. यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती थी? स्पेन ने. और नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में कौन टॉप किया? केरला टॉप किया. एंड लोएस्ट हमारा बिहार ही था इसमें. अब जो वर्ल्ड का जो मल्टी डायमेंशनल हाँ ठीक है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात बताता हूँ आपको. जो वर्ल्ड का इशू होता है ना, उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं. बट एमपीआई जो हमारे इंडिया में इशू होता है बाय द नीति आयोग, उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं. 2 इंडिकेटर्स ज़्यादा इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है. Who has started the trial operation of the world's first 3D printed अबरा? तो दुबई's रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी. फर्स्ट बर्ड गैलरी कहाँ ओपन हुई है? उत्तराखंड में. Who has won वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स? इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को. Which state cabinet has improved the rationalization of zero electricity bill provision? Himachal Pradesh. Who has launched the AI-powered health insurance scheme? ICICI Lombard. In which state has the Tata Power launched the Ghar Solar Initiative? Ghar Solar Initiative, UP. Which country has approved the use of 16 insects as human food? Singapore. Who has received the Excellence Award for outstanding work in homeopathy? Dr. Arpit Chopra. Which state government will set up Mitra 1 on Nepal border? That is Uttar Pradesh. Who has won the British Grand Prix? Lewis Hamilton. UK's first female finance minister? Rachel Reeves. Which ministry has launched the Project Pari? Ministry of Culture. Where did the PM Modi pay tribute to the tomb of unknown soldiers? Russia. HCL Tech chairman Roshni Nada received the highest civilian honor of which country? France. Who has topped Gen AI innovation? China. Who became the head of Team India? Head coach Gautam Gambhir. Who has become the main sponsor of the Indian team for the Paris Olympics? Adani Group. Who has become the female flag bearer of India for Paris Olympics? PV Sindhu. Who has been crowded was the first Miss AI? Kenza Lal. PM Modi has been awarded the highest civilian honor of Order of Saint Apostle, Russia. How many new biosphere reserve has been designated by UNESCO? 11. Where has the BSF organized the Grow with Trees tree plantation campaign? Srinagar mein. Which state has become the first state to prepare a road safety action plan? Rajasthan. Which IIT will offer BTech in Hindi and English? IIT Jodhpur. Who has become the fifth member of the Colombo Security Conference? Bangladesh has become the 5th member. Where did the Indian Air Force participate in the exercise Pitch Black? तो डार्बिन ऑस्ट्रेलिया. 12 जुलाई कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ है? तो वर्ल्ड मलाला डे. Who has topped the list of most affordable countries for migrants? Vietnam. Which day has declared as Samvidhan Hatya Divas? 25th June. Who has been selected as the best state for the prestigious Agriculture Leadership Award of 2024? That is Nagaland. Who will host 46th session of the UNESCO World Heritage Committee? India. Who released the book Mere Papa Paramveer on 1965 war hero Abdul Hamid? That was Mohan Bhagwat ने रिलीज किया.
Where has India chaired the Colombo process meeting? Geneva. Who has launched the Health Sati scheme? ATM. Who has launched this Sampurnata Abhiyan? Niti Aayog. Which university has become the first to start an MA course on Bhagavad Gita? IGNOU. Where was the 24th SEO Summit organized? Kazakhstan. The Infleman network launched by Union Minister Jitendra Singh is related to fatty liver disease. ग्लोबल एआई समिट 2024 कहाँ कंक्लूड हुई? तो इन न्यू दिल्ली. इंडेंजर्ड मेनलैंड जीरो असम. फर्स्ट सीएनजी बाइक बाय बजाज. जीवन साथी समर्थ बाय एलआईसी. मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स टू लॉस एंजलिस बीपीसीएल बने हैं. स्पाइस अवार्ड 2024 का सुपर्णा कलिगल को मिला है. सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द लोकपत मोबाइल ऐप? मध्य प्रदेश. Which MP of Indian origin has made a minister in Britain on 6 July? Lisa Nandi. Where has the world's oldest known cave painting been discovered? Indonesia. Which country and India will renew the Ganga Treaty? Bangladesh. According to Mercer Cost of Living City Rankings, which is the most expensive global city for immigrants? Hong Kong. Most polluted city in the country in the world? Bangladesh. Where was the Sakhar Se Samriddhi program organized? Gujarat. Gandhinagar. Which country has launched the LOS-4 satellites to revolutionize disaster management? Japan. Know Your Army program started by Leh. Which wrestling superstar has announced his retirement from in-ring competition? John Cena. A Holmes period Madam tomb of which state has been included in World Heritage Site? Assam. Who won the Asian Championship title in billiards? Dhruv Sitwal. Who became the 10th member of SCO? Belarus. एंड डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड इनको मिला है शिव शंकर.